It's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Jeffs. Well, are we believing, bhai? Are we believing? मतलब this is a night where, let's be real, अगर हम motivation नहीं है, in case नहीं, आपको लगता है भाई L Clasico, L Chitico, whatever, be it, you know, लेकिन it's Chelsea versus Manchester United. आज तो भाई motivation नहीं होना बनता ही नहीं यार. मतलब again, some of us have grown seeing this rivalry, and कहीं ना कहीं Manchester United के लिए it'll be double kind of a bonus, where Manchester United will be like, come on man, we can get into the Champions League positions all of a sudden. तो it's become all the more important, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जो हुए रिजल्ट्स, ऑल ऑफ अ सडन मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन थोड़ा बहुत चांस है, ऑल्दो वो भी एकदम फॉर्म में नहीं, लास्ट मैच में दिख रहा था. और हम लोग का तो क्या ही बोले यार, हम लोग 12th है, वी आर 12th. इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड एट बीइंग 12th to kind of get back into the top of the Premier League, तो भाई मैं क्या ही तो बोलूं, these players don't deserve it. And hopefully हम डेफिनेटली बात करेंगे अबाउट वॉटर टैक्टिक्स, क्या हो गए मैचअप्स एक्सेट्रा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया बीच में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हम प्री मैच आते हैं भाई इतना पहले, स्पेशली इन बिग मैच. वी आर गोइंग टू बी जॉइंड बाय नेथन एज वेल एज बाय सुभाष, तो कपल ऑफ अल्ट्रास विल बी जॉइनिंग अस. लेकिन कौन जुड़ा इन द चैट सबसे पहले बोलिएगा. यस, हर्षा बोल रहे हैं गेट रेडी फॉर एल क्लासिको. चलो भाई, आई होप एवरीवन इज रेडी. भाई रेडी मतलब आपको पता है क्या ड्रिल है. कम ऑन, लेट्स स्मैश दैट लाइक बटन, लेट्स हैव 100 लाइक्स एज क्विकली एज पॉसिबल सो दैट वी कैन हैव इन 100 पीपल वाचिंग अस राइट नाउ, बिकॉज़ लेट्स बी रियल, वी लिव फॉर सच नाइट्स यार, वी लिव फॉर सच नाइट्स. हाँ भाई, हम नहीं है, हम अभी भाई बहुत ही टाइम है. By the time we get back to where we belong, same as Manchester United, but let's be real, these are nights where we cannot kind of take it lightly. It's a Mason Mounts derby. Kenny Fan TV has said it right. Probably आज तो भाई proper होगा, and I'll get Nathan into the screen as well. एक second रुकेगा. Chelsea will score 5 goals today. Zedare बोल रहे, Palmer hat-trick, Jackson brace. Rahul in the house as well. All good, Rahul. I hope आप लोग का भी अच्छा. By the way, सब लोग again मैंने share किया community post में भी, we can like that brilliant so that we can have everyone in. People, Shea Arsenal in the house as well. Arsenal, by the way, doing well, just about getting a win last night. Manaj as well, an Arsenal fan. Brother of destruction match. Two biggest clubs in the 21st century are battling each other for the English supremacy. Let's go up the Chelsea. बोल रहे Harsha, absolutely. Ram as well in the house. We have Snehal, Devesh, of course, of the Manchester United Ultra in the house, and Puneet as well as Aage. By Puneet being a Man City fan, I'm telling you, bhai, that was some performance by Phil Foden. I must say that. तो दिया, ये तो रूमर है भाई, ये रूमर है देवेश, तो do not believe in rumors. तो let's get in अपने भाई Nathan in the house. लेकिन एक सेकंड, व्यू क्या हो गया, एक सेकंड. हाँ, Nathan is here back. Nathan भाई साहब. Nathan, मतलब my typical question first up. How is the Josh? Is the Josh there, or come on, it should be there for such night. Come on. Yeah, I mean, I'm actually very up for the match, but quite honestly, I feel deflated after Brentford, but at the same time, you know, yesterday's results give you a little bit of a unknowing boost. Yeah, it did. Literally everyone around us failed. Correct. So going by that, yesterday's results, just to kind of ask you one more question quickly. भाई अगेन चेल्सी का लाइनअप हमने डिस्कस किया था डिटेल में, अंशुमन इज इन, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइनअप. लेकिन क्विकली इफ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज योर प्रेफर्ड लाइनअप, ऑल्दो 2 minutes are left for lineups to be released, I believe. Dallo, Maguire, Wan-Bissaka, Casemiro, Menu, Fernandes. Acha, you're going with Casemiro in midfield, okay. Garnacho and Ahmad. That's who I'd want to start. Wow, Ahmad. Bhai, that's a big call. Huh? That's a big call. I know he's available. Or uska Not really. It's a big call because everyone wants to protect Rashford, but it's not really a big call if you think about the grander scheme of things. He's been deserving an opportunity for a while now, and it's about time he gets it, personally, in my opinion. So he did get us through the Liverpool match as well. So why not? Why not? That's what Nathan is saying. By the way, मैं तो wait ही कर रहा हूँ भाई official lineups की for sure. But to be honest, Chelsea का if I have to say guys again, मतलब हमने discuss ही किया था भाई, सब लोग in the house, big up यार. Again, it's a huge match. So let's have an अपने huge जनता in the house भाई. I know it's a midweek game. I know it's a L with this L-Clasico, but the reality is that, you know, we need to back our teams when these nights are there, because it's a 6-pointer after all. Yes, 6th versus 12th, but
honestly speaking, abhi bhi technically there's a semblance of a chance both for Manchester United to go to Europe as well as Chelsea to go into those top 7 spots. So you never know, just about never know. Although भाई हम भी बहुत खफा है अपने टीम से. Of course ये हम लोग की I think we more or less I had predicted this. जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप लोग, it is not my preferred guys. Before you guys भाई मुझ पे भड़को, क्योंकि Mudryk should start. I repeat, Mudryk should start, but I have a feeling it might just be actually Sterling because it's a huge night. Because Sterling had a huge night against Manchester City. Kahin na kahin, in such huge night, you need a little bit more experience. Although Sterling is not that reliable, I don't know. Nathan, while the lineup will be out in a second. Okay, Nathan is गायब. Nathan is back. Nathan, मतलब would these two be more expected lineups? Although हमारी wish अलग है, I know you want a certain lineup, I want a certain lineup, but I think this is more realistic, right? What is on screen? Let's see what is. I pretty much called it minus Ahmad. I think that's exactly. I would want Ahmad to start. Yeah, I would be okay with this lineup because this is the lineup we are used to. But it would be a nice change. Lineup, by the way. Right. Mudryk is starting, guys. Chelsea fans, Mudryk is starting. यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का लाइनअप भी देखने वाले हैं सेकंड. नेथन भाई, if you can help me out side by side. But as things stand, let me first share the Chelsea lineup on screen. Being Sarang in the house, big up. भाई जो भी लोग देख रहे हैं, let's smash that like button. Come on, let's mods the members subs. Big up to you all, भाई. Again, हो जाए यहाँ पर. This is going to be a proper war, no matter what, in any era. Yeah, let's be real. As much as we have not beaten Manchester United for a good while now in the league, now we have to do that at Stamford Bridge. Bhai, Morata header, man. That was the last time, and of course Lampard in the FA Cup. So uske baad I don't remember much that we have beaten. Morata. Let me just say it lineup verbally quickly, Nathan, for everyone's reference. Petrovic in goal, as expected. Malo Gusto is back, starting now. Is he 100% fit to complete the game? There are question marks over that. Jo humne bola tha in the preview. Disasi and Bardishvili at the back. So Thiago Silva does not come in for such a big game. Kukurea, continues at left back as expected because no Chilwell, Caicedo, Enzo, Gallagher continue in midfield despite Gallagher का जो allegations हुआ था unfairly in midweek. I believe he is starting as captain, so that's great to see that. Palmer, obviously the form man of Chelsea this season, along with Jackson and Mudryk. The only questions were centre back and winger. The rest of the team kind of picks itself because hum bhi injury FC hai, just like a Manchester United. On the bench we have though Chalobah coming back to the bench. That's nice. Thiago Silva on the bench. Again, if we need those headers or some leadership, hopefully वो use करे Poch. Cassidy, a midfielder on the bench, लेकिन वो use करता नहीं है. Chukwuemeka is back on the bench. That's again nice to see. Madueke and Sterling. Nathan, while I pick up the Manchester United squad as well, quick reactions on that Chelsea lineup. You expected Mudryk to begin? Yeah, I expected Mudryk to. They're going to utilize the pace on the wings to, especially if we have Dalot at right back and Wan-Bissaka at left back, they're going to try and expose the wings there because he's not used to being a left back. Wan-Bissaka, full Palmer will be on that side and they'll use the pace to try and subvert Dalot. The lineup is basically like I told you, except Rashford dropped Anthony in. Exact same lineup as I told you will be. It is Rashford dropped, Anthony in. That's the only difference. Bhai Saab, that's a big call. Huh? That's a big call, guys. Matlab Rashford, just like Sterling, in fact, both of them not starting. I think it's a big call by the managers. As much as Mudryk is slightly better in form and Sterling out in attitude, but even Rashford or Sterling are people like who, the motivation is questioned a lot of times. But such a big game, I think Rashford more often than not has done well against Chelsea. So aren't you surprised with that? Because sometimes it happens, na. Rashford has often done well with Chelsea here. Or impact from the bench. I don't know. The thing is, I called for Rashford to be dropped before I knew this, so not surprised because I think other people definitely should get a chance. Like if you're not going to give them a chance, when are they going to get a chance? A, B, Rashford's form's not been great. Yeah, impact and moments are great and all, but like we need to try and get ahead of this game as quick as possible because we got Liverpool on Sunday as well. So as far as I'm concerned, it could be a resting tactic, whatever tactic, it doesn't really matter. What matters is what lineup we have right now that's starting the game. And as of now, Rashford has been, in fact, dropped. They will say they'll be saving him for Liverpool, but obviously we won't know until that game happens too. This game could work, so what is the logic behind? Chalo, Rashford drop is one thing,
But Anthony, I know he has the Garnacho right. left, Anthony right. Yeah, exactly. So in terms of tactic, in terms of position, I understand. But Anthony has also not been in like great form. Like as in he hasn't had an impact at best, right? He's not in great form, but he'll be used as a defensive thing. I think that will be that will be Oh, quite right, helpful right, right. to counter Modric's speed, and it will allow Probably, yes, you're right. Dalot to it will allow Dalot to overlap and invert as well. So बिल्कुल बिल्कुल भाई लेकिन यहाँ पर I think in the background I can see Subhash who's trying to set up and he's joining as well, Chelsea Ultra. But guys, let me know what is your thoughts on this as well as the Chelsea lineup जो मैं try कर रहा हूँ to put up on screen साथ में as soon as भाई a certain website puts it together so that I don't have to juggle between the two sides. वो होता है हमेशा. Mount will come in second half. Score the late winner. Pudin to already there. भाई prediction. Pudin OG subs. We'll wait for the predictions. रुकिएगा जरा सब्र रखिएगा. Thiago Silva should have started, man. Rahul बोल रहे. I agree with this comment. If you're Manchester United ना, all you are doing is भाई cross करो इंशाल्लाह. लेकिन Manchester United also complained is you're not crossing enough. That has also been one complaint recently, right? So कहीं ना कहीं something's going to give वाला मामला है, but entire world knows now Chelsea ka one thing is over the top ball, switch off play or cross or set piece. These are issues of Chelsea, or with that you need some मतलब एक proper एक defense structure, और वो Thiago Silva could have got it. Bardeshile was really bad in the last match. मतलब for me, I rate Bardeshile, but he's also coming back from injury, right? He's been in and out of the side because of injuries. So are you surprised as an opposition that for such a big game, both Sterling and Thiago Silva has not been picked by Chelsea? I mean, I honestly, I think you know this, Ankit, but I've never really rated Raheem Sterling. Honestly, if I'm being honest with you, I don't think he's a bad player or anything. I don't think he's just. I don't know. I think it's different when you play for City and it's different when you play for other teams. Let me just put it that way, I suppose. Okay. Another thing was I didn't even understand why you all spend so much money on him. I was having this discussion doing a Chelsea watch along the other day, and I told someone, see, you can, tactics and all that. That's great when people talk about, but I don't think it requires a person with a lot of football knowledge to tell you that Raheem Sterling will not be a senior figure in your dressing room, even if he played 500 PL games. That is just not his personality. That's the way it is. You could pay him the highest amount. You could spend 50 million on him. Nothing's going to change. If he couldn't come out of that Man City team as a leader for a Chelsea team, he can't do it anywhere. And I never ever got the vibe from him anyway. Personally, I just did not. I'm used to seeing a Lampard, a Terry, a Carvalho, Ivanovic. I mean, like he's nothing like any of these players. He's nothing like. I know he's an attacker, so you can't compare, but he's nothing like any of these players. Like when I think of Chelsea leaders, I think of strong-minded. They put their head where their foot won't go. Those kind of players. He's just not that player. And so anytime you drop Sterling, I'm not really that surprised. Thiago Silva, however, I will say I am surprised. But then again, it could simply be the fact that he is 40 plus years old. Yeah. And he is human. So, बिल्कुल भाई, as Gaurav is saying यहाँ पर I agree with Gaurav. By the way, थोड़ा chat ले लेते हैं as we welcome Subhash in the house. Subhash, first of all, मतलब Chelsea lineup, I'm not sure if you're able to see. मैं डाल ही देता हूँ वापस से दोनों का lineup in detail. लेकिन quick first Subhash agreed with the lineup कि no Thiago Silva, no Sterling, rather going with the young legs in Bardeshile or Mudryk. नहीं, थियागो सिल्वा का तो मुझे लग रहा था कि he will not be picked up because लास्ट फ्यू मैचेस में भी उसने ड्रॉप ही कर दिया था पोचेटिनो ने उनको. और स्टर्लिंग का तो ओमिशन बनता ही क्योंकि बाय द चांसेस ही हैज मिस्ड. सो आई थिंक ओमिशन स्टर्लिंग को आज बिठाना ही थोड़ा अच्छा था. तो आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड बायस, इट्स अ गुड लाइनअप. बट एक और थिंग आई एक्सपेक्ट इज लाइक चेल्सी टेंड टू डू वेल इन द बिग मैचेस. सो आई होप दे डू समथिंग गुड टुडे. और भाई लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हम हारे थे, मतलब द फर्स्ट लेग इन द सीजन. इन दैट लेग दो सुभाष, बाय द वे सब लोग जो भी है बिग अप यार,
let's smash that like button तो करिएगा ही. In case you're not subscribed to our channel, what are you waiting for? Come on over to Almighty Blues if you're watching from Twitter or other platforms, so that you can come and share your thoughts, and we'll try and आपका thought भी share करेंगे. And of course we are coming to a lot more discussion. लेकिन साथ साथ में big ups to SJFC as well as Sports Turn Nathan यार, दोनों के चैनल्स टैग्ड इन द टाइटल, आप चेक कर सकते हो फॉर श्योर. एंथनी ब्रेस इनकमिंग बोल रहे हैं यहाँ पर चैट. टेनाग रेस्टिंग रैशफोर्ड फॉर एलएफसी, व्हाई ऑलवेज अस. भाई स्नोसन बीइंग एन लिवरपूल फैन इज सेइंग रैशफोर्ड अगेंस्ट लिवरपूल इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल्दो ही इज डन वेल अगेंस्ट चेल्सी. मतलब डू यू थिंक Manchester United can afford to do this even? I know it might be just banter from Snowson. I don't know. What do you think, Nathan, on this point about Rashford in the comment? Well, I think if you think about it, like I said earlier, literally everybody around us has dropped points. So we are actually 3 points ahead of West Ham with 2 games in hand. I mean, like, I'm not saying 6 is guaranteed, but it's almost looking mathematically like we're going to get 6 no matter what this season. So, wow. I mean, you could say he's doing it for Liverpool, but quite honestly, I think he honestly just wants to rotate the squad simply because Rashford has just not been in the best of form. And quite honestly, I'm surprised he didn't make more changes after that Brentford game. I mean, we really stunk the place out. So, interesting. Yeah. No, that's an interesting take in itself, guys. Matlab, again, there can be two ways to look at it, basically, because at the end of the day, it is a big week. It's a huge week, in fact, right? Simple as that. I don't think there's any doubts there. But again, yes, again, Devesh, it would be Bissaka on the left, is what I'm assuming, with Dalo on the right hand side is what I'm assuming. Again, Puneet in the house, what can be the on-field structure for Chelsea today? Bhai, to be honest, Chelsea ka I don't think there'll be a huge difference, Puneet. Simple as that. Subhash, मतलब हो सकता है क्योंकि जो हुआ था इन द रिटर्न लेग और rather the first leg of the season, सुभाष याद है आपको, पामर ने मारा था गोल, लेकिन उसमें आम्रबाद खिला था, तो एक फिजिकलिटी हुई थी और पामर एज अ रेयरिटी डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, इफ आई एम ऑनेस्ट, इन दैट पर्टिकुलर गेम, और एक फिजिकलिटी क्लियरली दिखी थी. तो कंसिडरिंग दैट फिजिकलिटी, बिकॉज वी नीड, आई थिंक, और प्रीटी श्योर वो सेम टैक्टिक टेन हाग तो नहीं खेलेगा सुभाष, लेकिन वो एक वीकनेस थी चेल्सी में ऑन इन दैट पर्टिकुलर गेम. तो कंसिडरिंग दैट, मतलब वुड यू कंसिडर जो गैलेगर थोड़ा बहुत वाइडिश खेला है और थोड़ा सा मतलब एंजो आप खेले, और इट माइट बी अ 4-1-2-3 in a weird sense with Enzo Gallagher playing closer to Mudryk and Palmer, क्योंकि उन लोग ने थोड़ा फिजिकलिटी रखा था, एक प्रेसिंग अपफ्रंट ज्यादा होगा, लेकिन अब होम टीम है. मतलब would you think Poch has the balls to do that first of all? एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एंजो फर्नांडिस अगर थोड़ा भी आगे खेलेंगे ना, तो इट लीव्स अ स्पेस बिहाइंड, और काइसेडो अकेला अच्छा नहीं खेलता, उसके साथ कोई ना कोई डबल पिवट तो चाहिए. इट विल लीव अ गैप आल्सो, सो दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक कैन आल्सो यूटिलाइज दोस गैप्स. सो यही अच्छा रहेगा कि एंजेगर और काइसेडो दोनों साथ में खेलें, क्योंकि वो ज्यादा गैप भी नहीं छोड़ेगा और वो डिफेंसिवली विल बी गुड आल्सो. पर देखते हैं क्या मैच कैसे टर्न आउट होता है करके, क्योंकि वो ऑन पेपर टैक्टिक्स ही कुछ और रहते हैं और ऑन फील्ड ही कुछ और रहता है. तो यही इंटरेस्टिंग रहेगा आज देखने में कि क्या होगा करके. बिल्कुल. And by the way, yes, Disasi भी एक questionable था, क्योंकि recently he is given away on own goal etc. थोड़ा lack of focus रहा है. मैं इतना बोलता हूँ, not in the defense of Disasi, I know disaster etc. हम बोलते हैं. देखो, Disasi was never a world class centre back. He was someone who had experience, who could do the job वाला चीज, until we get Fofana back to full fitness. मुझे ऐसा लगा था. That was what Chelsea's long term plan was. I believe so. Might be wrong, लेकिन ये भी बोलूंगा that अगर Manchester City, like he had one of the performances as a centre back in the season, even though हम 12th है. तो कहीं ना कहीं I get that why he's starting, and of course we lack the leadership, और Bardeshile itself is a question mark. Animesh in the house, what's up भाई? काफी Manchester और Chelsea fans in the house, hopefully. Again भाई, guys जो भी लोग देख रहे हैं, do not forget to hit that like, and let's get in everyone. Sancho is cooking Dortmund better than Rashford and Antony for sure, even Greenwood. Oh, Nathan, controversial topic, but it's a facts, nahi? I don't think it's a fact at all. His first goal was against Darmstadt, who's dead last. He doesn't score or assist for the next 5 games. He gets what has he got? Like 2 goals and 1 assist so far. But if you see the way that he's playing now, he scored one. But he scored one of them. But doesn't matter. I'm just going with the way he's playing. Confidence.
It's the Bundesliga. What difference does it make? Like, really? Oh my God. No, but even in cup competition, generally speaking, he's looked happier. Put it that way. Well, who cares? You know what, Ankit? I have to be very honest with you. I couldn't give a shit if he's happy or not. I have to be really frank, because Yeah. you know, he's literally created a precedent that has never existed in our club. Never And in he my was lifetime. at fault. Let's be real. He was at fault as well. No, I'll be very clear with you. He's created such a precedent, no, that I don't even know if if anyone would even want him back with a right thought process. This same manager which he went against set up all-time Premier League and maybe English football precedent by giving him off when we are playing a game every 3 days, right till May. Just before the World Cup, he was sent somewhere else to take care of himself. Everyone goes mental health, mental health, mental health. What about Maguire's mental health? What about Rashford's mental health? All of them were still playing football. He got 3 months off from this coach, and when this coach says he's not up to snuff, he puts out a post like a little girl and cries about it. And then everyone wants to go, what are your thoughts? He fell out with Ten Hag. I'm like, if anything, Ten Hag put his neck out on the line. He set a precedent that simply does not exist in football. When is the last time you have heard anyone, active player, non-injury player, get sent somewhere else to get taken care of while his teammates are playing every game with an injured squad every 3 days, right till May? Like, where have you heard this before? I've never seen this in my life. If someone can give me an example of where this has happened somewhere else, I would love to know. So I don't feel sorry. Yeah? If he's happy in Germany, that's great. But that's a very warped reality of what has actually occurred. So it's okay, man. Like, listen, if he does well in Germany, we'll get a better resale value and we'll get more money from him. So it's fantastic. No harm, no foul. Everyone wins. Okay, guys, I've just tried to put up the Manchester United lineup also again side by side. I'm not sure if it's too visible, but I've just put it this way the best we can. लेकिन भाई सब लोग again आप लोग भी बोलिए आप लोग के thoughts about that question from Pudin. Dortmund wants to sell him now. Ram बोल रहे German league में ये क्या Anthony and Rashford भी खेल लेंगे यार बिल्कुल fair point that absolutely. Sancho Shout out to Animesh. He did some cooking the other day. We United fans don't care about the cooking or how he's burning. A player who doesn't know how to respect. बिल्कुल अगर जो हमारा भाई सुभाष ये तो कुछ भी नहीं है हमारा तो भाई लकाका आज तक कर रहा है भाई let's not talk about him please. Let's not talk about that clown, please. Yeah. But come on, let's talk about the people who are there on the pitch. Subhash, तो again, going back to the tactics of the lineups की बात करें तो in terms of just in terms of the battle जो आप देख रहे हो मतलब the main battle एक चीज मैंने दो चीज बोला था प्रीव्यू में there are two things दोनों ही टीम का आप देखो तो with Poch की टीम में there is मतलब I know Poch ball हमें पता ही नहीं आज तक क्या है let's be real apart from pre-season and a few big games जो आपने बोला करेक्ट लेकिन जो ओरिजिनल पॉच बॉल है ही लाइक दैट स्विच ऑफ प्ले उसके जैसे फॉर एग्जांपल बैक इन द टॉटनहम डेज आपके डैनी रोज होते थे और काइल वॉकर होते थे तो वैसे और आपके जो विंगर्स होते थे वो नॉट विंगर्स यूज्ड टू टक इन और रादर मिडफील्डर्स यूज्ड टू प्ले वाइड लाइक एन एरिक्सन फॉर दैट एग्जांपल राइट तो in a big game मतलब you expect kind of that happening because कुकुरे आज खेल रहा है कुकुरे वापस खेल रहा है back to back गुस्तो obviously will be a main attacker so kind of we can go back three when Gusto is kind of bombing on ठीक है लेकिन on the other hand जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से नेथन ने बताया था about why Antony is playing so Antony one way is like you kind of block Mudryk attacking लेकिन on the other hand Kukurea is better off staying behind because of Antony being there और आप बोलोगे नहीं it's kind of doesn't matter anyway both the teams have proper wingers या मिडफील्ड को आप सप्लाई रोकोगे फर्स्ट बिकॉज यहाँ पर लोग पूछ रहे थे वी माइट ज्यादा मतलब भीड़ कर दे मिडफील्ड में विद एन एक्स्ट्रा मैन मे बी हैविंग पामर टू प्ले इन मिडफील्ड लाइक अ गैलेगर व्हाट डू यू थिंक इज इट बेटर टू काइंड ऑफ क्राउड द मिडफील्ड और आपको लगता है कि यार जो विंगर्स है दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द मेन बैटल आपके लिए गोइंग बाय व्हाट आई सेड नहीं एक्चुअली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फुलबैक्स ऑफ United, right? Like how they'll perform on this today. So अकेला हमारी विंग प्ले पे ही नहीं उनके फुल बैक्स भी कैसे खेलेंगे दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट डिपेंड करेगा बिल्कुल अग्री और कुकरे आगे नहीं लेकिन खेल रहे तो हां how he'll नेथन
So that वो is भी where है. if I'm asking the way that Van Bissaka is now, again, I don't think you can compare him and Amrabat as fullback because Van Bissaka is a fullback and Amrabat is not. ठीक है, लेकिन he's not a left back fullback either. I'm sorry. I was लेकिन laughing. यहाँ पर I was दोनों को laughing side by because side I रख रहा है और remember him. I'm laughing because I remember his first game at a left back. And I was like, oh my god, I can't believe he can play left back. And that was the only game he could play left back in. I was like, oh. नहीं He नहीं played against I Liverpool, right, on left back, Van Bissaka. Actually, तो उसने बहुत अच्छा, he did pretty well that day. You know, listen, for what it is, to be completely fair, Lindelof and Amrabat have done really well. But I'm telling you, it's just a scary thought that before the game starts, no, that this person is going to play left back. What happens after the game? No, you can like breathe a sigh of relief. But when you see the lineup and you go, oh no, what's going to It's the happen today? same with us also. भाई बिल्कुल. तो my question was, Nathan, मतलब Van Bissaka, do you expect him to kind of stick back or stay back because हमारा right hand side में Palmer kind of roams around and the physicality approach, you expect him to do that, यार be a man on Palmer, ठीक है? Or you're saying कि नहीं, Van Bissaka might actually just surprise you and you might have your midfielders where you might overpower because of let's be real, as much as Caicedo or Enzo better किए last few months में, they are very tired compared to Manchester players because literally every second खेले. So you might get an extra midfield, a person in midfield rather, to kind of win the ball there because Palmer roams in midfield more compared to wing, if you're honest about it, right? So what do you see Van Bissaka role being like tonight? So I think Van Bissaka first of all, Van Bissaka is going to have a tough job. Let's be honest. He's going to have to mark Gusto and Palmer. But the thing is, right? When it comes to Palmer, I have a feeling that Menu is going to be on him because he's going to be roaming in that area. Interesting. So the fact that Menu's on that side gives me a little bit of relief because I can rely on Garnacho also to fall back. So that left side we got to keep on lock. The right side I'm worried about because in case Anthony misplaces passes and Dallo inverts or overlaps, Mudryk could devastate us from the left-hand side. So right-hand side, I'm not that worried about, but because of the people that are in and around Palmer's vicinity, I think the great thing about Garnacho, we saw in the Liverpool game. I mean, he ran up and down the entire game, the absolute entire game. Like he was done after the game. Like he was absolutely gassed out. He was done. So the great thing about this side is I think Palmer is more trickier than Mudryk. It might sound like a weird thing to say. I also think Palmer is much more of an X factor in terms of intangibles for Chelsea. So I feel like Van Bissaka is probably our best mobile defender. So I'd prefer keeping one, even though he will be on the left-hand side and Devesh is saying he should be on the right. I am more, because of Mudryk's style of playing, he's very direct. I'm not that worried about him. I would use my more mobile fullback to mark the more complicated I would player. like to slightly differ that, Nathan. मुझे लगता है ना, Mudryk has not been as direct in a Chelsea jersey as हम जो साइन किया था, क्या बोलो, साइन किया था. At that point, he was supposed to be that, or maybe it might be the confidence, maybe the way that teams play against us more low block. लेकिन in big games, I agree. In big games, maybe उसको मतलब he'll get more of a license. इसलिए that's where my question came, because Dallo is supposed to be or known to be, as in more end to end, compared to Van Bissaka. So वहाँ पर I think Van Bissaka is going to be trying to lock down Palmer and Gusto. I think I won't expect him to roam far front. Although the good thing is the good news about not playing Rashford and playing Garnacho is Garnacho will eventually relieve him in many of the attacks. So I think our most mobile fullback is Van Bissaka, just in terms of the fact that he's dynamic with the slide tackles and all that. I think marking Cole Palmer let's be honest, he's one of the more informed players in the league. Like it's all well and good to say 12th place and lost to this team, lost to that team. But if you look at individual performances, I think Cole Palmer should be marked by someone who's willing to lock down players like Salah and, someone who's really like marked down a lot of the good attackers in previous years in the Premier League. So
as much as he's going to be at a disadvantage playing left-hand side, I would rely on Wan-Bissaka more than Dalot to at least shut down Palmer. The fullback is a different story altogether, but in terms of just Cole Palmer, I would rely much more on Wan-Bissaka to shut him down personally. Yeah, bigger भाई सब लोग जो भी यहाँ पर है, again I might not have taken the name, लेकिन you know that we were kind of highlighting, and of course you guys are part of the fam, absolutely. और यहाँ पर मैंने बोला भाई, come on man, Nathan is here of course on the panel, तो अभी के लिए भाई he's outnumbered by 2 Chelsea fans, but we all know that कहीं ना कहीं we all we love this fixture. मैं यहाँ पर थोड़ा सा we'll come back to the tactic in just a minute, लेकिन उससे पहले मैं पूछता भाई एक I'll put you on the spot, Subhash, which is the Chelsea Manchester United match जो आपको मतलब द बेस्ट लगता है हमेशा, मतलब दैट काइंड ऑफ मैच अगर मिल जाए आज तो भाई बढ़िया मजा आ जाए, पैसा वसूल. एक्चुअली जब भी चेल्सी मैन यूनाइटेड का बात होता है ना, मुझे टॉरेस का वो मिस याद आता है. यार अपने खुद की ले ली यार. नहीं, मैचेस तो बहुत सारे अच्छे हुए हैं, पर दैट मेमोरी इज सो एच्ड इन मी कि जब भी मैं ये सुनता हूँ कि हम यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो वही वो मैन यूनाइटेड का मिस अगेंस्ट ये वही याद आता है. पर उसके अलावा भी शायद से वो एक्चुअली वही तो है. सुभाष भूल, मतलब नेथन, सॉरी टू कट Subhash. Nathan, Subhash has forgotten, bro. 7 years ago, we beat Manchester United. Subhash is like, bhai, Subhash is an ultra for all, you know. Bhai, Subhash, Conte versus Mourinho, yaar. मतलब, you don't have to go that far back as well. Conte versus Mourinho. मतलब मेरा personal, I've called it when I was lucky enough to be called by Chelsea TV ना. उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं तो बोला this has to be that moment ना. मतलब especially being a Mourinho stan ना, for me, the entire thing was like ironical almost. So that was one thing. लेकिन साथ साथ में I also remember the bad memories like Subhash ने बोला. I remember under Lampard के stint में the first stint, by the way, the first stint when we all were so excited seeing these youngsters, and you know of course Mason Mount and others were there वहाँ पर, who can forget, but it was a telling कि भाई ये Chelsea will take time against Manchester United. वो boys against men लग रहा था, but the way that we have come through, rather Manchester United not come through after that, is also telling about the clubs that, you know, kitna malab, you know, say it's not balanced, or rather it's not stable. Nathan, what game have you to pick, man? There, of course, Champions League final is what I'm assuming you'll say, but apart from that, Premier League की बात हो रही है यहाँ पर. So I'll tell you. So I believe Devesh has picked the one I was going to pick actually. So his first match as a full-time debut United manager was the 4-4. The four goals we scored against Sheffield. Sorry, I think it was 4-1. Sorry, not 4-4. The reason that was my favorite one was, and I have a soft spot for him, and I'm so glad he's doing well in the championship. But Dan James scores the 4th goal days, maybe a month after his father passed, and in between that he signed for United. 21 years old, he comes out on the pitch, scores the 4th goal. It rolls in. Doesn't hit it best, but when I saw him run to the corner to celebrate, you could feel like he was about to cry, right? Because he just lost his dad. He joined the club of his dreams as a youth. Like that was a really good feel-good moment. And I always from that day onwards had a soft spot for Dan James. So yeah, I would say that. Yeah, Devesh, I think they just picked the same game I'm thinking about, and the reason is Dan James for me. So yeah. I'd go with that one. भाई अगेन अभिषेक स्क्रीमिंग सो हार्ड. मैं भाई दे ओले की बात ही चल रही ना. आई नो अगेन मैं भी चीटिंग करूंगा थोड़ा सा भाई. अगर आप लोग भी थोड़ा चीटिंग कर रहे हो, मैं बोलूंगा भाई FA कप सेमीफाइनल. I think that was a tactical masterclass that the first stint Lampard did on Ole as a one-off for sure. That was one of those games that tactically, if you love the game, even as the neutral, I thought that game was tactically, you know, very, very sound to watch. But again, some crazy games. I remember like again, David Luiz, I think scoring, everyone would remember that. That was crazy. David Luiz, the new signing, the way he scored he was in the box, and I think it was a chest and a volley, if I remember right. Absolutely fantastic goal that he scored. One of those games I cannot forget. And I think Chicharito log bol rahe in the chat. I know the save that Peter Cech made. I know it was again in the cup game, but Chicharito, or was it in the cup? I don't know. But Dembaba Chicharito moments of that era, 2011, 12, 13, काफी सारे games हुए थे. But even before that, I think obviously the prime games were in mid 2000s. Again, थोड़ा सा cheating और करे तो
it was a boring game, but it was so significant for Wembley, the new Wembley, where you had a long game and Drogba scoring that extra time में जो हुआ था. Abhishek बोल रहा है, remember I got hit by my dad after United's comeback in the Chelsea 2012 3-all. Absolutely, many of us did, I believe so. But anyway, again, जो भी लोग देख रहे हैं, big up to you all. लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ likes काफी कमी हो रही है. I know it's past midnight in India, man, come on, but we are here no matter what. Pretty sure everyone rate, एक सेकंड दीजिए मुझे, रेट करिए absolutely how do you like the setup यहाँ पर, how do you like the thumbnail, and of course we are trying to take as much chat as possible. और आपको पता ही है भाई यहाँ पर ultras in the house, all of us भाई, again lucky enough to be watching from early to mid 2000s, just to let you all know, be it Subhash, Nathan, as well as myself. Chicharito last goal was offside, I lost it completely. Tamo let's not go there नहीं तो भाई यहाँ पर जंग छिड़ जाएगी. Martial, yes, Martial also. By the way, to be honest, even for that matter, Rashford जो नहीं है, Rashford scored a fantastic free kick in a cup game जहाँ पर Batshuayi scored a great goal as well. Some moments यार, was it हाँ वो भी था ना cup game में, Ramirez scoring that 5-3, was it against Manchester United, a crazy cup game that we had in the Carabao Cup, I think probably after Mourinho's era, I think probably. Lekin again, getting back into it, let's again come back to the lineup and जो changes of tactics की, or rather let's talk about the coaches. हम इतना avoid कर लिए सुभाष कोच कॉन्वर्सेशन. आई नो बहुत ज्यादा एंथू के साथ तो हम नहीं बोलते, लेकिन रियलिटी ये है, ही इज आवर कोच एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक है, एक चीज जो मुझे अच्छी लगी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस टाइम कंपेयर टू जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिसेंटली हगा है उसने, देखो he used to speak well when he was a Chelsea manager earlier in the season, ठीक है, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स में इश्यूज है. इस बार जो बोला है वो कॉल आउट किया प्लेयर्स को. आई थिंक बहुत लोग बोल रहे हैं भाई उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को. वो he didn't put the blame directly. वो बोला है that basically if we are not kind of motivated for these kind of matches, if you're not fighting for the badge, अब अगर आप एक्स्ट्रा भागोगे नहीं, मतलब you have to run. Firstly you have to run. Performing tactical things, technique, skills that are secondary. Subhash, first you have to run and make sure that you are fighting for the badge. ठीक है, वो चीज जो बोला है सुभाष, इज ही पॉइंटिंग टू सर्टेन प्लेयर्स इन द 11 और इन द स्क्वाड, और आपको लगता है कि यार ही इज मतलब अपने पर ब्लेम नहीं लेकर ही इज पुटिंग द ब्लेम, आप क्या सोचते हो? मैं एक्चुअली आई एम विद पॉच फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. व्हाट आर यू? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि ही इज टर्निंग ऑन द ब्लेम, लाइक वो जो भी क्रिटिसिज्म वो उसको मिल रहा है, ही इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट दैट क्रिटिसिज्म मेनली, क्योंकि उसका टैक्टिक्स भी उतना अच्छा नहीं रहा है और सब्स्टिट्यूशंस भी मेनली दे आर नॉट दैट गुड, सो ही इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट देम. और हम देख ही रहे हैं कि वो कैसे अपने सब्स्टिट्यूशन और टीम सिलेक्शंस में भी मात खा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक लाइक ही इज ट्राइंग टू पिन पॉइंट एनी प्लेयर्स, but he is rather it's a very good ploy that he is trying to deflect that spotlight we have on him right now. Or main thing though, all these bad defeats and all, it's mainly because of his the management only, right? Like his strategies and his tactics and all. So he's also equally to be blamed for that. और उसने अगर वो कुछ ठीक से इंस्ट्रक्शंस वो नहीं दे पा रहे हैं अपने प्लेयर्स को, या वो ठीक से समझा नहीं रहे कि उसके जो लाइनअप है या जो उसके जो प्लान है उसमें कैसे खेला जाए, तो मेनली इट्स बिकॉज हिज फॉल्ट ऑल्सो. लाइक ही इफ ही कैनॉट कन्वे व्हाट ही वांट्स ऑन द पिच, देन इट्स ऑल्सो हिज फॉल्ट. बट मेनली मुझे ऐसा लगा कि ही इज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट दैट by putting spotlight on other players. इंटरेस्टिंग. यहाँ पर अगेन जो पॉइंट बोल रहे सुभाष, वेरी गुड पॉइंट अबाउट द बेंच. कहीं ना कहीं दैट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग प्लेयर्स ऑन व्हेन नीड बी. अब आप बताइए हर मैच में अलार्म क्लॉक बजती है वो 60 मिनट के समय कि भाई बेसिकली चलो भाई शुरू हो जाओ, अरे भाई मजा नहीं आ रहा, चलो उठ जाते हैं अपने बेंच से, और फिर थोड़ा बहुत हलचल मचती है बेंच पे, एंड देन थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं. ऑल दो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स व्हाई आर दे रेडी टू काइंड ऑफ कम ऑन राइट अवे, आई डोंट नो, दैट्स आल्सो एन इशू. सो दैट कम्युनिकेशन जो सुभाष बोल रहे हैं विद द प्लेयर्स अबाउट व्हेन दे हैव टू कम ऑन, एंड दैट डिसीजन मेकिंग अबाउट व्हेन दे हैव टू कम ऑन इज इंपॉर्टेंट. बट इन दिस मैच मतलब नेथन, इफ यू हैव टू पिक 65th मिनट में चेल्सी के लिए, तो भाई वी नो दैट इट्स गोइंग टू बी द चेंज एट बेस्ट. लेकिन बिग मैच ही और भी ज्यादा हेजिटेंट होता है टू गेट पीपल ऑन. बट generally on the bench, whose bench is stronger in injury FC versus injury FC, Nathan, for you? Mason Mount, Marcus Rashford. I mean, ours is looking better. Yeah. But
Eriksen. Quite honestly, it doesn't really mean anything. I read somewhere that we've got 55 separate injuries this season so far. And So it's like, and we are like any of keyless. these players could come on and get injured, and then next thing you know, our bench doesn't look so good either. So Interesting. no, नहीं बिल्कुल it's मतलब all But like United's you said bench is मतलब looking both of more the experienced. United की bench they have experience many ज़्यादा है. experienced players on. People like Eriksen, people like but see, but I was just saying this exactly to Ankit earlier about experience. Experience doesn't mean the same thing to every player that it means to a fan. I was telling Ankit the best example about Raheem Sterling trying to be a locker room leader because you paid him the most money and 50 million to get him from City. Like he was just never a leader. You could have paid 100 million, could have paid him 1 million a week. He's never going to become a leader because you pay him more money. So it's like, even though he probably has the most experience of every player except Thiago Silva in that lineup, all 22 of them. But it doesn't mean anything because experience means different things. Experience can be your personal ability to play. Experience can mean what you bring to the table in intangibles. Experience could mean many things. Our players have experience, but if you can go back to that substitution thing, Ankit, if you don't mind, can you just go back quickly? yes please. If that's okay. I just want to show some just to prove my point. If you don't mind. If you just look at our right hand side lineup, right? Outside of Christian Eriksen, who himself, poor fellow, has managed to overcome his own personal atrocities in the last few years. None of these people are actually which one of these people you would put as a captain, except McTominay? Yeah, I know Scotland, all that. Yeah, let's not do that. But I'm talking about everyone else. You look on that right hand side of the sheet. Which one of them you'll put the captain's armband on right now? And भाई actually be a leader, not just give them the captaincy armband like that. You can Why, give anyone the let me captaincy take that armband. one question from Nathan. ठीक है मुझे लगता है मतलब again Nathan is probably not wrong from a Manchester United perspective, लेकिन मैं बोलता हूँ मतलब outright I know Manchester United में इतना समय नहीं spend किए होंगे in terms of on the pitch as a leader, but for me in terms of leadership qualities जो आते हैं clearly for me Johnny Evans, of course at this point in time you don't want that, let me complete that. Johnny Evans, for me Marcus Rashford, for me Mason Mount, for me Scott McTominay, and to some extent Amrabat also have leadership qualities. I would never give Scott McTominay goes missing regularly in an actual game, Ankit. I But would if you see the never give him the Scottish captain armband. national team games, he is a leader, bro. Come on. Yeah, but that's like comparing England team to the Faroe Islands. It doesn't really mean And anything. you know, It's like, exactly my point. यहाँ पर मैं discuss कर रहा हूँ I wouldn't give Sterling the captaincy armband either. By the way, I don't Nathan, know. I'm not just listen talking to about me, my. I wouldn't give him. brother, listen to me. Guys, आप लोग भी बोलिए. मैं यहाँ पर context ले रहा हूँ. If you see the Chelsea bench versus the Manchester United bench, Chelsea के bench में apart from Thiago Silva, there's literally no one. There's literally no one जो एक leadership element लाता है. जो अगर आप you have to secure that backline and defensive midfield structure, you need a Thiago Silva. That is what would help. लेकिन यहाँ पर in Manchester United, experience is one thing, but even एक होता है ना मतलब knowing what to do in difficult situations, been there done that वाला चीज है. मतलब even Mason Mount मैं बोलता हूँ right now I know कहीं ना कहीं the main talking point आज है Mason Mount, whether it will be good etc. I don't care right now about, but what Manchester United fans should be caring is what he should give for a Manchester United badge. और for me एक जो है चीज मेसन माउंट ना, नो मैटर व्हाट, आई नो इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड एक वन ऑफ गोल से आप जज नहीं करोगे, लेकिन फॉर मी मेसन माउंट इज समवन हु वुड गिव यू फॉर द बैच. मतलब ही इज समवन जो आपको पता है दैट ही विल गिव यू लाइक 100% व्हाट ही कैन, फिजिकलिटी दे पाएगा. मैकटोमिने का यस इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी इश्यू है, बट मैकटोमिने आल्सो टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं वो सस्ता गैलेगर मैं बोलूंगा उसको. मतलब आई फील दैट वे दैट गैलेगर इज ऑन द पिच. आई नो सुभाष आई पुट टू यू, आपको क्या लगता है मतलब इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप राइट नाउ, क्योंकि मतलब गैलेगर इज द कैप्टन और हमारा तो भाई लैक ऑफ लीडर्स इज मतलब इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड राइट. लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऑन द अदर हैंड ब्रूनो इज है फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट, बट ऑन द अदर हैंड यू कैन आर्ग्यू कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में बेंच में ज्यादा लीडर्स है देन द स्टार्टिंग 11. तो हैव दे मेड अ मिस्टेक कंसीडरिंग दैट कि यार हो सकता था कि यार वो हमें प्रेशर पे डाल दे बाय हैविंग मोर लीडर्स एंड जस्ट यू नो पीपल हु बीन देयर डन दैट. नहीं, पर जो भी यूनाइटेड के बेंच में बैठे हैं, they are mainly because they are either recovering from injuries or they are like coming. उन्होंने कुछ मैचेस नहीं खेले थे. आप माउंट देख लीजिए, इवन इवांस आल्सो, अमराबात इज आल्सो लाइक दैट. अमराबात और
Rashford also is there. Yeah. Yeah, though but, Rashford को but हम guys, नहीं ले सकते. remember we are talking about captains on the bench. I would not give captaincy to McTominay and Rashford and McTominay. This entire नहीं, season have been missing. They avoid running. They avoid doing everything. I सीजन would के हिसाब never से give them the नेथन इज captaincy. राइट. सीजन के हिसाब No से chance. not- The not- only person on our bench that I would give captaincy to is Christian Eriksen, who's actually captain of them. That's it. No one else. Evans definitely यार भाई. Evans, but I don't see him starting a lot of the season. Okay, Like let me put behind it the this way. scenes, If you're in a behind the lead, scenes, yes. if you're in a lead, Nathan, ठीक है, at Stamford Bridge, ठीक है, definitely you're getting Evans on late, यार. Correct? Based on जैसे how हमने Ten Hag Thiago does Silva के बारे में substitutions, बोला. based on how Ten Hag does substitutions, yeah. Probably before we get into the lead, based on how he's doing substitutions right now. या भाई दानिश तो यहाँ पर आ रहे हैं माउंट विनर प्लीज भाई. एवरीवन इज मोर इंटरेस्टेड इन द माउंट. भाई सबको चाहिए ड्रामा. भाई ड्रामा चाहिए आप लोगों को बस. हाँ ड्रामा ला दो बस. सिंपल. मैंने इतना रोना हम लोग चेल्सी फैंस से इतना रोना किया भाई लास्ट समर में. वी ऑल नो दैट यू वर हियर फॉर द ट्रांसफर स्ट्रीट नेथन फॉर अ कपल ऑफ देम एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ आई फील अबाउट द एंटायर सिचुएशन. एंड चलो उस पर आ ही जाते हैं. आई हैव बीन बेसिकली यू नो बीन अवॉइडिंग दैट अलोंग विद द मैनेजरियल टॉक. और टेन हाग पर भी क्वेश्चन करना है बिफोर यू नो we kind of get to the game tactics again. Nathan, Ten Hag coming and saying about Mason Mount, Chelsea did not want to sell him and he wanted to come to Manchester United. मतलब if you actually read it, अगर आपको कुछ नहीं पता ना स्टोरी के बारे में, if you don't really follow Chelsea closely and the Chelsea tabloid and Almighty Blues FC, अगर आप लोग follow नहीं करते हो ना, then you will see भाई Mason Mount, मतलब Chelsea एक तुच्छी क्लब है और Mason Mount गए just for Manchester United. While for all we know, yes, it's partly true also because his dad was a Manchester United fan. Of course, Manchester United has that aura. But come on, Ten Hag definitely did not really mean what he said. Are you sure, right? See, this is what I'm going to say, okay? Guys, first of all, always take Ten Hag's interviews with a pinch of salt. His English is not very good. I don't know which sentences he means and which sentences he doesn't mean. But what I will say is this. I think we are Manchester United and Chelsea as a fan group, we are about to have the best win-win situation of the season. Okay, I'm going to paint a nice picture for you. Mason Mount comes off the bench. He scores a couple of goals. You sack Pochettino. You're Pochettino free. We are close to Spurs, which you all don't like. I think it's a win-win for everybody. I don't know. Maybe it's just me. But, you know, I think we can all win after today's, if everything works out well today. Wow, interesting. Again, a lot of people agree with the captain talk. By the way, Varane would have been an interesting choice, by the way. Like Varane का contract situation is also an issue. But talk about contract situations, Mason Mount का हम बात ही कर रहे हैं. Gallagher का भी है हमारा भाई. It's kind of Mason Mount part 2 जा रहा है. भाई ये चीज हम लिटरली हर हफ्ते बात करते हैं और भाई मेसन माउंट को पूरे हम समर में बात किए. सुभाष, by the way, big up to the goats यहाँ पर, all the members as well, not just subs भाई, Ramit, Utkarsh in the house as well as Animesh and the others. भाई again जो भी लोग देख रहे हैं, quick shout out भाई, let's like मैंने सुना है कि 125 likes we are not reached. Come on, हर टाइम का ड्रिल है, nothing new. And yes, let's get to 12.5k, but more importantly, let's subscribe to Sportster Nathan, not just our second channel, as well as SJFC. भाई, it's tagged in the title. ज़्यादा so search नहीं करनी है, as well as first line description. So, Vash, going back to the conversation about the contracts, ठीक है. अब यहाँ पर वरान का एक सिचुएशन है, थियागो सिल्वा का एक सिचुएशन है, यू नो मेसन माउंट का एक था और गैलेगर का एक है. तो थिंग्स विल अगेन वही है, वो डेजावू होना ही है. अब हम कुत्ते की पूछना टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, हम सीखते नहीं है. एंड मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आल्सो विल एग्री कहीं ना कहीं दैट हैज आल्सो बीन द केस एंड दैट इज व्हाई अनश्योरिटी अबाउट यू नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस और बी इट यू नो रिक्रूटमेंट एज थिंग्स स्टैंड. मतलब मैं आपको एक चॉइस देता हूं, सुभाष आप लोग भी बोलिए चैट में सब लोग, ठीक है. वन इज you get a Thiago Silva extension, ठीक है, और you basically let go Gallagher but you get good money out of it, और आप अच्छा से आप you buy a player and you know that Chelsea are linked to numerous players. उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, you know that. That's one thing. Second option is आप basically Thiago Silva को छोड़ो. यहाँ पर Nathan, close your ears for one minute and all the Manchester United fans, just go to Rafael Varane's camp. यहाँ पर we are mini France. We are literally mini France, Chelsea, ठीक है. Just go, जो थियागो सिल्वा का रोल होना चाहिए था, that same thing Rafael Varane can do,
ठीक है, एंड देन यू बेसिकली हैव ऑलमोस्ट अ पर्सन ऑन अ फ्री, और साथ में आप गैलेगर को भी एक्सटेंड करोगे या आप सेल करोगे, अप टू यू. What is your option, Subhash, in terms of the defensive situation right now? और आप बोलोगे नहीं, don't go for both, go for a young defender. What Chelsea वही है जो फेटिश हमारा 25-year-old defenders और 23-year-old defenders के पीछे जा रहे हैं. आपका क्या ऑप्शन रहेगा कम द समर? नहीं, एक्चुअली I'd like to keep Thiago Silva in this team because we need that experience, you know. अगर Thiago Silva भी जाएगा तो that last bit of experience will also go from our team. So Thiago Silva को extension देना चाहिए, पर कॉनर गैलेगर का है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वो जो वेजेस मांग रहे हैं हम वो वेजेस हम उनको नहीं दे पा रहे हैं. एंड या इफ लेकिन वापस से मैं रोकूंगा एक सेकंड, सॉरी टू कट यू, लेकिन कॉनर गैलेगर मेसन माउंट का बात कर रहे थे ना, मैं आई एम पुटिंग सुभाष ऑन द स्पॉट, आई नो. कॉनर गैलेगर शुड ही डू अ मेसन माउंट और नो? कम ऑन, मतलब लेट्स बी रियल, एज अ चेल्सी फैन यू कांट एक्सपेक्ट हिम, मतलब ही शुड बज ना, कम ऑन, ही ब्रीथ्स ब्लू यार. नहीं, पर कॉनर गैलेगर को मेसन माउंट की तरह ऑप्शंस नहीं है ना. ही ईदर हैज टॉटनहम हॉटस्पर, और वो भी अभी लिंक ड्राई अप हो रहे हैं, या तो वेस्ट हैम से लिंक आ रहा है उनका, तो उतना ये नहीं है. एक्चुअली ही डजंट हैव दोज मेनी हायर बिगर क्वालिटी टीम्स और बिग टीम्स चेजिंग आफ्टर हिम. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंत में ही विल सेटल डाउन और ही विल नेगोशिएट. सुभाष ने ले लिया टॉटनहम की बुरी वाली. एक सेकंड भाई, गाइस, डिड यू गाइस रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग? कंपेयर चेल्सी एंड टॉटनहम. चेल्सी हैज अ बिगर टीम, राइट? Yeah, of course, bro. Come on. Yeah, remember what Hazard said? Not Tottenham, bro. Not remember what Mourinho said? Not Tottenham. But anyway, if you know, you know. But having said that, आप तो जबरदस्ती दे रहे, हमारी लोग ले रहे हैं अभी तो यार हमें, मतलब to be honest, we deserve to be not as in trolled as well to some extent, not totally. But Nathan, Manchester United transfers, just 2 minutes conversation. What are you seeing? मतलब with the Ratcliffe era, things will change. Pretty sure things will change, right? So, what are your priorities as a Manchester United fan right now? I think we need two centre backs, a midfielder, and a right back at least, and a backup striker. I think one of the midfielders will be. I think one of the midfielders will be Dango. I think he'll get promoted up, like Kobe Mainoo got promoted up from the exact same system. We need two centre backs. I would like Todibo and, well, I actually want Gonzalo Inacio, but I don't think we're going to get him. Yeah, I think right Antonio is someone who's very expensive as well. वो भी बहुत expensive है. Yeah, Antonio Silva has 100. And it also depends on आपको Champions League football मिलता है कि नहीं. Obviously यहाँ पर Chelsea का तो भाई वो तो option है ही नहीं. But I think, to be honest, it's interesting to talk about centre backs the way they're doing, because मतलब Manchester United, I know injury FC है, but at one point आपके पास 4 left backs थे and 5 centre backs थे इस season. So we had 3 left backs. So okay, so just to clarify quickly, we had Alvaro Fernandez, who played most of pre-season. We had Tyrell Malacia, who got injured before the season started, and then we got Luke Shaw, who got injured during the season. So before the transfer window ended, like a week before, both our left backs were injured. It was coming close to the deadline. We decided to loan Alvaro Fernandez to Granada, I think. And what happened is we got Sergio Reguilon for 6 months because the medical staff promised him that either one or both left backs would be back by the new year. So we technically tried to time it perfectly. Alvaro Fernandez wasn't doing well there. January, instead of calling him back when we had no left back because Reguilon was gone by then, instead of calling him back, we sent him to Benfica. Now we have no left backs and Dalot plays left back. So technically we had 3 left backs, but everyone doesn't think Alvaro is going to be there, even though I think Malacia, after missing an entire season, it would be harsh, but he has to go. I mean, I would not, between Malacia and Luke Shaw, there's too much injury concerns there. I would have to get rid of them, and I would have kept Alvaro Fernandez at least for 1 season. He is a youth academy. He comes under homegrown. There's a lot of benefits, low wages, blah, blah, blah. We can go on. And I think, you know what, that has been the United way. If you are honest about it, again, Ole was also trying to do that. And Ten Hag ko itna to bolna padega, the way that he's got out Kobe Mainoo, etc. I think kahin na kahin it's a pleasant surprise that Ten Hag has been able to do that. Even with Diallo, there's no surprise that Nathan picked him in his preferred 11 aaj ke liye. Ten Hag was brave in certain things. Of course, some stars, it was controversial जो किया था उसने, लेकिन certain people, again, it's good. By the way, nice to see Jordi as well others again. लेकिन यहाँ पर अगर academy की बात करें
भाई सुभाष, Cobham is probably second to none. You can almost argue to right. अपना Man City, Yeah, true. La Masia, as well as Ajax, as well as a couple more मैं बोलूंगा. मतलब यहाँ पर we are talking about what Manchester United used to be in the late 90s, in the early 2000s. हम यहाँ पर Southampton. रख रहे हैं, correct? Southampton. मतलब इतना सारा हो रहा है. Ian Martson यार भाई, आप जानते ही हो, for people OG watchers, यहाँ पर I am also Dutch fan. And the guy, मैं तो वेट कर रहा था कि फाइनली वी हैव अ डच प्लेयर आफ्टर भाई ऑल दोस इयर्स हु कुड पोटेंशियली स्टार्ट फॉर चेल्सी. आई नो मैं यहाँ पर चिलवेल को लॉट ऑफ चेल्सी फैन बेस सेइंग लेट हिम गो एटसेट्रा एटसेट्रा. आज तो भाई एनीवे इज इल. I wouldn't let him go because we need that person who's a winner to some extent, and he is. इसलिए मैं रखना चाहूंगा. Maybe he's not a starter, but he will compete. वो compete. मतलब हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि भाई substitute नहीं. आप सिटी को देख लो ना, यू चेंज एनी प्लेयर, दे आर गुड इनफ एज अ स्टार्टिंग लेवल ऑलमोस्ट. मतलब दैट इज व्हाट प्रोबब्ली वी वर इन द लेट 2000s विद पीपल लाइक जो कोल बेंच पर थे, डेको बेंच पर था, एसियन बेंच पर रहता था. मैनचेस्टर यूनाइटेड का देख लो, मतलब ऑल दोस इयर्स अगो, मतलब वन कैन आर्ग्यू व्हाई डू यू थिंक माइकल कैरिक डिड नॉट गेट सच अ लॉन्गर करियर, बिकॉज यू हैड सो मेनी स्टार्स अराउंड हिम. तो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ फेम ही डिडंट गेट दैट फेम ही शुड हैव गॉट, लेकिन देयर वर सो मेनी स्टार्स. तो लेकिन एकेडमी आप देखो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ द ओल्ड वो हैड एकेडमी, चेल्सी was supposed to be having academy. और भाई हम चैंपियंस लीग जीते विद a few academy players यहाँ पर सुभाष. बॉटम लाइन मेरा क्वेश्चन का ये है कि भाई राइट नाउ अगर आप सोच रहे हो चालोबा, ठीक है, ब्रोजा, गैलेगर, यू नो, इयन मार्टसन, लुइस हॉल, और भाई एक दो नाम आप जोड़ लो, मे बी हचिनसन फॉर ऑल वी नो. Fofana, Dadro Fofana. हाँ, फफाना तो एकेडमी पर्सन, बट आई हियर यू, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमी. तो एकेडमी पीपल में whom are you saying, मतलब रियलिस्टिकली कौन स्टे करेगा भाई चेल्सी में? कोई भी नहीं आंसर है यार. सुभाष का चेहरा से पता चल गया, नोइंग टॉड बॉली और भाई साला कोई भी नहीं स्टे करेगा. वो सभी जाने वाले हैं. स्ट्राइक्स आर गोइंग मैन. Yeah, pure profit. We see them as the ones for future generation. Todd Bowley sees them as for pure profit. But I like to keep. मैं चालोबा को रखना चाहता था क्योंकि he played well under Tuchel also. I think it was under Lampard also, right? Like when he started, he played well under Lampard as well as Tuchel. But अचानक से ये Tuchel sack हो गया, तब से चालोबा का करियर फुल डिप हो गया. तो आई थिंक चालोबा को एक चांस और देना चाहिए. अगर हम थियागो सिल्वा को लेट गो करते हैं ये सीजन, तो चालोबा को तो रखना चाहिए. एंड इवन आई हैड होप्स ऑन मार्टसन आल्सो बिकॉज ही प्लेड वेल इन प्री सीजन. हमने उनको कहाँ नहीं खिलाया, राइट विंग पे खिलाया, लेफ्ट विंग पे खिलाया. बिल्कुल सही बोल रहे हो. और कुछ टाइम्स पे तो एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी खिलाया चालोबा, सॉरी मार्टसन को. बट वी डिडंट प्ले हिम आल्सो. तो यही है कि आई लाइक टू सी मार्टसन. गैलागर का तो मैंने बोल ही दिया है कि they'll somehow negotiate, but it all depends on Todd Bowley कि वो उस दिन पे उसका मूड कैसा रहता है और and how he decides to act up and down. देखो वो भी एक नैरेटिव बन जाता है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हियर यू सुभाष, लेकिन I don't think it's all about Todd Bowley. In my personal opinion, वो नहीं है. It's all about also the FFP numbers जो आपके basically you know say the contract talks होते हैं with the ongoing things, or as well as it's a consortium. तो हम यहाँ पर एक फेस Todd Bowley है तो हम उसको बकरा बना के चलते हैं. I get it totally. एक बंदे को तो हम एड्रेस करेंगे तो किसको करें, right? Clearly को एड्रेस करना is like addressing thin air. वो ऐसा लगता है, right? तो I totally get it. लेकिन the reality ये है कि यार वो issue है consortium में, मतलब Chelsea has not been under a consortium. So for me, it's a huge thing, and of course, by the time वो consortium decision लेती है, it's too late, and that's exactly what happened in the case of Antonio Rudiger, in the case of Andreas Christensen, in the case of भाई Mason Mount. मतलब ये सब प्लेयर्स, मतलब कोचिज टू सम एक्सटेंट आप बोल सकते हो, जॉर्जिनियो आप डेफिनेटली बोल सकते हो. ये 4-5 केसेस है जिरू इन द पास्ट, राइट? तो यहाँ पर द प्रॉब्लम हैज बीन दैट हमारे पास प्लेयर्स है, बट डिसीजन ले रहा कौन है? मतलब दैट इज द होल पॉइंट. यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी विद रैटक्लिफ एरा, आई डोंट नो इफ ही, नेथन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? मतलब आई नो 7 minutes left for kickoff, लेकिन are you expecting Ratcliffe to be the main decision maker in terms of hiring decisions? No, or it's going to be Borada, Ashford, Wilcox. It'll be in that order, okay. I believe. Interesting that. At the moment, it'll be Borada because Wilcox and Ashford are on gardening leave to various lengths of time. At the moment, it'll be Omar Borada. His gardening leave ends after the season ends, so he's straight to work end of May.
चलो ठीक है। और हम लोग का तो भाई अभी तो आई नो दैट हु आर डिसीजन मेकर्स, बट हम लोग तो यहाँ पर अलग स्ट्राइक में चले हुए कि यार वी नीड टू रिप्लेस द करेक्ट डायरेक्टर्स। रमित बोल रहे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेंडिंग $1 billion in a very short period, they thought it is an upfront investment, but football doesn't work like that. Again, I would like to I thoda sa don't think rephrase that, you know Ramit. what. I don't think so, Ramit. I think you know what. I Exactly. think they took the NFL. I think they took the NFL mentality. I don't think they True. thought I'm going to spend this much money and we'll be successful. It's like a I draft. think They thought it's a draft of yeah, players. exactly. Correct. I Yeah. agree with you. क्योंकि अंकित भाई प्रॉब्लम आपने एक Amit is और not about कमेंट छोड़ा spending. Problem is if I can just make How a you quick spend. point. The problem is आपने पूरा चेंज कर दिया। मतलब what happens like IPL चल ही रहा है भाई। अब नेक्स्ट सीजन मेगा ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन क्या होता है भाई? सब लोग को डाल दो, सब लोग को वापस ला दो जो भी नया लाना है। तो इट्स लाइक अ ड्राफ्ट, इट्स लाइक एन एनएफएल थिंग जो आपने किया है। मनी इज बेसिकली अ काउंटर प्रोडक्ट उसका। आई डोंट थिंक मनी शुड बी द मेन थिंग, क्योंकि उनको पता था यार, और ये फैक्ट है, सुभाष बैक मी देयर, लेकिन ये फैक्ट था दैट चेल्सी बोर्ड वर विलिंग टू काइंड ऑफ गेट टू लॉसेस, और वो चीज से हम खुश थे। जब नए नए आए थे ना, अच्छी चीजें बोले थे टॉड बॉली एंड ऑल इन सर्टेन इंटरव्यूज, वी वर हैप्पी इन द वेरी वेरी इनिशियल जो हनीमून पीरियड था ना, कि भाई वी आर ओके विद लॉसेस फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स एज लॉन्ग एज चेल्सी फुटबॉल क्लब सक्सेस इज बैक, बिकॉज़ चेल्सी इज अबाउट विनिंग। वो सेम चीज अपना पॉटर भी फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था, यहाँ पर सेम चीज पोचेटिनो भी बोला इन द फर्स्ट मंथ के इंटरव्यू में। फिर लेकिन बाद में जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दैट इज व्हाट इट इज, राइट? और वो आज की टीम में दिख रहा है। सुभाष, बट कमिंग बैक टू द मैच गाइस, 5 मिनट लेफ्ट फॉर किक ऑफ। अगेन जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए टीम को, कम ऑन लेट्स हिट दैट लाइक बटन। इट्स अ वॉच अलोंग एज वेल, तो रुकेगा सब लोग, लेकिन साथ साथ में आई नो दैट पैनल विल लीव इन जस्ट विद इन 5 मिनट्स, और आई बिलीव नेथन विल आल्सो डू वॉच अलोंग। नेथन, आई एम अज्यूमिंग, करेक्ट? तो गाइस please subscribe करिए to SJFC as well as Sportsnut Nathan. Both are tagged in the title. Absolutely भाई, अपने भाई है, back them as much as you can back us as well. Of course we can also get to the next level by hitting those likes algorithm. लेकिन सुभाष, let's get to this predictions, talk about the transfers and whatnot. यहाँ पर जो काउंटर प्रोडक्ट निकला है हमारा आज दिख रहा है स्क्रीन पर, बीट पेट्रोविच की स्काउटिंग, बीट कुकुरा का ओवर पेइंग, बीट बाडेशिले के स्काउटिंग, बीट दिसासी का स्काउटिंग, बीट दुस्तों का स्काउटिंग। तो अभी तक मैं स्काउटिंग यूज कर रहा हूँ, सो दैट मींस वी हैव स्काउटेड वेल इन द बैकलाइन इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। आज के लाइनअप्स के हिसाब से एंजो फर्नांडिस का ओवर पेइंग, काइसेडो का ओवर पेइंग एज मच एज दे आर पोटेंशियल ग्रेट प्लेयर्स, मुड्रिक का ओवर पेइंग सेम एज अदर टू, गैलेगर बीइंग अ कॉबम बॉय, पामर का मतलब आई नो क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर था कि भाई इतना बढ़िया निकल गया, और जैक्सन ऑफ कोर्स की स्काउटिंग है बट ही डज नॉट फिनिश। What is your prediction, bhai? Will it be scouting winning today, or it will be a Chelsea boy winning today, or do you think we fear the worst considering Manchester United का experience? Predictions? नहीं, I think it will be a draw. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि it will be 1-1 or a 0-0 drab, 1-1 or a 0-0 draw. I don't think I don't see either team winning today. But don't you think both teams should go for it rather than मतलब will they play a safe game, Nathan, rather than going for it? I think Manchester United, especially अगर हो तो I think despite being a Stamford Bridge, you'll see them going for it. नहीं? I think we have to go for it no matter what, because we still have something. लेकिन we are 12th. We have to go even more. No, I mean in terms of if we really want to push for that top 5 UCL possibility, I think we should go for it, but you never know. भाई इंटरेस्टिंग बट लेट्स सी। यहाँ पर मैसेज को बड़े क्विकली लेते हैं, बट इफ चेल्सी डजंट विन एनीथिंग दिस सीजन और डजंट फिनिश टॉप 7 देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट समर फॉर देम एंड इवन एफएफपी विल बी अ ह्यूज इशू फॉर देम। एग्जैक्टली मैसेज गॉट, इसलिए वी आर डेस्परेट, और मैं बोल रहा हूँ वी शुड गो फॉर इट नो मैटर व्हाट। टॉस जाएगा कि नहीं टाइम विल टेल। गौरव बोले 3-1 यूनाइटेड, नो मैटर हाउ बैड यूनाइटेड दे आर गोइंग टू विन बिकॉज़ द मेंटालिटी। एंड भाई सब लोग स्कोरर्स भी बोले यहाँ पर स्टार करके रख रहा हूँ कुछ कमेंट्स। दानिश बोल रहे 1-3 ऑफ कोर्स बीइंग अ मैनचेस्टर फैंस, वेयर आर माय चेल्सी फैंस? भाई आ जाइए। 4-2 यूनाइटेड बोथ आर rubbish at the back, 2-all draw बोल रहे कैफ। कहीं ना कहीं मैं अग्री करता हूँ मोर लाइक कैफ का, बट आई स्टिल फील दैट आई हैव अ फीलिंग कि यार भाई 6.5 years I hope the players know some history recently, or not just because of being 12th, that should be reason enough. But narrow draw is what I'm calling, but it will be either that narrow victory rather for Chelsea or 2-all draw. It will not be as cagey as what we are thinking, because again
it's a Thursday night game. भाई यहाँ पर big up to Nathan, यहाँ पर sports और Nathan OP हो जाए in the chat as well as SGFC हो जाए भाई, सब लोग चेक करिएगा for sure. बट साथ साथ में लाइक बटन भी दबा दीजिए. भाई सुभाष, अगेन लिंक है आपके पास, अगर आप चाह रहे हो तो आप हाफ टाइम में आ सकते हो. सेम गोज विद यू Nathan is doing a watch along himself, so people who want to join definitely can join on either of our channels. भाई again always a fan channel for see we are continuing भाई. सुभाष अब the chance no matter what भाई, सफर but we'll be there, और आप भी बैक करिएगा और मिलते भाई hopefully at half time or full time if you have the time. लेकिन Nathan, big up to you bro, big up to you. You know I mean all the best for the season but not today. Mason Mount, win-win. I'm telling you guys, I'm painting the picture. Win-win for everyone. I wouldn't boo him, but let's see how the scenes are. Let's see. Actually, I want goals in this match, but goals तो चाहिए मुझे, पर उनकी जो conversion है ना दोनों टीम की बहुत खराब है. We are creating those chances, but no one is converting on them. So that's why I'm going for a 0-0 or a 1-1 draw. Yeah, Chalo bhai, I'm going. I'll just head out 2-1. Hoyland, Mount, and Palmer to score 2-1. Oh, chalo bhai, I'm calling a 2-1 and I'm calling Sterling to win from the bench. Chalo guys, we are continuing the watch along. Subhash and Nathan are leaving us for now. And सब लोग जो भी जुड़े हैं, do not forget to hit that like as well as subscribe to both our parents channels. और of course अगर community post में भी like कर सके तो बढ़िया रहेगा. लेकिन यहाँ पर देखते हैं मेसी गोल बोल रहे 2-1 to United. चलो भाई यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ टाइम स्टैम्प. Let me know guys, what do you want me to keep the background? Do you want a blue watch along or do you want this? I think I'll just keep a simple background with no background. I think this makes sense. सब लोग, everyone agrees? Let me know if you don't. Always a fan channel for all to see. आप लोग का thought will be taken into consideration. ठीक है सब लोग? Again मैं एक सेकंड मैं देख रहा हूं, लेकिन Poch looks already surprised guys. Poch looks already surprised. Harsh in the house as well. क्या हाल है Harsh? What's up मेरे भाई? What's up? Let's actually wait for the kickoff. And भाई साहब हम देख रहे हैं हॉटस्टार में, for people who are wondering. 12:45 kickoff था. It's going to start any second guys. It is Chelsea. Come on 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 भाई. Kickoff has started guys. It is kickoff time. और let me know अगर आप लोग ने अभी तक prediction नहीं दिया है, what are you waiting for? लेकिन let's smash that like button and let's have everyone in. Mount didn't start. It was quite expected, Hardik, to me, because he's not a number 6 away from Old Trafford. It is at Stamford Bridge, और जहां पर he's not going to complete 90 minutes, or it might be a physical game and boos also भी होंगे. तो I think he'll come on for sure. Maybe at the hour mark. अब let's see what when he comes. पहले Manchester United has got the ball midfield wing में Garnacho, Van Bissaka cross नहीं यार, shot है just about. We have saved our ass. Somehow Enzo has cleared it, लेकिन बहुत ही गंदा भाई. Chelsea midfield losing it first up, और यहाँ पर एक switch off play आया. Kukurea all of a sudden is there. Kukurea has been last week में भाई one of the players of the match, और हो सकता है Kukurea might make a difference. Gallagher को मिला. Gallagher trying a back heel unsuccessfully though. नहीं यार, come on भाई. active start हुआ है both the teams. I must say it's quite an active start. Come on Chelsea. Come on Chelsea. Come on Chelsea. Come on Chelsea. Bhai, Palmer losing the ball in midfield. Again, physicality against Palmer is a thing. Left wing mein, bhai Garnacho. Garnacho is there, and where is our right back? Where is Gusto? Nahi. Taking on Disasi, and Disasi Petrovic ne just about kept it. Come on, boy. Petrovic OP in the chat ho jaye. Come on, man. Bhai, again, ABFC members group. If anyone is here, if you can share the link of the YouTube on that, so that people come in if उनको notification नहीं मिल रहे हैं. तो this is the biggest game in my opinion of the season, because कहीं ना कहीं अगर आज हारते तो एकदम पूरा खत्म है. सब लोग आ जाइए भाई, जो भी लोग देख रहे हैं. Remember, it's always a fan channel for all to see. Again, जो भी लोग like button दबाए नहीं है, let's smash that like button. Again, हमने share किया also on Twitter. People on Twitter who are watching, who are not subscribed, come on YouTube. We'll take your comments as much as possible. Puneet ya बोले 2-all, Palmer brace, FPL rocks. चलो भाई, I don't care who scores. I just need a victory after long 801 days since Chelsea have beaten a top 6, I believe, side at Stamford Bridge in the league. Wow, that's something.
इट विल बी इन इवन फाइट बोल रहे हैं अनमोल। कुकुरिया भाई यहाँ पर प्रेशर झेलते हुए अगेंस्ट एंटनी, दैट विल बी अ बैटल बिकॉज एंटनी आज लिए गए इन द स्टार्टिंग 11 सो ही हैज टू शो जज्बा ज्यादा, बट कुकुरिया ट्रस्ट मी लास्ट मैच में ही वाज गुड। काउंटर पे आई थिंक दोनों ही साइड सेट रहेंगे फॉर श्योर। थोड़ा सरप्राइज यू दैट रैशफोर्ड इज नॉट देयर दो, बट लेट्स सी। 2-2 ड्रॉ काफी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग दैट। अगेन आई एम कॉलिंग अ 2-1 विद आयरॉनिकली स्टर्लिंग फ्रॉम द बेंच मौके पर चौका मारते हुए, बट आई होप वी जस्ट विन। बारिश के लिए भाई आज थोड़ा सा इतना भी कैजुअल मत ले यार, बारिश के लिए बी लिटिल बिट फोकस्ड आज। यू आर अ गुड हेडर ऑफ द बॉल, यू शुड डू बेटर देयर। लेकिन मुड्रिक नाइसली डन बाय मुड्रिक, ब्रिलियंटली डन, लेकिन वाज ही फाउल्ड? यस, मुड्रिक गॉट फाउल्ड, लेकिन शुड ही हैव बीटन द मैन और रादर नॉट फॉलन। कैसेमिरो टेकिंग ऑन मुड्रिक, गाइस काउंट करिएगा, कैसेमिरो के फाउल्स काउंट करिएगा। फॉर मी क्लियरली द पेस ऑफ मुड्रिक, ठीक है, वहां पर क्योंकि डालो बॉम ऑन करते हैं, आई बिलीव सो वहां एक मिडफील्डर को रहना पड़ेगा, मे बी कैसेमिरो इज दैट गाय। अब देखते हैं हु गेट द बेटर। पामर अगेन, फिजिकलिटी होती तो पामर लूजेस द बॉल, बट वी हैव समहाउ वन द बॉल थैंक्स टू मालो गुस्तो ऑन द राइट हैंड विंग। मालो गुस्तो अगेन गेट्स द बॉल, मालो गुस्तो क्रॉस नहीं यार, मिड में गैलेगर को मिला, कम ऑन अपना कचरा, कम ऑन मैन गेट इट, अपना कचरा, यस मैन, इट इज गैलेगर, गैलेगर स्कोर्स, कॉनर गैलेगर इज Chelsea, get in man, get in, come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea, come on, Conor Gallagher gets the opener bhai, thoda lucky, but I will bite your hand off if you're lucky, because come on bhai, it is Conor Gallagher and it's Chelsea scoring in the bridge against Manchester United, who we have not beaten in the league from 6.5 fucking years. Come on man, let's go man, let's go. Brilliant movement by Malo Gusto OP हो जाए यार, Malo Gusto OP as much as Conor Gallagher scored, Malo Gusto some brilliant work on the right hand side. Palmer ने ball lose किया था, Malo Gusto won it back, got it back, cross yes थोड़ा lucky था, deflection, but we will take it, come on man, come on Chelsea, come on Chelsea भाई साहब, हो जा भाई गैलेगर के लिए, हो जा भाई गैलेगर के लिए भाई। he got a lot of hate man, this is a week where Gallagher got a lot of unfair hate guys, things were told to him and what not, if you know गैलेगर के लिए हो जा भाई, the guy deserves much love for this moment। मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। चलो भाई अब फोकस गाइस, फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली गोल। अब it's going to be an end-to-end game in my opinion. It has definitely helped the neutral watching it. Again, he's someone who gets that shot. Satnam, absolutely get in man. Ramit, why not? कचरा को मीम बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक और बॉल बनता है भाई, एक और बॉल बनता है। मैं मरते दम तक किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। अब the Charles the dog is loose। Yes, keep the intensity high, keep the focus, keep the structure and win those second balls, जैसे मालो गुस्तो ने किया था भाई। मालो गुस्तो ओपी नहीं दिखा मुझे चैट में भाई, मालो गुस्तो ओपी हो जाए इन द चैट प्लीज। मालो गुस्तो हैज बीन भाई प्राइसलेस मैन, एट टाइम्स वो मिस्टेक भी किया यस, बट कम ऑन, मालो गुस्तो हैज बीन रियली वेरी गुड इन माय ओपिनियन। और भाई साहब, भाई जब भी चेल्सी ओपन करी है स्कोरिंग, दे हैवंट बीन बीटन इज व्हाट द कमेंटेटर इज सेइंग इन दिस टाई। वाओ, लेकिन यस बायन हर्ष, लेट्स गो मैन, लेट्स गो एब्सोल्युटली। लेकिन अभी ओवर द टॉप बॉल आए, कुकुरिया भाई हेडर किया, लेकिन एंटनी के पास गया, नो ब्रूनो फर्नांडिस, कुकुरिया ओपी भाई, ब्रिलियंट चैलेंज इन द एंड रिकवरी के लिए भाई। कुकुरिया पहले मिनट में अच्छा नहीं किया, ओवर द टॉप बॉल इज चेल्सीज वीकनेस एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर डिफेंडर एट चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गोइंग टू एम अस वहां पर क्लियरली। मुड्रिक, I love the work rate of Modric. Modric putting pressure. Anthony forced to go back to the goalkeeper. Should Onana have done better, by the way? Should Onana have done better? Let me know. Now Chelsea should stay compact at the back, especially Caicedo. Dalo did backheel assist too. Gallagher, if you know, they were sorry. Like it is what it is. Kachra clutch. Let's go Chelsea for the win. Ayush बोल रहे हैं यहाँ पर डैम कुकुरिया, लेकिन मिस्टेक्स भी है उसमें, देखते हैं whether we can keep the intensity up, क्योंकि अभी all of a sudden Manchester United have all the ball in the world और we have to definitely go there. By the way, Enzo को pass was top notch from Cesc White भाई, Enzo OP भी absolutely, लेकिन लेफ्ट विंग पर क्रॉस आएगा, नो डोंट अलाउ दैट क्रॉस यार, दिसासी जस्ट अबाउट क्लियर्स इट फॉर अ थ्रो इन। व्हाई आर वी अलाउइंग क्रॉसेस? एज मच एज मैंने मालो गुस्तो ओपी बोला,
Come on, man. We should not allow such crosses, man. We should not allow such crosses. Again, Kukurea has been fighting for the badge. वो एक बंदा है जो fight कर रहा है badge के लिए, at least in the last couple of games. So credit where it is due for sure. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. भाई गोल आएगा, बच गया ओ भाई साहब, भाई बढ़िया शॉट यहाँ पर एंटनी से, लेकिन ज्यादा मतलब एफर्ट नहीं था उसमें इन टर्म्स ऑफ पेस, एंड मुड्रिक शुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग दैट, बट पेट्रोविच वाज देयर. इट वाज शॉट ऑन गोल, बाय द वे, शॉट ऑन गोल. इफ गुस्तो कंटिन्यूज like this, then I would Gusto has had defensive mistakes in him, which probably as an all-rounder James is still far better, मेरे भाई जब्बार भाई. Let's be real about that. लेकिन हाँ, Mudryk on the ball, Mudryk shot, Mudryk deflection, भाई corner. ये almost Arsenal वाला moment में सोचा is it going to be a golazo from Mudryk, but no. Onana was nervous at the same time. बिल्कुल, I think Onana का भी question mark करोगे, लेकिन deflection goal जब भी आती ना, when early deflection and then leading up to a shot to the goal, so it kind of confuses आपका backline and goalkeeper. So I get that, but let's see. मतलब I still believe that उसके स्टैंडर्ड से ऐसे ही should have done better. But yes guys, let's hit that absolutely, जैसे हर्षा बोल रहे हैं. Meanwhile, Mudryk winning a corner, और मेरे ख्याल से ले रहा भी है corner. Correct me if I'm wrong. Yeah, he's actually taking the corner as well because Chilwell is not there, remember. So Mudryk taking the corner. Bhai, remember set pieces is something which United have a upper hand over us, I believe. यहाँ पर वापस से नियर पोस्ट में हक दिया हमने, लेकिन काउंटर नहीं करना है. नाइस, नहीं Palmer, you should have won that ball, लेकिन कोई नहीं. We have I think considered a throw in, which is totally fine. Garnacho versus Palmer एक चल रहा था battle. Gaurav in the house, yeah, absolutely. I understand if you're a Manchester United fan right now, Gaurav, but अभी तो पिक्चर बहुत बाकी यार, 80 मिनट बाकी है and more. तो we'll see what happens. But अभी के लिए भाई, it's Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Owen the Blues. Owen the Blues. Go steaming in. Go steaming in. Owen the Blues. Go steaming in. I wanna be in that number. Owen the Blues. Go steaming in. I wish I was over the bridge, yaar. By the way, talking about the bridge, Tahir bhai ko big up, yaar. Tahir bhai अपने Almighty fam के part है. He's actually at the bridge, guys. I totally forgot Tahir bhai. Big up to you. अपने Almighty goat है, by the way. He's a goat member of the channel for a while, and of course he's supporting us no matter what. He is actually at the bridge. Early on उन्होंने picture भी share किया था in the group. So bhai, let's have it for one for Tahir bhai, for an Almighty fam's sake. While Anthony takes on Kukurea, नहीं यार कट इन कर लिया है. No, we shouldn't allow these things to happen. No, far post में again switch of play आया है, लेकिन we are just about there defensively. Enzo Fernandez heavy touch, but just about keeps it, और यहाँ पर एक throw in जीत लिया हमने. भाई ताहिर भाई ओपन हो जाए in the chat. Almighty fam, ताहिर भाई early pictures भेजने की कोशिश की थी, तो good to see him there. Goosebumps that Almighty Blues is being represented at the bridge for such a big match yet again. कचरा को क्रिटिसिज्म मिल रहा था, लेकिन कचरा ने ही गोल किया. बिल्कुल, मतलब and it's not just criticism. मतलब you are putting things on Gallagher, which is totally not, bhai. I don't want to use the word, but he didn't do anything wrong this last game week. So I think kahin na kahin, he deserves it. Mudryk, nice touch, lekin Caicedo, bhai, giving the ball away. No, man, Caicedo, come on, you should do better, man, there. Enzo trying to win the ball back. Kobe Mainu, boy, बढ़िया खेला है Kobe Mainu. Kukurea OP, yaar, come on, man. Kukurea it is, man. Kukurea, man, awesome Kukurea, nice stuff. लेकिन यहाँ पर Cole Palmer, nice, brilliant touch by him. Gallagher, no, unable to keep the ball. Gallagher ने pull back किया थोड़ा Bruno को. Bruno गुस्सा होता है, Bruno मार देगा क्या? Sorry भाई, sorry यार, ज़्यादा ओवर नहीं कर रहे क्या? Jackson, बिल्कुल, to be honest, he has not even had a touch if I am not wrong. Where is it? Nicholas Jackson, भाई, cross in the house, क्या हाल है? Again, guys, I like to take every chat as possible. Again, it's a watch along. तो बने रहना सब लोग. Again, जो भी लोग आ रहे हैं, smash that like button. Come on, let's go, man. Let's smash that like button and let's have everyone in. Come on, man. Come on, Chelsea. And it's a fan channel for all to see, as much as I'm a Chelsea fan. Come on. Palmer and Gallagher are so good under Poch. Hardik बोल रहे हैं. Gallagher, definitely there are some points जहाँ पर अभी भी lot of improvement needed, and Palmer physicality में improve हो सकता है. But of course, these are two players along with Gusto जो basically आप नहीं बोल सकते. You have to question. You can question much in this season. ये तीन बंदे season में ज़्यादा consistent रहे compared to the others. लेकिन यहाँ brilliant play by United. Short deflection है. Petrovic luckily is there. भाई Anthony has been lively.
एंटनी हैज बीन लाइवली, माइंड यू दैट, वो तो अलग बात है कुकुरिया का अच्छा मैच चल रहा है, नहीं तो एंटनी ने नॉर्मल गेम जहां पर अगर थोड़ा सोसो डिफेंडिंग करते, यू नेवर नो, एंटनी वो वाइड भी जा रहा है, सेंट्रली भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चेल्सी का बैड फ्रॉम डिफेंस. Oh, Jackson, man, you're not in the match. Get yourself involved, man. Somehow. Jackson को पता नहीं कैसे करे involve यार. He's trying to win balls, but भाग रहा है like a headless chicken. I don't know what's happening. Yeah, Disasi also yes. लेकिन यार Anthony वापस on the left foot. Kukurea, do not allow Anthony on the left foot. That's one mistake I'm making. Caicedo not having a great game. Kukurea again. Kukurea OP भाई. Brilliant. Bruno उठ जा भाई उठ जा. कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर. पामर ऑन द राइट हैंड साइड, काउंटर आ सकता था, लेकिन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंडर्स आर बैक जस्ट अबाउट. पामर वापस से पीछे खेलेगा टू गुस्तो विल प्ले टू काइसेडो who's had a so start, if I'm honest, not too great if I'm frank, but Enzo Fernandez को मिलता है बॉल, बैक टू गुस्तो जो 1-2 खेल रहा है. पामर ड्रॉपिंग डीप और काइसेडो को दिया है जो वापस पामर को देता है. पामर कैन ही प्ले गुस्तो? यस ही कैन प्ले गुस्तो ऑन द राइट हैंड साइड. गुस्तो क्या करेगा, वापस से वही है, ट्रायंगल्स कर रहे, लेकिन वी आर नॉट हैविंग एन आउटलेट. वो आउटलेट कैसे आता है, फार पोस्ट में स्विच ऑफ प्ले से. इज देयर अ रन दैट इज बीइंग मेड? चलो फाइनली मुड्रिक को मिला है बॉल दो. वेयर इज निकोलस जैक्सन इन द बॉक्स? खड़ा तो है, अब देखते हैं क्रॉस आता है कि नहीं. Van Bissaka doing well by again, guys. Are you guys surprised with Van Bissaka playing on the right hand side? Matlab, I was to be honest, but defensively better, so I get it against Mudryk. क्या हाल है? What's up? 5 with no cup should 10 go. हमने बहुत डिस्कस किया क्रॉस इसके बारे में throughout the pre-match. Anthony Workrate दे रहा है alongside Van Bissaka. Yes, that is why they are there probably. Good point. Jackson, Pogba, भाई to be honest, blue उसने किया है भाई, blue shade दिया है. I don't know if you know, Bakayoko did a blue shade in 2018 and that season we won against Manchester United. Just saying. Palmer cross of a corner, लेकिन वापस से मिला है यहाँ पर किसको, गैलेगर को? और वाज इट पामर अगेन? पामर itself. गुस्तो को मिला है रिबाउंड. गुस्तो लेफ्ट फुट लेगा क्या? नहीं यार. कुकुरिया राइट फुट. अरे यार क्या यार, गुस्तो ने लेफ्ट फुट एंड कुकुरिया ऑन द राइट फुट. उल्टा होना चाहिए था यार. कम ऑन मैन. छक्का मार दिया कुकुरिया ने, लेकिन भाई कुकुरिया, आई नो जस्ट 15 मिनट होने वाले. मार्क कुकुरिया ओपी हो जा भाई इन द चैट. मार्क कुकुरिया हैज लिटरली प्लेड एंड रैन हिज हार्ट आउट. आई लव इट ब्रो, आई लव इट. ऑल्दो छक्का मार दिया इस सेकंड में. टॉक अबाउट वर्क रेट, जैसे एंटनी और वहां पर दिसासी का हो रहा है, यहाँ पर कुकुरिया का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और मुड्रिक का भी. टू बी ऑनेस्ट आई हैव लाइक देम टू परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ. अरे भाई ऑसम मैन फ्रॉम हर्षा. गौरव, yes that's true, लेकिन sometimes being calm is better. By Jackson, can he get the ball? Yes, he gets the ball. Nice ball from Palmer. Jackson, yaar khatiya man, doesn't even win a corner. What idiot. I know it's easier said than done. Maguire, is it a corner? I hope it's a corner. लेकिन भाई ब्रिलियंट बॉल यहाँ पर पामर द्वारा, और नाइस रन फ्रॉम जैक्सन द राइट चैनल, और उसने बॉल विन किया है अगेंस्ट मगवायर. If it was in the box, it could have been a penalty, but just saying. लेकिन साला कॉर्नर भी नहीं जीता है, क्या ही तो बोले. एंकुंग आउट फॉर द सीजन ऑलमोस्ट, लेकिन इट्स नॉट कंफर्म्ड. वो तो टैबलॉइड्स हैव इट देयर से. सब कुछ करके हक देता है. बिल्कुल, वेरी लाइटली पुट. दिस सम्स अप निकोलस जैक्सन. एग्जैक्टली, दिस सम्स अप निकोलस जैक्सन. भाई ही डज द टफ थिंग्स एंड देन हक लेता है. एब्सोल्युटली. इसलिए वो लिंकअप में, गेम प्ले में अच्छा है, बट when it comes to a proper center forward, you need to do the main thing. अपना bread and butter वाला चीज तो पहले करिए, फिर बाद में सोचेगा. लेकिन आज playing out from the back, meanwhile, guys who are wondering, come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea, Chelsea. अरे यार बारिशिले, really man, idiot. Sorry यार बारिशिले भाई, टॉड बॉली घंटा मैन. क्या यार, हमने सॉन्ग को सब बनाया था तेरे लिए. मुड्रिक लूजेस वैन बिसाका. यहाँ पर गोल आने वाला लग रहा है मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड का. बारिशिले के कारण शुरू हुआ ये मूव. फार पोस्ट में नो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर इज देयर. और भाई साहब गर्नाचो वॉली यार ऑन द फार पोस्ट, बट डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टेक्निक जो नहीं मार पाता ऑन गोल. गोज वेल वाइड. बेनवा बारिशिले, टॉड बॉली वेंट टू फ्रांस, बॉट अस व्हाट इन अ लैम्बोर्गिनी. बेनवा बारिशिले, दिस वन सीरियसली, What is that भाई? गिफ्ट क्यों दे रहा है? Thiago Silva is on the bench. Mauricio Pochettino. Sharaya, thanks for the update, but we don't need these kind of updates. Big up to you, respect to you, of course, all the love to you all. Lekin we are here, I believe, for my reaction, so I am giving there. But
You can definitely ask me questions, definitely react left, right, center. Lekin Kukurea on the run, penalty! Come on, yes man! It is Mark Kukurea winning the penalty, much deserved penalty. Anthony ka overwork rate has backfired, and Mudryk OP on the left wing as well. It is Mudryk and Mark Kukurea as a team who have both been brilliant, yaar, winning a much needed penalty in the early minutes of the second half. Still, bhai, Chelsea. Come on, Chelsea. I think it's as much as people will say it's not touched, I think it's probably knee against knee. कहीं ना कहीं it is soft, absolutely soft है. लेकिन अगर आप ध्यान गौर से देखिएगा for people, that definitely there is a contact, and any kind of contact when you are in fast pace, bhai, whether you're Mark Kukurea or you're bhai Ankit, you're falling down, and that's how it is. लेकिन हाँ, it is harsh. I must say it is harsh. Technically touch हुआ है. So अगर ये penalty नहीं दिया जाता, probably that would have been a fairer decision. From a neutral perspective, I totally get that as well. क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ, एक replay जो दिखा है, लेकिन क्योंकि वो penalty दिया है, I don't think you can overturn it. VAR. That's the problem with VAR. It's a VAR rules. But soft है. It's soft, but it is a penalty. By no spoilers in the chat. सब लोग Cold Palmer taking that, of course. Come on, bhai. Cold Palmer. Come on, guys. Come on, Cold Palmer it is. Please, Onana. Will it be redemption or Cold Palmer? Come on! Cole Palmer wins yet another goal by apna Cole Palmer against Manchester United, who we haven't beaten in the Stamford Bridge in the league from bloody 6.5 years. Chelsea! Come on, Palmer! Come on, Chelsea! Come on, Palmer! Come on, Chelsea, man! Kukurea OP, Mudryk OP, ho jaye! Get in, man! Get in! Sorry, guys. I know it's a soft penalty, but it is a penalty. Let's be real. There have been penalties given in the past, and अगर चेल्सी को मिलता है भाई, सब लोग बोलते हैं भाई सबसे सॉफ्ट है, टच हुआ था और बंदा गिरेगा. वो अलग बात है कि भाई सॉफ्ट मैं भी मानता हूं प्लेयर, बट इट इज अ कोल्ड पेनल्टी. और ओनाना बीटन yet again a Cole Palmer penalty. It is. Come on, Chelsea. Animesh, obviously being a Manchester United fan, not happy. I get it totally with Gaurav as well. But cold as you know what. Game not over बोल रहे गौरव, because 2-0 we have seen this. ये picture हमने देखा है, हमने बात ही की थी pre-match में. Messi's got and others did say it, that basically this is the match that you remember, 2-0 where we were up and then it became a 3-all. हमने देखा है, while it was many years ago, but हुआ है absolutely. Yes bhai, carefree wherever we may be, we are the famous CFC. लेकिन भाई अभी भी उड़ मत. It's just 2-0 in 20 minutes and you never might change considering हमारा जो defensive record है recently. But we have to do this. Again, it's about doing that in every match. लेकिन अभी के लिए let's focus on this match. Absolutely. Wow, this is a good question, Hardik. Well, to be honest, I would go with Palmer right now, considering that he's so young and so confident. Yaar, Caicedo OPR winning the ball. Kobe Mainoo almost winning it back, but no. Mudryk gets the ball from Caicedo somehow. Back heel unsuccessful by Mudryk. Gallagher did not anticipate that, or we have lost possession यहाँ पर. लेकिन भाई brilliant by Axel Disasi. Awesomely done. Won the ball back यहाँ पर. और Palmer on the run now. Palmer देखते if he can beat his man. देखते क्या करता है. Palmer is a shot. Was it selfish? Should he have played in Gusto running from the right hand side? Corner जीता है Cole Palmer ने. This match is right up there, guys. There are more goals coming. Trust me. Like I said, मैं expect कर रहा हूँ high number of goals आज. But let's see if Manchester United come back. अभी के लिए Chelsea have won a corner, guys. For all we know, they just strange face after the goal. It doesn't matter, man. If someone says bilkul, it's okay, man. Jace Matthews, totally fine, man. Again, it's a soft one. वो मैं agree करता हूँ as a football fan. लेकिन Disasi, well done in us getting that corner. कहीं ना कहीं उसने शुरुआत की थी, for sure. लेकिन Cole Palmer taking the penalty corner this time, sorry. Or Cole Palmer, Maguire there in the center, easily heading it out. Kukurea bhai bounce mat karna. Kukurea OP और Kukurea bhai, brilliantly done, man. Brilliantly done by Kukurea. Mark Kukurea has played out of his skin, guys. Again, just 21-22 minutes हुए भाई. Mark Kukurea इतना अच्छा खेल रहा है. I know Manchester United से लिंक था, but Mark Kukurea भाई क्या खेला है भाई, क्या खेला है. Again, Mudryk, quite impressive, man. Cole Palmer, can't say more about him, man. He's been there always, man. You know it. Absolutely, he's been there. But
Chelsea. Gallagher, of course, scoring the goal that helped, and Malo Gusto and as well. कहीं ना कहीं ये 5 have been standouts. Although Enzo और Nicholas Jackson ज़्यादा मैं देखा नहीं, if I'm being very honest. Harsh रहेगा, I know, but it is what it is. Meanwhile, यहाँ पर एक गोल किक, एंटनी खुश नहीं है. एंटनी खुश नहीं. Again, guys, for people joining late, tuning in late, जिनका अलार्म लेट से बजा है, this is what the starting lineups were. Gallagher scoring in the 4th minute, deflected goal, but brilliant ball by Enzo and then ball by Gusto. Not an assist per se क्योंकि उसका deflection हुआ था, but obviously bench पर भी इतने लोग हैं if need be, and we got a penalty thanks to Kukurea और Mudryk who basically have started brilliantly. I don't agree with this rating of Mudryk by the way. Kukurea का मैं totally agree करता हूँ. Meanwhile, Manchester United में Anthony बहुत work rate किया है, but कहीं ना कहीं Anthony gave away with the penalty. So you have to be careful if you're Manchester United. नहीं, जबार भाई तो ready with this comment. लेकिन यहाँ पर Palmer getting the ball, switch off play Chelsea द्वारा, defense to attack. Palmer done brilliantly bro. भाई डालो को डाल दिया भाई अपने स्पेस पर. डेफिनेटली यहाँ पर एक फ्री किक है. डालो भाई. Palmer OP हो जा यार in the chat. Cole Palmer man, come on. Cole Palmer OP हो जा chat. सब लोग भाई. This guy is sensational at times I feel man. मतलब Mata vibes. Just saying again Manchester United. I remember those that season जहाँ पर उसने बहुत अच्छा भी किया था. Cole Palmer के लिए हो जाए एक बार. Come on. Starting out the head, oh yes. Chelsea boys are on the pitch. They from left to right. चलो guys, so it's a free kick now. Yellow होना था, yes, arguably you can say that, but again it's a Chelsea versus Manchester United, so better if the referee keeps the cards in his pockets. बिल्कुल भाई, पामर है पुदिन, बट वही couple of aspects अभी भी improve कर रहे ना, he can get there. Gallagher far post, नहीं यार, that was a genuine chance. Gallagher ने दिखा भाई, far post में Disasi free है, he put the ball to Disasi. Disasi, you should be hitting the target, head the ball down. That should be a goal, not even a shot on target. भाई याद रखिएगा, 25th minute हमने ये गवाया है. It could be 3-0. That was a moment where it should be a goal. मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं भाई, चांसेस मिसिंग शुरू हो गए. Again, Thiago Silva is there on the bench. Thiago Silva is there on the bench, one of our best headers. क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं. लेकिन ये भी है, मतलब जो हम हाईलाइन रख पा रहे हैं, जो हम प्रेस कर पा रहे हैं फ्रॉम द बैक, maybe we are able to do because of Thiago Silva not being there in a strange sense. क्योंकि दिसासी ने, याद रखिए, जो काउंटर शुरू हुआ था couple of minutes back, वो दिसासी से हुआ था. The only guy with heading abilities on the bench, बिल्कुल अभिषेक. At the end of the day वो ठान लिया. प्रॉब्लम यही हो जाती है, वो अभी का प्रॉब्लम नहीं, हमेशा से. I remember the Andre Schürrle season, he could have easily been played in the second half of the season, लेकिन नहीं, we have decided to transfer him, so decided, that's it. लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर we have lost the ball thanks to Van Bissaka winning it against Caicedo, लेकिन हमने वापस जीत लिया है थैंक्स टू अपना कचरा गैलेगर. और राइट में मिला है बॉल Caicedo द्वारा टू पामर, और एंजो रनिंग ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन पामर कहाँ दे रहा है यार, बीच में कोई है ही नहीं, किसको दे रहा था बॉल. Caicedo ऑन द अदर एंड डेफिनेटली रिकवरी करता है मिडफील्ड में, विंस द बॉल बैक. निकोलस जैक्सन ऑन द लेफ्ट विंग, भाई तू अपने जगह पर जा यार. गैलेगर या मुड्रिक होना चाहिए लेफ्ट विंग में यार. व्हाट आर यू डूइंग ऑन द लेफ्ट विंग? बट कोई नहीं, ही स्टेज ऑन द लेफ्ट विंग सरप्राइजिंगली. I don't know why though. Mudryk centrally, well won by Anthony. Anthony ball जीत लिया है, और यहाँ Kukurea got beaten guys. Kukurea got beaten for once. Thanks Sharaya for doing that, but isn't it a given? The only guy with heading ability on the bench, Mudryk. By Gallagher this time winning the ball only for conceding a throw in though. But come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, guys. Come on. We can get there, man. Guys, again, we are aiming 175 likes for the stream, guys. जो भी लोग like नहीं किए, let's smash that like button. That's all we're asking for, along with subscribing if you're new to the channel. People who are on Twitter, come on Almighty Blues, man. Come on Almighty Blues. Messi is good. Anthony is a useless player, very pure decision making. Again, work rate उसका अच्छा रहा है, लेकिन decision making I totally agree with you 100%. घंटा यान, come on, घंटा यान, come on man, come on. हाँ,
people quite obvious, it's not a new thing. Aman और शनाया, जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो लोग 20 सेकंड आगे ही रहेंगे. जो लोग हॉटस्टार में देख रहे हैं, which is about 90% of what they are watching, based on we do literally every week. So let me not please explain it every week. ठीक है? So I do हॉटस्टार for a certain reason रे भाइयों और आपके बहनों. दुनिया पॉज हो जाए, स्कोर लाइन सेम रहे. निखिल बोल रहे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ खत्म हो जाए बस टाइम राइट नाउ. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इवन द गोल डिफरेंस माइट काउंट. हाँ मैं आई नो, मैं बोल रहा हूँ. हाँ नहीं तो वो YouTube का है अमन. YouTube लैग्स 10 सेकंड जनरली आप तक जब पहुंचती है. बट कोई नहीं. यहाँ पर जैक्सन विद द ब्लू हेयर विद भाई एक सेकंड. Oh, Mudryk side netting, guys. Mudryk side netting, भाई. Jackson with a nice run, trying to do a Ronaldo. लेकिन सच में अच्छा किया लास्ट में. He put in Mudryk, जो ओवरलैप किया. बाय द वे Mudryk का पेस देखिए भाई. Mudryk on the jet man, just look at it. लेकिन बहुत नैरो एंगल था, तो ये वाला मैं नहीं बोलूंगा चांस था. कहीं ना कहीं Mudryk ना, that's what he needs to learn. He needs to basically take a quick step over और डिफेंडर को गिरा देना है. ठीक है, so that he could यहाँ पर जब लेफ्ट फुट से ट्राई करना है तब तो नहीं करते लोग. Mudryk now filing Van Bissaka. I hope येलो कार्ड नहीं मिले. रेफरी येलो कार्ड मत देना. रेफरी येलो कार्ड मत देना. टेना खुश नहीं है, लेकिन यूनाइटेड को भी मिलना चाहिए था फिर येलो कार्ड पहले. थैंक गुडनेस. रेफरी ओपी भाई फॉर अ चेंज. रेफरी ओपी अभी तक. ही इज नॉट गिवन द येलो कार्ड एंड ऑफ कोर्स गिविंग अस द पेनल्टी हैज हेल्प्ड. Jackson should have released the ball a bit early. No, I don't think so, because no player was there. Mudryk wasn't there yet. I think he released at the right time, and Mudryk should have rather planted his left foot or then kind of let the defender go with momentum. वो होना चाहिए था, and he could have won a penalty or switched on the right foot. छक्का मार दिया यूनाइटेड ने इस बार. Was it? It's a corner, guys. डालो shot भाई. We have to be careful. Do not allow such crosses. Do not allow such shots to come in. बिल्कुल. Exactly my point. Exactly. I think Jackson did well. भाई Jackson is an easy target. I know he's not had a great start. इतने टच नहीं हुए उसके. लेकिन I think Jackson इस मोमेंट में अच्छा था in my opinion. ज्यादा हो गया दिन. Why don't ये क्या? हम हाँ करते हैं भाई. शॉर्ट्स लाइव. ओके दैट नया वाला फीचर. हर एक करते भाई. मतलब अगेन इंसान हो भाई. लास्ट 4 दिन में 2-2 घंटे से हो ईच. जस्ट सेइंग डूइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट बोथ द चैनल्स. लेकिन डेफिनेटली भाई हार्दिक दैट इज ऑन. थोड़ा सा बिजी सीजन है बिकॉज ऑफ द आईपीएल विद ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. यू नो द ड्रिल मेरे भाई. लेकिन यहाँ पर भी वी विल बी बैक विद एवरी कंटेंट जो हम एनीवे कर रहे हैं. जैक्सन पहले बॉल छोड़ता तो नहीं. डिसएग्री विद दिस विनीत. टू बी ऑनेस्ट ही इज एन इजी टारगेट फॉर पीपल. तेनाग टैक्टिक्स हैव बीन द वर्स्ट. मतलब I agree with the tactic that eventually that Van Bissaka is playing on the right hand side, Dalo is playing on the left hand side because of Mudryk's pace. Lekin Mudryk has been really good. You have to give him that. But again, Palmer ke against physicality chahiye. So is Dalo the right man? Maybe not. So I think kahin na kahin I hear you, Ayush. Enzo doing well in this moment. By the way, Enzo is doing very well. Is he putting Jackson in? Nahi yaar. Varane easily got it and offset anyway. Jackson यार. Enzo भाई did the difficult bit लेकिन easy bit नहीं किया. अच्छा, I didn't know that, Abhishek. I honestly don't have right now time to breathe यार. It's been so hectic personally. लेकिन we'll go there. बारिशले revenge. क्या बोल रहे गौरव? या मैंने देखा था फीचर लेकिन डिटेल में नहीं देखा. विल कम देयर. लेट्स फोकस ऑन द मैच गाइस. कम ऑन. ऑल दीस थिंग्स वी कैन ऑलवेज डिस्कस. भाई इतना सारा फीडबैक पूछता हूं मैं दिन रात आईबीएफसी मेंबर्स को, तब तो आता नहीं कुछ. क्या बात है भाई, सब लोग बिजी रहते हो. गुस्तो फाउलिंग गर्नाचो इज इट भाई? रेफरी, वाज इट अ येलो कार्ड रियली? वाज इट अ येलो कार्ड भाई? हाँ, आई थिंक प्रोबेबली इट वाज काइंड ऑफ ब्लेटेंट. लेकिन गुस्तो येलो कार्ड गाइस. गुस्तो येलो कार्ड भाई. कहीं ना कहीं दैट्स नॉट गुड वाइब्स. गुस्तो आई नो 100% फिट भी नहीं है. कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी. थोड़ा सा स्लाइट हैमस्ट्रिंग इश्यू था. बट गाइस व्हाट आर वी सेइंग अबाउट दैट? ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द बॉल. फ्री किक है भाई. या येलो रिप्ले में इवन आई एग्री. फर्स्ट में मैंने देखा नहीं था अलग एंगल, तो रिप्ले में इवन आई एग्री दैट कहीं ना कहीं इट वाज अ ब्लेटेंट फाउल. सो आई गेट इट टोटली. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एज मच एज उसने नया कॉन्ट्रैक्ट किया. आई डोंट नो अबाउट 35 मिनट्स प्लेइंग विद गिलक्रिस्ट. आई एम नॉट श्योर. लेकिन भाई बिल्कुल दिस गाय हैज बीन द मैन एज मच एज. अभी फ्री किक है फार पोस्ट में भाई. मगवायर इज देयर गाइस. मगवायर इज देयर.
लेकिन यहाँ पर नियर पोस्ट में काइसेडो ने किया, शॉट आया भाई, पेट्रोविच luckily gets the shot from Kobe Mainoo easily and catches it. Come on Chelsea, come on Chelsea, shot on target था लेफ्ट चैनल में, निकोलस जैक्सन भाई कुकरिया को डालना था ना बॉल, वापस से मिडफील्ड में क्यों डाला यार जैक्सन, कम ऑन यार, कोई नहीं। यहाँ पर अगेन बिल्डिंग फ्रॉम द बैक इज चेल्सी गाइज। Are we surprised the fact that midfield में we have been dominating यार, मतलब one can argue we have dominated the midfield, नहीं? Are we surprised with Bruno Fernandes not really being in the game? मतलब arguably compared to हमारे midfielders, like I've seen more of Caicedo, Kukurea again man, awesome stuff man, Kukurea man on the ball, यहाँ पर चेल्सी लेफ्ट चैनल पर डाली है अपने, come on, no way. यहाँ पर we have lost the ball. Mudryk should have done better. No. Why did you lose the ball? Should we have cleared it? No mistake. नहीं यार, Caicedo mistake. No भाई, बैल मुझे मार. This sums up bloody Chelsea Football Club. Garnacho goal, Caicedo out of nowhere. 2 Chelsea players है, 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स है. Caicedo साले तो कर क्या रहा यार, बकरियों को क्यों बन गया यार इस मोमेंट में, much as you have done well in the last 2 months. Oh no man, this is a gift and bhai, let me tell you, we are not bloody winning this game now. Finish good by the Garnacho, brilliant finish. Come on man. And Bardeshile of course रेड कार्ड तो लेता नहीं भाई, सबसे पहले तो, and that is what I'm saying it, that is inexperience. आपको मिडफील्ड में भाई 15 नहीं 5वें कक्षा में मुझे सिखाया था यार, when we learn football, right, proper football, when we learn, first thing, आप जब बेसिकली पास करते हो मिडफील्ड में, never make a sideways pass to midfield. Never make a sideways pass midfield में when your defense is not there. And that is exactly what Caicedo did. But even before that, the move started when Mudryk lost the ball in the wing, if I'm honest. I cannot believe it, bhai. In a game जहां पर we have had the better of Manchester United, the way we have gifted a goal, after bloody 6.5 years तक हमने जीता नहीं है at the bridge against Manchester United in the league game. बाड़ेशिले को ब्लेम नहीं करेंगे भाई, बाड़ेशिले को ब्लेम नहीं करेंगे इसमें, सॉरी. एंजो गets a yellow card meanwhile. क्यों मिला उसको yellow card? I missed it totally. Can't believe it man. Maybe pace enough नहीं थे, you can argue, but भाई Caicedo की fault थी भाई, definitely. I don't think यहाँ पर बाड़ेशिले will be the target. No problem man, Punita, no one is unlucky for anyone मेरे भाई, no one is unlucky for anyone. Again, Thiago Silva also wouldn't have the pace to cover that. सच में बोलो तो, although उसका recovery है, I know. Every single time when we were leading the season, someone does this kind of silly mistake. Let it be Sanchez's Arsenal, this Sassi, and now this. Caicedo, bro. अब ये problem हो जाएगी ना. This is a high-profile game, and everyone will think Caicedo, भाई, memes will be out, the reels will be out. भाई, 125 million pound. Caicedo, this is what he does. But unfortunately, the reality ये है कि भाई उसने big game में technically big game जो हुआ करता था में किया है, but he's done better. यहाँ पर shot आया on the volley from Bruno. All of a sudden, Bruno is in the game, guys. Bardeshile ka bad pass again. By the way, we are still winning this game. Yes, we are, but we know the confidence which happens just before halftime, bhai. These type of mistakes should not affect our momentum. Hopefully, it does not. Why everyone's blaming him? Who's the him, Abhishek? I would blame Caicedo 100%. He should not pass that ball sideways. वो fifth stand में मैंने सीखा था, 5वीं कक्षा में सीखा था वापस. You do not pass sideways pass नहीं करते आप midfield में. Simple as that. When you don't have a midfielder behind you, defender behind you, right behind you. Don't know why, but I always feel that Caicedo has a mistake or two. Yeah, but he's done really well in the last 3 months, if I'm honest. But again, यहाँ पर Enzo shot. Oh, Onana saves it just about. Rebound cleared by Wan-Bissaka. Bhai sahab,
राइट साइड से क्रॉस आई, एंजो का बढ़िया शॉट था लेकिन डायरेक्टली एट ओनाना ऑलमोस्ट, लेकिन ओनाना डिड वेल एज वेल, बट रिबाउंड में वी कुडंट गेट इट. इट्स अ कॉर्नर गाइस, इट्स अ कॉर्नर. Am I missing something? Abhishek बोल रहे, why is everyone blaming Badiashile more than Caicedo? I don't get it. Am I missing something? Correct me if I'm wrong, guys. Feel free to correct me at Ankit करके. लेकिन यहाँ पर कॉर्नर है अपना इन द बॉक्स, लेकिन पिंग पोंग होकर आराम से जाता है ओनाना के पास. ओनाना ट्राइंग टू क्लियर इट फर्स्ट टाइम, पामर डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं रोक पाया, ब्रूनो को मिलता है, गिव्स इट टू एंटनी ऑन द राइट विंग. ओ नो नहीं यार भाई, निकोलस जैक्सन लूजिंग इट. कुकरिया वाइज इन द ब्लडी राइट बैक पोजीशन राइट नाउ. आई डोंट नो. क्लोज करिए भाई. डोंट अलाउ क्रॉस. गोल आ गया. Rubbish! We are bloody Chelsea Football Club. हगने का क्लब. It was our bloody corner. We don't bloody learn from a mistake from years together. Our corner. Far post में घंटों हरामियों, चुल्लू में पानी लो, डूब जाओ. Pochettino also at fault. What has he thought in defense, man? कोई फाउल करता है, निकोलस जैक्सन था यहाँ पर. I don't know what rubbish are we doing. Caicedo था, एंजो था, कुकुरिया था, साला हरामियों कोई फाउल कर लेते. बोल के थक गया. Do not allow that fucking cross. Anthony with an assist, no, a pre-assist. Garnacho now with a goal and an assist, guys, I believe. No, and sorry, it is Dalo with the assist, man, and Bruno with the goal, man. Far post, man, across the goal, Mara says. Rubbish, man. Absolutely rubbish, man. Out of nothing again. Clutch, Manchester United. That is it. Chelsea, सारे नपुंसको Chelsea players, idiots. नपुंसको हरामियों. निकोलस जैक्सन, काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, कुकुरेया, भाई चारों. You could have very fouled. If you are a Gallagher or Mudryk, do not allow that cross to come in. Where was the defense, man? Again, Mudryk on the ball. Shot, color, लेकिन easy save by Onana. भाई कितने चांसेस मिले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को? And remember, Disasi missed a header. We should have been ahead, guys. एक तो काइसेडो ने गिफ्ट दिया. Abhishek, come on, man. Come on. When the club is at the lowest point, I understand it's easy for me to say, but they need your fans even more. As much as हम गाली भी दो, definitely देना चाहिए. Seriously, man, अब जो लोग मैच देखेंगे नहीं उनको तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ यार. Seriously, man. Absolutely भाई, कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारो. आदत पड़ गई, अब तो आदत पड़ गई है. सिंपल, फाउल करो यार. अगर आपको पता होगा तो टॉप बॉल आप स्ट्रगल करते हो एनीवे. Yeah, you can say that absolutely. You can say that for sure. Messi is good. Good point. Seriously, man, I don't know. मतलब शब्द नहीं मिल रहे. This is a literally bloody लीग 2 टीम है ना. हालैंड लीग 2 का प्लेयर नहीं है जो रॉय के नहीं बोला था. हम लोग हैं भाई. चेल्सी ब्लडी फुटबॉल क्लब. जोक बना दिया इन प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ ने. हमें जोक बना दिया इन डायरेक्टर्स ने. नो लीडरशिप. यहां वापस है फार पोस्ट में. साले घंटों थप्पड़ मारो, अपने आप को थप्पड़ मारो. आई नो आई शुड बी सेइंग ऑल दिस. वेक अप गाइस. आप सुन रहा हो, सॉक्स सुन रहा हो, कुछ सुन रहा हो यार. इन लोग को बोलो, इन लोग को रोको गेम को. कोई लीडर है, रोको गेम को. रुक, थम जा, रुक और बोल. Do not allow a cross for the switch off play. पूरा हफ्ता हमने बात किया है. The switch off play is what will open up Chelsea. Over the top balls, we suck. The second goal came from that. So either you bloody foul the player who's trying to cross the ball, or you bloody be there for the header. If you're a Badiashile or a Disasi. It's seriously shit, man. I can't believe we are drawing this game and it's back to square one. In fact, momentum is all with United now. Why Gallagher shot wide?
Again, guys, sorry if I'm not taking comments. I'm taking as much as possible. Otherwise, you can always super chat or become a member. आप लोगों को बुरा लगता है तो लगता है, but लोग नहीं लेते भाई. हम लोग लेते हैं इसलिए भाई. Basically, people don't give us, and I think it. जितना भी हम देते हैं चैनल को, to be honest, we are getting a lot of love, and I love you all, but we are not getting enough. We're not getting enough. Let's get there. And I know a lot of people cannot afford, which is totally fine, and I take as much as possible. And big up to the members and mods especially. But let's be real. Let's be real. We can definitely get there. Why are we playing with 10 players? जबार भाई बोल रहे. Yeah, गौरव 100% predictable तो है ही यार. उत्कर्ष बड़ा कमेंट, डूइंग अ वॉच अलोंग, आई मे नॉट बी एबल टू टेक इट मच, लेकिन इतना अच्छा गेम खेलो फिर इतना गंदा डिफेंसिव गेम प्ले. बिल्कुल उत्कर्ष, बिल्कुल गिफ्ट दिया है भाई. मैनचेस्टर चेल्सी भाई भाई बोलो, गिफ्ट दो सालो हरामियों. इसीलिए आई डोंट वांट टू चेंज ब्लडी वन प्लेयर. लेट देम ब्लडी सफर यार. टट्टी खाओ यार, बैठ कर टट्टी खाओ यार खुद का, हरामियों. Seriously, man, I'm talking crap, but the fact is, these guys should suffer, man. Next time they will remember. Saleh, as fans, we are suffering. We are not beaten a big team at the bridge in the league from the 801 days. 801 days. I repeat. And Manchester United from 6.5 years. And we are 12th. But, bhai, we were champions of Europe just 2 years ago. बेसिक एग्जैक्टली 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है. व्हेन यू आर इन मिडफील्ड एंड यू हैव जस्ट वन डिफेंडर बिहाइंड यू, यू डू नॉट मेक दैट साइडवेज पास. यू जस्ट डू नॉट. यू पुट इट ऑन द साइड्स. अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई, जस्ट पुट इट आउट फॉर अ थ्रो इन. दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू एंड किक इट आउट बिग टाइम. आप साइडवेज पास नहीं करते हो. प्ले आउट फ्रॉम द बैक, घंटा बैक. आपका बैक ही नहीं बचा तो क्या घंटा बचाओगे आपका? काइसेडो की शुरुआत थी मेरे ख्याल से. काइसेडो इज द फॉल्ट एज मच एज प्लेयर बिलीविंग नहीं होना चाहिए. इट्स अ टीम एफर्ट एज वेल. दैट वाज द इशू. एंड सेकंड गोल में इट वाज आवर कॉर्नर फॉर फक सेक. नो वन फाउल्ड देम एंड पीपल अलाउड क्रॉस येट अगेन. यहां पर लेफ्ट साइड से हुआ है बिटवीन मुड्रिक एंड जैक्सन, एक 1-2, बट वी हैव वन अ कॉर्नर थैंक्स टू वैन बिसाका. वरार इंजरी इश्यू है लग रहा है. कोल पामर जस्ट अ पेनल्टी. मर्चेंट अनिमेंद्र बोलने के लिए बोल सकते हो भाई प्लीज. आप मैच देखते हो, पता नहीं क्या देखते हो. बिग अप टू यू. आई डोंट से दैट. डिड आई से व्हाट एंटनी इज अबाउट? डिड आई से अबाउट? सो कम ऑन, लेट्स नॉट इवन गो देयर. सच में एट दिस पॉइंट इन टाइम कोल पामर जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है पिच पर. दैट्स अ रियलिटी. बट हैविंग सेड दैट, वी आर सफरिंग बिकॉज वी आर एट फॉल्ट. मैं एडमिट रखने का जज्बा रखता हूँ. क्या आप रखते हो? कुकरिया यहाँ पर ट्राइंग टू विन द बॉल, जस्ट अबाउट नॉट लूजिंग इट एटलीस्ट. वेल डन. गुस्तो राइट विंग पर है, क्या करेगा? आई थिंक एंजो को देगा. पहले देता, इतना सोच क्या दे रहा है यार. तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज देयर ना. लेकिन वेल प्रेस्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेरी वेल प्रेस्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंजो को नहीं दिया स्पेस एंड टाइम एट ऑल. इंजर्ड है तो वी डोंट नो. Again, we have a Thiago Silva for the timing, for all we know. I'm just saying, Board and Poch are not by pussies, man. Seriously, man. Sorry, pardon my language. It is what it is. वही फार पोस्ट में गुस्तो को मिला है ओवर द टॉप बॉल. ऑफ साइड है यार. कोई नहीं. बस ड्रामा दे दो चेल्सी को. चेल्सी प्लेयर्स ड्रामा दे दो, टॉकिंग पॉइंट दे दो. बस 3 पॉइंट तो लेना नहीं है. हगना है बस बैठकर कि भाई मजा नहीं आ रहा, अपने को मजा नहीं आ रहा है, इसलिए हक देना है बस. क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं. 5 minutes of stoppage time added है by the way. It's into second minute already for people who are wondering. Seriously pissing off, man. This is what United needs to do. Press more, भाई. लेकिन honestly United could have gone 3-0 down. You know, could have, would have. चेल्सी केस में होते रहता है. दिसासी ने मिस किया था. गैलेगर का बॉल ऑन द फार पोस्ट एंड ही वाज फ्री ऑन द हेडर. टोटली मिस दैट. और सच में बोले तो ये क्या लड़ाई हो रही है यार ब्राजीलियन और अर्जेंटीनियन के बीच में, कासिमिरो और एंजो के बीच में. तो इट्स फर्स्ट कमिंग. क्या गौरव, हमने बात ही किया था 3-3 जो हुआ था बैक इन द डे 2-0 लीड के बाद में. वही हो रहा है वापस से. वी डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ओवर द इयर्स और व्हाट? दे डोंट नो द हिस्ट्री, मैन. दिस इडियट बेबीज. उनको हिस्ट्री नहीं पता यार अपनी. क्या बोले यार, हम और आपको ज्यादा पता है यार हिस्ट्री.
कोई नहीं, आप पॉज कर रहा हूं मैं टाइम गाइस। या आयुष तो बोल रहे ड्रॉ ही होगा, देखते हैं भाई। एंजो रेड ले लेगा, गौरव बोल रहे हैं। येलो पर है गाइस, यस एंजो इज ऑन येलो। बट अगेन मतलब ऐसे नहीं बोल सकते दैट हमने पूरा डोमिनेट किया है, बट लेट्स बी रियल भाई, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ हाफ एन आवर वी वर द बेटर टीम एंड डिड वी टेक आवर ऑल चांसेस? नो, एंड इवन आवर एक्सजी इज हाई फॉर रीजन, लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता यूनाइटेड को। यूनाइटेड आर क्लच टीम एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स यू नीड टू बी इन बिग गेम्स स्पेशली। देखते हैं यार, व्हाटएवर हैपेंस देखा जाएगा भाई, विल बी देयर नो मैटर व्हाट। कितना रबिश, आई कांट बिलीव इट। एनीवे, क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। एक सेकेंड में देख रहा हूं यहां पर भाई, यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड गेट द बॉल अगेन इन मिडफील्ड। नो नो नो, दिसासी डील कर उसे बॉल को। यस ही इज डेल्ट इट। गैलेगर बीइंग प्रेस्ड। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी प्रेसिंग कर रही है। दे हैव गॉट देयर टेल्स अप गाइस, winning the ball off the press yet again. But have he won the ball? Was it a foul for Enzo? भाई लेकिन anyway, Palmer has got the ball. Goal होना चाहिए. Come on, please score. Gallagher on the near post. Christian man, we hit the bloody post यार. लक भी खराब है यार. लक भी मरा हुआ है यार. मरा हुआ लक क्या अपना? मरा हुआ लक क्या यार? Brilliant move by Chelsea. यहाँ पर Enzo, Palmer and Gallagher द्वारा नियर पोस्ट में Gallagher ने हिट किया पोस्ट को यार. No way. फ्रस्ट्रेटिंग भाई. कैप क्यों पहना ताकि मैं बाल को नोचू नहीं? फ्रस्ट्रेटिंग मैन. आई नो देयर आर पीपल हु डोंट केयर. आई केयर मैन. आई केयर अबाउट माय चेल्सी 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 चेल्सी. Come on Chelsea, come on Chelsea. I will care if we are in relegation. I will care if we are 19th, if we are bloody 12th, because I am a true Chelsea fan. I will care. Come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea. We cannot lose this game to United. Enough हो गया भाई. We cannot lose this game. We have to win this game. With all due respect to United. Seriously man. Seriously man. We should. लेकिन वही है, डिफेंसिवली वी आर सो पुअर. हमें दिख रहा है कि भाई और भी गोल्स आ रहे हैं इस गेम में. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट्स 3-all. जल्दी रिलीज करना था यार, मे बी दैट इज ऑल्सो थिंग. लेकिन कहीं ना कहीं चलो भाई, हाफ टाइम हो रहा है. व्हाट अ गेम इफ यूर न्यूट्रल भाई. व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल इफ यूर न्यूट्रल. लेकिन इफ यूर चेल्सी भाई, चुल्लू में पानी के तरह. चलो भाई सब डूब के आते वापस से अपने नेक्स्ट जन्म के लिए. चुल्लू भर पानी की तरह भाई. चेल्सी भाई, चेल्सी आर यू सप्लाइंग चुल्लू भर पानी टू अस, और हमें खुद लाना पड़ेगा वो भी. साले बेइज्जत कर दिए भाई. वी हैव बीन एम्बैरेस्ड मैन एट टाइम्स. एंड व्हाट, इन अ गेम जहां पर हम 2-0 लीड कर देते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ 6th प्लेस टीम अगेंस्ट अस 12th प्लेस टीम इन स्टैमफोर्ड ब्रिज, आफ्टर नॉट हैविंग बीटन यूनाइटेड इन द लीग एट होम सिंस 6.5 years. उसके बाद में वी हैड द ऑडेसिटी टू बॉटल इट. Chelsea have choked. Chelsea have bottled. Chelsea have played passing the parcel to United. And that is where United is back, and credit to them. Clutch United, yes. But that is what Chelsea need to do. Chelsea दिख रहा था वो clutch थी in the first half an hour. Then what happened? हुआ क्या भाई? क्या हुआ? पेटीएम मिल गया तुझे. कैसेडो हुआ क्या तुझे? कैसेडो, I have praised you as much and I have told that a lot of neutrals आज भी मौके पर चौका मारेंगे कि भाई 115 मिलियन 115 मिलियन करेंगे, ठीक है. लेकिन the reality is he's had 3 very good months, 3 awesome months. In fact, he has been arguably the best player along with Malo Gusto last 3 महीनों के लिए, along with Palmer of course. लेकिन यहां पर आज जो किया है ना भाई तूने, भाई सीरियसली ये नहीं एक्सपेक्टेड है. You are not a midfielder who has been born in the Premier League today. Kaisedo, you've been there, done that. I know it happens. The best of the best make mistakes. I remember Kante का mistake in Arsenal all those years ago. Slip होना एक चीज होता है. आप पास कियो भाई, आप sideways पास कियो. When we were 2-0 up, it was our corner and well done by Onana and by Bruno Fernandes to kind of start that move. But for you to get the ball and then pass it in central midfield, जब यहाँ पर खाली एक बंदा था बाडेश के लिए,
is literally a crime. It's like, बैल मुझे मार भाई, मुझे, you know what, some people होते ना, they like to suffer, they like the pain. Oh, give me pain. यहां पर काइसेडो बोल रहा है give me pain, और दे रहा है साला चेल्सी को. एंड बाडियाशिले यार, देखो यार, इन दैट गोल आई विल नॉट से दैट बाडियाशिले वाज एट फॉल्ट. यू कैन आर्ग्यू कहीं ना कहीं ही शुड हैव बीन पेसियर, ठीक है, फॉर श्योर. लेकिन फॉर द सेकंड गोल हम जो कंसीड कर रहे हैं, यहां पर टॉकिंग पॉइंट होना था चेल्सी के गोल जो आए, हम आएंगे उस पर, पॉजिटिव्स पर आएंगे फॉर श्योर. देयर आर फ्यू पॉजिटिव्स जो जिस पर हमें बिल्ड करना है वापस से. और सेकंड हाफ एफसी हम पता ही कैसे करते हैं चेल्सी इन सेकंड हाफ, एंड आई एम कमिंग टू द चैट. लेकिन गाइस, आई हैव टू स्पीक अबाउट दैट बिकॉज अगेन आई कांट बिलीव मैंने मिक्स कर दिया फर्स्ट और सेकंड गोल, लेकिन बेसिकली इट वाज अ कॉर्नर चेल्सी का, और दे हैव गॉट द बॉल, और यहां पर उन्होंने काउंटर किया, और काउंटर करते वक्त निकोलस जैक्सन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू फाउल उनके प्लेयर को. फिर बाद में कुकुरे हैड एन ऑप्शन, काइसेडो हैड एन ऑप्शन. नहीं, आप बैक ट्रैक करो, साला क्रॉस अलाउ करो, और भाई फार पोस्ट में घंटा कोई है नहीं. व्हाट वाज दैट ब्रो? एंड ब्रूनो फर्नांडिस इजी हेडर, क्रेडिट टू हिम फॉर हिम टू बी देयर. लेकिन उससे भी पहले भाई आप देख सकते हो, for a reason XG is closer to 2 of Chelsea or closer to 1 of Manchester United. 2-1 फिर भी समझ में आता था, लेकिन at 2-0 it was all Chelsea guys, it was all Chelsea in my opinion, as much as half chances shot on target आ रहे थे Manchester United के. Let's be real about that. यहां पर at 2-0 हमें एक गोल करना था और आना चाहिए था from दिसासी ने वहां पर मूत दिया लिटरली, क्योंकि गैलेगर ने अच्छा बॉल डाला था फार पोस्ट एंड ही डिड. और टॉक अबाउट गैलेगर इन द लास्ट मिनट्स, हमारा लक भाई, हिटिंग द पोस्ट. बट आप लोग बोलिए, मतलब डू वी हैव अ मैन ऑफ द मैच? आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि यार एंटनी अच्छा वर्क रेट लाया है, बट एंटनी आल्सो गिव अवे द पेनल्टी, रिमेंबर, व्हिच वाज सॉफ्ट. But I think overall it's been okay. Bruno Fernandes, I don't rate him so high if I'm honest. Although last 15-20 minutes उनका work rate has been crazy. Garnacho and Cucurella, in my opinion, have been the players to watch if I'm honest about it. Again, Mudryk का भी शुरुआत अच्छा था, लेकिन you can almost argue that for the second goal, one can argue that Mudryk should have done better along with अपना क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना Nicholas Jackson man. But it is what it is भाई. It is what it is. Again, क्या बोल रहे हैं जनता? Let me know in the chat. This individual mistakes of Chelsea will continue. If you have kids playing for you, at least you need 2 to 3 experienced players on your team. Messi is good. Thanks for reminding me. Thiago Silva again for the nth time. He is there भाई. Thiago Silva available है. हमने ऑप्ट किया यहाँ पर डिस्पाइट लास्ट वीक नॉट हैविंग अ ग्रेट मैच, बाडेशिले को कंटिन्यू करते हुए, एज मच एज वो अच्छा प्लेयर है. आई रिपीट, Thiago Silva is on the bench. Mudryk should convert chances. Gallagher should convert chances. It would have been 4-2. Caicedo mistake totally shifted momentum towards the side of Man United. I think Mudryk did well आज. Sorry to say, but please कैप मत पहनो. जैसे कैप लाया हो रे बाप रे, ऐसा हुआ क्या? My bad then man, my bad. मतलब I don't know. Then I will not accept it. But आप बोल रहे हो तो भाई मेरे चेल्सी के लिए I will take it for sure. It cannot be the case here. Let's be real. I don't think anyone in the world, I know I'm saying overboard, लेकिन anyone in the world would want Chelsea to win more than me. बाडेशिले बैटरी सेवर मोड में है, चल रहा है. ऐसे डिफेंसिवली स्विच हो जाना नॉट एक्सेप्टेबल. काइसेडो का गलती थी फॉर द फर्स्ट वन फॉर श्योर. चेल्सी को स्कोर करना एक चीज है, कटबैक करो, वहां से गोल आएगा. वी आर स्टिल वल्नरेबल. यस, अगेन बीट द गैलेगर मोमेंट, बीट द मुड्रिक मोमेंट, यू कैन आर्ग्यू एब्सोल्युटली दैट. बाडेशिले को सीरिया भेजो, वहां स्लो पेस है. टू बी ऑनेस्ट, बाडेशिले इज कमिंग बैक आफ्टर इंजरीज एज वेल. तो हो सकता है इन द बैक ऑफ हिज माइंड ही इज अ लिटिल बिट हेजिटेंट कि भाई वापस से इंजरी नहीं हो जाए. तो उससे बात करनी पड़ेगी भाई, क्या है, क्यों चल रहा है भाई. वो अच्छा कर रहा था लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट सीजन में, रिमेंबर वो इस सीजन में साइन नहीं किया गया था, लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट सीजन में साइन किया गया था. तो ही डिड वेल, और वी सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम, एंड वी हैव सीन थोड़ा बहुत, नॉट मच, लेकिन थोड़ा बहुत दिसासी के साथ जो उसका पार्टनरशिप होता है, व्हाई आर दे गेटिंग दैट पार्टनरशिप टुगेदर इन टर्म्स ऑफ हेडर्स स्पेशली. और पेस तो भाई खैर, मतलब वी कैन डिस्कस दैट बिकॉज ऑफ इंजरीज. चेल्सी ने 2 मिस करे, वन बाय दिसासी एंड सेकंड बाय गैलेगर वाला अगेन ही हिट द पोस्ट. वन कैन आल्सो आर्ग्यू मुड्रिक, बट मुड्रिक वाला बहुत नैरो था. We need another midfielder, बोल रहे गौरव. To be honest, 30 मिनट्स के लिए we were actually dominating midfield despite कोबी माइनू, कैसेमीरो और ब्रूनो वहां पर थे. तो यहाँ पर क्लियरली कॉन्फिडेंस की बात है गौरव, और कुछ नहीं है. ज्यादा गोल्स मार के कौन बंदा ब्लंडर करता है? बिल्कुल भाई, सब लोग करते हैं चेल्सी में. तो सी द रीडिंग ऑफ द गेम ऑन आवर डिफेंडर्स, एब्सोल्यूट शिट. Poch coaching is good. The attacks they make are awesome, but the defense sucks.
Again, school football is how you term it. School football, literally. Caicedo has made a schoolboy error. Bardeshile, Nicholas Jackson, beat Gallagher, आपके basically beat anyone. आप देखो काफी सारे moment जहां पर you gave a chance away, आपने किया schoolboy blunders, beat missing chances ourselves as well. 100%, 100%, no two ways about it. लेकिन याद रखिए, yellow cards are there भाई. Malo Gusto as an yellow card. तो all of a sudden is that reason, क्योंकि Malo Gusto को yellow card मिला था, तो we didn't say as much of Malo Gusto on the right hand side. As much as first goal में Malo Gusto was involved for sure. और Enzo Fernandez को भी मिला yellow card. They started playing with the when the momentum, they dominated the midfield. Before that it was just Chelsea midfielders pressing. By the way, press of United बहुत है. Priyansh in the house, this team has tested all emotions today. क्या बोल सकते हैं, हार्ट अटैक एफसी टू द पावर ऑफ 3 मैन. मुड्रिक ने बढ़िया किया, पर गैलेगर यार अगेन गैलेगर, बाय द वे जस्ट टू गिव यू रिमाइंडर, आई नो 45 मिनट्स सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं यहाँ पर गैलेगर के नहीं बोल रहा, शुड हैव डेफिनेटली स्कोर्ड देयर, बट आई थिंक इट वाज अ नैरो एंगल एज वेल, तो कहीं ना कहीं लक भी हो जाता है. लेकिन पहला गोल मारा था गैलेगर ने, जस्ट टू रिमाइंड पीपल मैन. नॉट गोइंग टू बी अ प्लेयर एफसी फैन हियर, मोर इंपॉर्टेंटली हमारा क्लब है एब्सोल्युटली. कैसेमिरो इज फिनिश्ड मिडफील्ड में बॉल लूज करते करते भाई साहब, ये देवेश हैज गॉट अ पॉइंट. तो इफ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर मे बी थिंकिंग ऑफ अ चेंज. मतलब किसको लाओगे? अगेन रिमेंबर, हमारे पास भी गुस्तो इज एन येलो कार्ड, प्लस गुस्तो इज नॉट फिट इनफ टू कंप्लीट 90 मिनट्स. तो वी माइट सी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन थियागो सिल्वा, चालोबा और गिलक्रिस्ट कम ऑन लेट मिनट्स में, वहां पर गर्नाचो के अगेंस्ट विल बी डिफिकल्ट. Then you have Carney Chukwuemeka coming back from injury. He might be the difference maker in the midfield. और Manchester United का you have maybe मतलब यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे थे? मतलब to be honest midfield की बात कर रहे थे, तो Mason Mount is a no-brainer. It's Chelsea man, of course. I'm hoping he doesn't get the winner and all, man. Come on, I'll go mad यार. आप लोग बोलिए again, who all would you change and at what point? Bardeshile needs to go on loan, please. Loan सेल तो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए he should be subbed is what I would say. कोई नहीं, no problem Puden, no problem. Proper Chels, we try to be again Pranav, and again our team is showing that this manager needs to be sacked right now. Same mistake again and again. It's been 7th month now. We can't control after leading. Pranav, क्या चेंज करते हैं आप? मतलब आफ्टर लीडिंग व्हाट चेंज वुड यू हैव मेड? मतलब डू यू थिंक द मोमेंट ऑफ काइसेडो पासिंग द बॉल इज टू बी ब्लेम्ड द मैनेजर? मैं भी मैनेजर से कन्विंस नहीं हूं, लेकिन टू से दैट मैनेजर के वजह से हम वी लेट इट गो, हाँ ये जरूर बोल सकते हैं मैनेजर का इनिशियल सिलेक्शन बाय हैविंग बार्डिशेली इन द टीम, दैट आई एग्री, दैट पार्ट आई एग्री. Shit football by both teams, looked like school team playing. Again, I don't think it's shit football totally. Chelsea played the better football, Neeraj, if I'm being honest. But last के 20 minutes में I can see that. First 30 minutes it was more of Chelsea playing. Last के 20 minutes it was Manchester United playing. अब तो 2-0 3-0 में भी ट्रस्ट नहीं आएगा, जैसा डिफेंसिव प्ले है. बिल्कुल वो स्कूल बॉय एरर्स 100%. प्लेयर्स को भी ब्लेम करना चाहिए, पॉच को कितना ब्लेम करो, बिल्कुल इस केस में तो करना ही पड़ेगा भाई. कम ऑन, प्रीटी श्योर यहाँ पर एटलीस्ट 3-4 प्लेयर्स को ब्लॉक करना था, क्रॉस कर सकते थे फाउल मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर को फॉर द सेकंड गोल एंड फॉर द फर्स्ट गोल. लेट्स बी रियल, काइसेडो का इंडिविजुअल एरर था व्हिच स्टार्टेड इट एज मच एज उनका काउंटर अच्छा था. आई थिंक दे नीड अ लीडर इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, डिफेंस, मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड. टुडे द मिडफील्ड एंड डिफेंस फॉर पुअर, क्रॉसेज डिफेंड नहीं होते हैं एक तो वो पता नहीं क्यों नहीं करते. एफर्ट होना चाहिए ना. आप बेसिकली यहाँ पर लड्डू पेड़ा खा कर आएंगे तो कैसे चलेगा? इफ यू नो आपको बेसिकली एफर्ट डालना पड़ता है यार, उसके लिए आपको करनी पड़ती है नॉट जस्ट ट्रेनिंग बट इन द मैच यू हैव टू टर्न अप इन एवरी सेकंड, एंड दैट्स व्हाट मींस टू बी अ चेल्सी प्लेयर, क्योंकि एवरी प्रेशर सिचुएशन कम्स एवरी सेकंड, आपका लिटरली एवरी सेकंड. तो यू हैव टू बी देयर गाइस. If you're a Chelsea player, and which these guys need to understand, these idiots need to understand, some of them. Again, आप शो पोर्टिंग कितना भी कर लो, अच्छा कितना भी खेलो, आपको at the end of the day you have to run and you have to run and you have to block and you have to block and block as a team. जो कुकुरिया ने by the way दिखाया था in the first half an hour bro. कुकुरिया भाई, थोड़ा पॉजिटिव भी बात करेंगे, बहुत मुश्किल है अभी पॉजिटिव रहना if you're a Chelsea fan, but let's give it to Mark Kukurea guys. Again guys, I have to wear the cap, sorry. Pudin मेरे भाई, Chelsea is not losing because of me, so let's not have the narrative मेरे भाई. If आपको करना है बोलना तो बोल सकते लोग, if you think that way, but कोई दुनिया में चाहता है चेल्सी को मेरे से बुरा ज्यादा कोई शायद ही होगा. Yes, I'm saying it that way. जिसको बुरा लगता है. That's how it is. Big up to the fam, absolutely यहाँ पर. Chelsea was jogging after losing the ball. To be honest, I don't know why. हम या तो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं या तो बेसिकली एकदम ब्लैंक हो जाते हैं. मतलब ये ब्रेन फाट बोलते हैं उसको, ब्रेन फाट.
the king. Poch has to be blamed for Bardishvili bad performance. Why is he not giving him break? Bilkul. This point I totally agree. I want Chelsea to win this match for Spurs, but Chelsea is being Spursy. Yeah, we have a certain ex-Spurs coach there. Why not? Mount for Bruno by 70th minute is an interesting call. Again, for Bruno is an interesting one. McTominay Amrabat है. Mount ला सकते हैं, but किसको लाइए? I don't think. Mino looks little tired. Mason Mount winner incoming. अरे भाई साहब. Don't want McTominay to come as a Chelsea fan. To be honest, yeah, he scored 2 against us. Remember the previous match. एक number 6 sign करना पड़ेगा. कैसेमिरो को सऊदी भेजो. It's like riding a Maruti Suzuki when you have your Rolls Royce in garbage. In garage. Oh yeah, भाई, of course, Thiago Silva की बात हो रही है यहाँ पर. Rolls Royce. Poch not dropping Bardishvili after bad performances. That's on him, and we need Silva. It's again ये भी बोल सकते हैं ना. First 25-30 minutes में हम लोग का एक था press जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का इन द लास्ट 20 मिनट्स. तो कहीं ना कहीं दैट प्रेस कुड इट हैव बीन डन फ्रॉम द डिफेंस अगर थियागो सिल्वा खेलता. लेकिन नाउ दैट वी गॉट 2-0 लीड और आप एक गोल भी कंसीड कर दिए हो बाय द मिस्टेक, कहीं ना कहीं आई नो मे बी इट वाज अ पैनिक मोमेंट. ऑफ कोर्स हम बहुत क्रॉसेस लेट इन कर रहे थे तब भी. क्यों वी डोंट स्टॉप द गेम? व्हाई इज देयर नॉट अ लॉट ऑफ लीडर ऑन द पिच हु जस्ट स्टॉप्स द गेम ऑफ Poch कमिंग फ्रॉम द साइडलाइंस एंड टेलिंग भाई रुक जा, थम जा, डोंट अलाउ क्रॉसेस. Do not allow crosses. Simple as that. So Jabbar bhai, I would say a bit of both. Definitely a bit of both. Individual errors started it, but we should be reacting better. Even if Poch wins as the match or FA Cup by mistake, he has to go for Prabhat. Silvan and Bardishvili off is obvious. Pranav bol rahe. Jackson should really come into play. He has yes, that's a good point. Jackson पहले 20-30 मिनट के लिए नहीं था और जब होता है बढ़िया खेलता है, लेकिन फिनिश लास्ट थर्ड में डिसीजन मेकिंग आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. भाई अगेन जो भी लोग यहां पर देख रहे हैं, शनाया का कमेंट देखिए. अगेन इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. यू गाइस नो द ड्रिल. व्हाट इज द ड्रिल एवरीवन? You love the thumbnail, you love our passion, you are knowing we are here no matter what. So bhai, all I'm asking for is not just a like button, but sab log, each and everyone watching, and I mean each and everyone watching, do not just like the like button on the community post as well as the stream, but also the bell icon दबाइए on both our channels. First line of description आपको मिलेगा so that we get to know what you like and what not. आप लोग back करिए. Again, very close to 12.5 k. Let's get there. I might be wrong, but I also question the commitment of some players. Jackson having his hair colored. नहीं ठीक है, मतलब that's okay. I will not read too much into it. It's more of a culture thing, Snehil. But problem है कि ये लीड करने के बाद ये टीम मोमेंटम क्यों लूज करती है भाई? That is why boys against men ना. That is what clutch Manchester United are men. We are not. Come on Chelsea, but come on Chelsea. Chelsea. Come on bhai, we have to show second half for once. Wake up. इस बार साफ सुंगाया है भाई, in a good way, not in a bad way. Poch, remember, we have not beaten Manchester United in the league at Stamford Bridge from 2017-18 season, and we have not beaten a top 6 side in the league at home in a big match like this from 801 days, guys. 801. We have to do something, bhai. And plus, we are 12th. Bhai, sab log ahead of us dropped points. Idiot, you even know what's happening around Chelsea players. Chalo, bhai, Prabhat to like the brand of football, but again, it's school boys. Evans coming in, a leader at the back coming in for Manchester United. Kahin na kahin surety layega Evans. Who is he coming for though? That's interesting, guys. So Varane is off, correct? Interesting, guys. Varane is off. Varane is off. Guys, chat में बोलिए what is your score prediction, guys? Sorry, I have a bad cold, but score prediction everyone in the chat. 47-10 में हमने टाइम से वापस से करना है. मैंने बोला था from the bench we'll have a sterling score, लेकिन I feel goal is coming both sides, and as much as I would not like to see a replay of 3 all those years ago वाला जहां पर हम 2-0 लीड लिए थे, मुझे वो लग रहा है बुरा वाला. I am saying 3-all. I hope I'm wrong and I hope I win. Guys, I have a bad cough, so bear with me, but we are there. गरम पानी.
down the throat. Chelsea, 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 Chelsea. Okay, guys, back me, guys. I may not be able to shout as much. I hope I don't shout rather. Unvelu. So I hope you guys back me. Come on, you guys can share the stream, be it on WhatsApp, be it on Twitter. Share the link of YouTube. मैंने tweet किया था with the link. So guys, if you can retweet that, brilliant. Again, जो भी लोग जैसे YouTube, Twitter पर head over to YouTube. Let's follow our team together. Or even if you're in opposition, come on. 47-10 में करना है. I'll be ready. We losing the ball in midfield. Shit, man. नहीं. Shot आएगा. Luckily, Badiashile just about clears it. Was it a handball? Bruno Fernandes कितना चिल्लाता भाई, कितना चिल्लाता यार. Handball बोल रहा है. Ball hit hand anyway यार. Come on. नहीं, गोल आएगा. Shit, गोल आएगा लगता है. Shit, Disasi did a foul. No man. Rubbish. Full वापस giving away the ball. Chelsea have not started. Second half FC is back. Horrible FC. गोल आ गया almost. Harry Maguire shot. How bad was Chelsea, man? How bad was Chelsea, man? इतना बुरे यार. कोई नहीं, मैंने शुरू किया. गुस्तो विद अ डाइविंग एफर्ट, बट ऑलमोस्ट रेड कार्ड ले लेता भाई. यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट. नहीं यार, इट हिट द शोल्डर ऑफ बाडिशविले व्हेन ही वाज लाइक दिस एनीवे. कम ऑन मैन, नॉट अ हैंडबॉल. गुस्तो को लगी क्या? Yeah, Maguire on the wings, guys. Exactly. Again, guys. अच्छा, कॉर्नर नहीं था क्या? मैं सोचा कॉर्नर था. दिसासी क्यों खेलता है यार ये बॉल? दिसासी जब बॉल वापस देना ही है, क्यों यार? दिसासी गेटिंग द बॉल बैक लकीली. जस्ट प्ले द शॉर्ट पास, इट्स ओके. भाई गुस्तो गिरा दिया कैसेमिरो को. लेकिन कोई नहीं. यहाँ पर नाइस पास बाय गुस्तो, नाइस टच बैक. पामर मुड्रिक को दे. पामर मुड्रिक को देना था यार. कम ऑन मैन. Selfish play by Cole Palmer, who's been the player of the season for Chelsea, man. Selfish play. Selfish. Bruno Fernandes अब गोल मार देगा लगता है. गर्नाचो के पास बॉल है लेफ्ट विंग पर. शॉट लिया है. दिसासी ने कॉर्नर दे दिया है. Cole Palmer, you need to get punishment. I would take you off right now. You know this ना? कोई भी coach को, this is the worst moment for a coach. Cole Palmer सोच रहा है खुद चलाया Chelsea Football Club. Before the player becomes bigger, as much as he's been the player of the season, that deserves punishment. That moment by Cole Palmer. Punishment मिलनी चाहिए Cole Palmer को उस moment के लिए. He should be punished. This is not acceptable. It's a team sport, idiot. Totally selfish, man. उसको पता है, मे बी थिंकिंग दैट भाई मुड्रिक ऐसे भी गोल तो मारेगा नहीं. क्या यार? आई नो यू हैव गॉट सो मेनी गोल्स एंड असिस्ट फॉर अस, एंड थैंक यू ब्रो. नहीं तो हम रेलेगेट हो जाते. बट यू नॉट चेल्सी मैन. Us losing the ball. Kukure are doing very well though, winning it back nicely. यहाँ पर Gallagher giving it back to Kukure on the left wing. यहाँ पर कॉर्नर आएगा नहीं. कॉर्नर Gallagher though has won the ball back. वापस से मुड्रिक को देगा, pretty sure. काइसेडो भाई वापस से build from the back यार. कोई नहीं, at least we are keeping possession. Panic FC is not here for a couple minutes. बट सीरियसली भाई, इतना बढ़िया चांस हो सकता था ना वो वाला. सीरियसली पामर, 3 बंदे थे तेरे सामने. 3 बंदे थे. यू डिसाइडेड टू हिट डायरेक्टली, टेक अ शॉट. इट इज एम्बैरसिंग गाइस, एम्बैरसिंग. अगेन पामर अभी भी he needs to learn a lot of things, maybe the bad way. He needs to learn a lot of things. And you know what, that moment Chelsea are in the position, इसलिए हम कर नहीं पा रहे. Chelsea के बाद आज के दिन में स्क्वाड नहीं है. अगर जोसे मोरिन्यो होता ना, प्राइम मोरिन्यो, he would have taken off Cole Palmer for that moment. ये चक दे इंडिया मोमेंट हो गया. If you know, you know. That was not acceptable from Cole Palmer. I'm sorry to say, that was not acceptable from Cole Palmer. He is not bigger than my club.
दैट वाज द मोमेंट ऑफ भाई मैं ही हूं और कोई नहीं करेगा यहां पर. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. भाई कोई नहीं यार, कम ऑन, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग मैन, अमन. लेकिन कोई नहीं, यहां पर अस लूजिंग द बॉल इन मिडफील्ड, राइट विंग पर उन्होंने धावा बोला. यहां पर एंटनी हैज पुट इन ऑलमोस्ट ब्रूनो, लेकिन वेरी वेल इंटरसेप्टेड बाय मुड्रिक. गैलेगर को मिलती मिडफील्ड में, गिव्स टू एंजो, एंजो विद अ हेवी टच, लेकिन गुड इनफ. राइट विंग पर पामर है, लेफ्ट विंग पर आई बिलीव जैक्सन है. किसको देगा देखते हैं, पामर को ही देगा. पामर गेट्स अ टच, पामर गिव्स इट बैक टू एंजो. एंजो शॉट वेरी वेल ब्लॉक्ड यहां पर बाय एवंस. भाई Evans, what a block by Evans by the way. Caicedo tackle to no avail, end-to-end football हो रहा है. Bruno with the ball. It is a 4 versus 3 guys. Manchester United के 3 players है और यहाँ पर Bruno on the भाई very well done with Disasi ने intercept किया है just about. भाई this game is there for the taking man. This game is there for the taking. Just about us keeping the ball. Very well done by Nicholas Jackson. Definitely yellow card है Maguire यार. Yellow card अगर नहीं देगा ना, referee don't make me lose my shit. That is a yellow card to Harry Maguire all day long bhai. Nicholas Jackson could have countered bhai. Harry Maguire should have got a yellow card bhai. Referee, seriously man, seriously हमारे 2 yellow card मिले. Referee, I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble, and I don't want to be in big trouble. come on man, if I speak I'll be in trouble. If I speak I'll be in trouble. Losing my shit already with Chelsea's bottling. यहाँ पर इन बिटवीन द लाइन दिसासी ने खेला है निकोलस जैक्सन को और वापस से थ्रू बॉल दिया. निकोलस जैक्सन ऑन द रन, देखते हैं व्हाट हैपेंस. निकोलस जैक्सन विद अ शॉट, ओनाना विद अ इजी सेव, वेल सेव्ड दो, लेकिन मुड्रिक ऑन द रिबाउंड कैन नॉट गेट इट. ऑल्दो वी हैव वन द बॉल थैंक्स टू काइसेडो, वेरी वेल डन. गुस्तो क्या क्रॉस करेगा? नहीं, गुस्तो शायद पामर को देगा ऑन द राइट विंग. जल्दी दे यार, टाइम क्लियर है. पामर क्या करेगा? पामर क्रॉस करेगा, फॉल्स टू गुस्तो, समहाउ लकी कम्स टू एंजो. एंजो क्या करेगा? वापस पामर को देगा. नहीं, एंजो करता है स्विच ऑफ प्ले. और लेफ्ट विंग पर है गैलेगर, अपना कैप्टन. गैलेगर वुड प्ले कुकरिया, नो, गैलेगर टेक्स इट ऑन द राइट फुट, गिव्स इट बैक टू काइसेडो इन मिडफील्ड. पामर ट्राइज टू प्ले 1-1 सक्सेसफुली एंड यहां पर यूनाइटेड हैव वन इट, वन द बॉल बैक. वेरी वेल डन यहां पर. मालो गुस्तो ऑसम, वन द बॉल बैक. Palmer, can he keep the ball against a Maino? He does just that. Well done by Cole Palmer. Enzo Fernandez, यहाँ पर Mudryk pressure nicely avoided. Anthony Mudryk, that is. क्या करेगा? गैलेगर शॉट लेगा? नहीं, गैलेगर दिया. काइसेडो शॉट ले यार, जल्दी ले यार, इतने टचेस क्यों चाहिए यार? काइसेडो शॉट लेना था जल्दी. दिसासी जल्दी दे यार, we should take advantage of the situation we are having on the up वाला game. Enzo over the top ball, लेकिन साला नो यार, शॉट लो यार कोई. फर्स्ट टाइम शॉट लो, फर्स्ट टाइम. ट्रेनिंग में करते नहीं है फर्स्ट टाइम शॉट, प्रैक्टिस नहीं करते. फर्स्ट टाइम शॉट गाइस, कम ऑन. गोल आने वाला है काउंटर पे. नो, ब्रूनो फर्नांडिस ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया. ये हो क्या रहा है यार? बच्चों की गेम चल रही है क्या? बच्चों की गेम चल रही है क्या? As much as a neutral you would love this end-to-end football, man. What is happening? Where is the bloody midfield of both the sides? This should have been a goal for United almost. कहीं ना कहीं बाडेशिले ने अच्छा पोजीशन रखा for a change, so that he had to go wide. Bruno, seriously, लेकिन where is the midfield? Where is the midfield of Chelsea at times? Again, Jackson could have shot, Caicedo could have shot first time. आपको टच क्यों लेना है? Gallagher could have shot. Gusto gives it to Palmer. Palmer pressurized, clearly डालो. Bhai, don't tell me that's not a card again, man. Seriously, man. I know ये soft होता है, लेकिन डालो. 2-3 बार कर लिया ये. The assist maker for United, by the way. ब्रूनो के गोल के लिए जो किया था. येलो कार्ड मिला है? मिला है क्या इस बार? Yeah, this game is actually good for the neutral. I totally get it. डालो को येलो दे ही नहीं रहा रेफरी. Animesh being a Manchester United fan also is like laughing, man. Seriously, man, Dalo didn't get a yellow. Guys, what is happening? Is the yellow card not allowed for a Manchester United player? ऐसे कुछ रूल है क्या आज? Nothing against Manchester United, लेकिन हो क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है? मगवायर और डालो कैसे नहीं मिला येलो कार्ड? How?
एनीवे अपना फ्री किक है गाइस यहां पर 56 मिनट में पामर डायरेक्ट फ्री किक नो यूज यार कौन है भाई हेडर इन द बॉक्स वी आर एनीवे मिसिंग थियागो सिल्वा नहीं दिस फाउल वाज नॉट वर्थ लेकिन क्या होता है ना आप कंटिन्यूस करते हो ना 4-5 ही एज अ प्लेयर ही शुड हैव बीन ऑन येलो बाय नाउ इज व्हाट आई एम सेइंग बट डेफिनेटली मैग्वायर का तो येलो कार्ड था यार जहां पर जैक्सन ने उसको बीट किया था और ही कुड हैव काउंटर्ड डेफिनेटली वो तो येलो कार्ड वर्थ था लेकिन गैलेगर ओ लकीली विंस अ फ्री किक ये लकी था गैलेगर यू नो ब्रूनो एंड कोबी माइनो अगेंस्ट गैलेगर दे वन द बॉल ब्रूनो स्पेशली लेकिन I think we were lucky to get a free kick. No, we again! Boy, no! Yet again! Disaster! बचा लिया Disasi! सालो हरामियो साइड पास मत करो सालो कुत्तो अपना साले अब सॉरी गाइस कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है कैसे ने तो जो किया था मिस्टेक सेम चीज दिसासी ने किया अभी बट लकीली वी डिड नॉट कंसीड मैन Do not play a side pass for a single defender. Simple rule of standard football. इतना crazy bad passing by the defense at times, man. Or defensive midfield. Corner मिला at the end. Disasi recovered somehow. No, goal आएगा. बच गया. Free header था. That should have been a goal. It was a Casemiro moment, guys. Casemiro last season का आपको याद है beginning of last season जो हुआ था Casemiro equalizer जो आया था लास्ट में this was a moment guys this was a real chance for Casemiro again rubbish corner defending by Chelsea rubbish absolutely whereas Disasi is on the run I don't know why only playing to Badiashile after all that celebrate कर रहा था साले Disasi was celebrating is it मैं देता हूँ रुक उसको मैं देता हूँ रमित लेकिन यहाँ पर वी हैव गॉट द बॉल एंजो को मिला है बॉल नाइस वर्क बाय मोड्रिक वाज इट लेकिन पामर शॉट ओ नाइस सेव बाय ओनाना ऑल्दो इट वाज डायरेक्टली अबव हिम यहाँ पर ऑन शॉट था ऑन टारगेट था शुड पामर हैव स्कोर्ड इट और रादर शॉट इट लेफ्ट और राइट साइड ऑफ ओनाना ही प्रॉब्ली शुड हैव इन हाइंडसाइट भाई Disasi celebrated that man he celebrated that recovery man I can't believe it I cannot believe it Again, there are certain times you celebrate, I get it as a defender, but come on, I'm not having any of that shit, man. लेकिन again, मुड्रिक का कॉर्नर आने वाला है गाइस नितेश क्या हाल है सीरियसली मैन लाइक द सेम मिस्टेक वी हैव रिपीटेड ऑलरेडी फर्स्ट हाफ का जो जिससे गेम वापस से यू नो शुरू हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए दैट काइसेडो एरर दिसासी में द सेम एरर मुड्रिक का कॉर्नर Oh, was Disasi there? भाई Disasi का चांस अगेन द बॉक्स डिड ही मिस इट टोटली बट वैन बिसाका गिर गया यार हेड इंजरी तो भाई गया अपना कॉर्नर भी पता नहीं यार क्या ही बोले फिर भी हमें ऑडेसिटी है नॉट टू प्ले थियागो सिल्वा ब्रो बट कोई नहीं भाई अपने तो भाई विल बैक अ टीम नो मैटर व्हाट एज मच एज अपने को देते हार्ट अटैक्स चेल्सी come on Chelsea भाई टाइम होने वाला है 60 मिनट्स येलो कार्ड पर है एंजो फर्नांडिस येलो कार्ड पर है मालो गुस्तो क्या करोगे आप लोग चेंजेस अमन जैसे पूछ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट I would consider playing Gallagher in midfield and I think I would take off Caicedo. People might be shocked और थोड़ा बहुत अपने पे कुल्हाड़ी मारना होगा. I would go for the 3 points and risk losing the draw as well. I would risk that. मैं खेलूंगा गैलेगर को इन सेंट्रल मिडफील्ड जस्ट बिकॉज इज अ शॉट टेकर खाली उसके लिए और एंजो को नहीं मैं काइसेडो को ऑफ करूंगा एज मच एज एंजो इज ऑन येलो कार्ड बिकॉज वो क्रिएटिविटी चाहिए ठीक है मैं खेलूंगा मुड्रिक को नंबर 10 I would bring on Raheem Sterling. कहीं ना कहीं काउंटर पे गोल आ रहा है वन ऑफ द टू साइड्स सो व्हाई नॉट गो फॉर इट ठीक है दैट इज वन सेकंड वो करने नहीं वाला पहुंच लेकिन मैं सेकंड जरूर से करता अभी so that we don't get hit on the counter we'll get someone who can stay a little bit behind which is Thiago Silva तो मैं लाऊंगा Thiago Silva को also threat in the box then a Badiashile Malo Gusto अगर not fit enough then I'll take out Malo Gusto and I have to play Disasi right back लेकिन वो भी सुसाइड है भाई
Best players कौन? To be honest, I have liked Kukurea. I don't agree with this rating at all. Kukurea has been good for sure. Palmer, as much as वो rating, तो I get that. लेकिन Palmer जो गलती किया not to pass it to Mudryk on the run, भाई, it's almost crime offense मेरे लिए. तो I think वो है. लेकिन let's be real, it's been midfield में दोनों ही साइड बहुत मिस किए in terms of space. But I think Garnacho is what I would like to say. Draw is useless, go all out. Bilkul, 100% agreed, man. Aman, 100%. Couldn't agree more, 100% with that. With you. Caicedo ko lao. I'm waiting for Mount late winner. On the United side, it could be Mount coming on, yeah, for all we know. Kobe Mino looked a little bit tired. Remember, Varane is already off, and you have Evans on, who's had a very important moment, mind you. Who's had a very important moment already. Rashford coming, looks like it. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. यहाँ पर एंजो भाई ऑलमोस्ट बॉल दे दिया यार. क्यों यार एंजो? नहीं यार, कम ऑन. Should we sub Enzo, man? I'm just thinking. He gives away the ball so much now. Counter आता है फिर. By Disasi being taken on by Garnacho. Disasi toe for toe celebrating that hit again for a corner. कॉर्नर है भाई. अब कॉर्नर डिफेंड करने के बाद सेलिब्रेट फिर भी कर सकते हो भाई, क्योंकि कॉर्नर देना है ऑल्सो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना. दिसासी 63 minutes, man. There's no movement. You don't have balls to go for the win and go for a Sterling, go with a extra pronged attack. नहीं है आपके पास. Mudryk यहाँ पर losing the ball to Van Bissaka almost, लेकिन Kukurea getting it back to the goalkeeper Petrovic, जो distribute करता राइट हैंड साइड में गुस्तो को. गुस्तो याद रखिए is coming back to injury, so I hope he doesn't overdoes himself. लेकिन दिया है पामर को तो देता है वापस से गुस्तो को, लेकिन नहीं, जस्ट अबाउट अबव गुस्तो था. ओनली फॉर निकोलस जैक्सन टू कम बैक एंड विन द बॉल आउटसाइड डी. मिडफील्ड को मिलती है एंजो फर्नांडिस, कैसेडो खेलते हैं गैलेगर को, जो देता है वापस से लेता है जैक्सन से. ओ पामर ट्राइंग अ थ्रू बॉल इन बिटवीन लेग्स, अ नटमेग. लेकिन यहाँ पर रेस हो रही है बिटवीन एंटनी एंड कुकुरिया, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर एंटनी इज विनिंग इट राइट नाउ. Can Kukurea get the ball from him? Kukurea doing decent, but do not get beaten. नहीं Kukurea नहीं, फॉल मत देना. और भाई साहब, no one was there in the box for United, man. That should have been a goal. That should have been a goal, guys. Remember, guys, no spoilers in the chat, guys. I'm here. No spoilers in the chat. I'm here. Don't worry about it. But I'm here. Okay, big up to you all. लेकिन I hope you respect the fact that I'm here and I'm putting in effort for a reason. लेकिन यहाँ पर गुस्तो keeping the ball, कुछ ज़्यादा ही खेल रहा है from the back. Badeshile, I don't know what he's doing. Again, why do you pass it centrally in midfield when you are being pressed? I have no idea. ये पता नहीं क्यों है. लेकिन जैक्सन pretty sure he was fouled, लेकिन रेफरी तो अंधा है यार, क्या बोले. कोई नहीं. Nicely done by Mudryk. Switch off play to the right hand side. Palmer थोड़ा सा टाइम लेते हुए. Palmer trying to put a through ball to no avail, bhai. We all know Sterling and Madueke would come on eventually, and Madueke with his worldly skills will piss us off. Quite predictable skills. Look at United, once up Varane and Evans, and defense में पूरा change हो गया. We can't open them now. Evans is, trust me, man, he's a leader, man, at the back. हमने बात ही की थी pre-match में, absolutely. लेकिन the game is open, generally speaking, still in midfield. So कहीं ना कहीं there will be chances created, or at least half chances. On the right hand side, have we... Bhai, Gusto is coming back after injury. If that is not a card, Diogo Dalot. Bhai, Diogo Dalot, bloody sixth foul, yaar. Sixth foul. I can't believe it. Diogo Dalot को yellow card कैसे नहीं मिला है, guys? Højlund off, Rashford on for United. Evans also is injured. Ooh, that's not good news. But no card for Diogo Dalot, guys. People will not speak about it enough. I know it. भाई काम वाला आ गया काम करने के लिए, भाई अच्छा वाला यूनाइटेड के लिए. ऑफ कोर्स ए यंग डिफेंडर. अच्छा चलो, गर्नाचो का फाउल था. अनिमेश ने क्लैरिफाई किया, मे बी इस बार इसलिए बच गया. लेकिन सीरियसली स्टिल मैन, ही हैड लाइक 4-5 फाउल्स.
बाड़ेशिल इतना रिस्क क्यों खेलता है यार तू, बट कोई नहीं, कैसेडो जस्ट अबाउट रिलीज इट। गैलेगर के पास बॉल है, गैलेगर राइट विंग को रिलीज करने की कोशिश करता है बामर से, लेकिन नहीं, वापस खुद को मिलता है बॉल। कैसेडो जल्दी से खेल यार, 1-2 खेल रहा है, इट्स ओके, गिव इट टू एंजो, एंजो देगा वापस गैलेगर को, नाइस रन बाय गैलेगर, वेल डन। लेकिन लास्ट में क्या आएगा, गैलेगर किसको दिया यार, किसको दिया यार, गैलेगर रील मोमेंट बन गया यार, गैलेगर मैन भाई, रवि ब्रो, कौन है गैलेगर, कौन है गैलेगर भाई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कोई नहीं, अभी क्रॉस आया, गोल आएगा हम लोग का, चलो गोल आएगा। मैन आई वांट टू स्पिट एट चेल्सी प्लेयर्स मैन, यहां पर अपना अटैक था, गर्नाचो स्कोर्स द सेकंड एंड इट्स अ ब्लडी मैनचेस्टर यूनाइटेड विनर। Again, allow crosses. Again, where was the bloody defense? Again, on the counter. Again, on the transition. अपना अटैक था with Gallagher. Things changed off a throw-in. Clutch and how, man. Clutch and how. Piss off, man. Chelsea is fucking finished. We are fucking finished. I don't give up. Again, Anthony has had a good game. Kukurea, he's had a good game, but not in this moment, yaar. Where was Malo Gusto, bhai, for all the people who are saying that Malo Gusto or Reece James? Where was Malo Gusto, bhai? Good goal on counter. But the fact is, why don't we read that? Why don't we read that? The fullbacks are to blame, if at all. Lekin quality on the ball from Anthony, from Garnacho. Finish. Kar le ab. Yes, I'm toxic, bro. 68 minutes. मैंने बोला था, साले हरामी पोचेटिनो, मैंने बोला था, ला तो चुपचाप रहीम स्टर्लिंग को and have the bloody balls to bloody go for the win. But no, you did not. अब ले ले तू, हर मैच में सेम थिंग, सेम फकिंग थिंग पोचेटिनो। अब मार ले 2 गोल, अब मार ले 2 गोल। At home yet again. Burnley, Manchester United, Anjanaya Park, any team, we bloody fuck ourselves. We bloody fuck ourselves. Our season is fucking finished, man. We are playing Man City in the FA Cup. Reality strikes. Our season is fucking finished. I just need to calm down, man. I just need to calm down first. These assholes of the first order are not worth it. They're not worth my effort and emotion, man. Again, Anthony, you have to give to Eric Ten Hag the way that he came back. But seriously, man, Garnacho, what a player, man. यहाँ पर वही चीज, अपना मुड्रिक होता तो गोल नहीं होता. वी न्यू दैट. हमें पता है मुड्रिक होता तो गोल नहीं होता, वो पता है, वो रियलिटी है. आई विल नॉट डिफेंड. यस, मुड्रिक की गलती नहीं है मेजर, लेकिन आई विल नॉट डिफेंड हिम. आई विल नॉट डिफेंड दैट ब्लडी डायरेक्टर्स. करो भाई, अभी भी खेलो भाई, 2025 के लिए खेलो. साला 2025 में हम लीग में भी रहेंगे क्या? लीग में भी रहेंगे क्या? लीग द चैंपियंस लीग. चिल्ला रहे हैं यहां पर 2:30 बजे रात को आपके कारण. What rubbish defending, yaar. Again, the second goal came from a Chelsea attack. The third goal came from a Chelsea attack. Exactly, our player cannot do that. Our player cannot do that. Lekin again, brilliant outside of the foot cross by Anthony. But again, you have to question, why aren't our fullbacks reading it? Why are we allowing those crosses? Why aren't we there to block those crosses? वर्ल्ड क्लास है ऑपोजिशन भाई, आप भी वर्ल्ड क्लास की एक्सपेक्टेशन रखना चाहोगे ना आपके साथ भी.
चुकुमेका कमिंग इन भाई काइसेडो के लिए। अब ला दे यार, अब ला दे यार, कितने भी फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेयर ला दे यार। पोचेटिनो, यू आर अ ब्लडी स्पर्स एस्ट्रोल मैन, पुसी यू आर। सॉरी गाइस, लास्ट मैच के बाद में डालना पोचेटिनो इज अ पुसी। इस बार मुझे शब्द भी नहीं है यार, इस बार तो आई डोंट इवन रियली हैव वर्ड्स टू से। एंड इवन द प्लेयर्स मैन, इवन द प्लेयर्स, मतलब हम लोग को दिखता है यार, हम और आप तो फिर भी आधे फुटबॉल, उतना आधे क्या 1/10 नहीं जानते हम लोग फुटबॉल के बारे में जितना प्लेयर जानते हैं सपोजिटली मल्टी मिलियनर्स। वी कैन सी, डू नॉट अलाउ क्रॉसेस, डू नॉट अलाउ क्रॉसेस। बोल बोल के थक गया, बोल बोल के थक गया। Yes, Tokir, I've read it and I've said yes, bro. Don't spam, मेरे भाई. Guys, don't spam. If you want to spam, spam super chats, man. Spam super chats. Yes, मैं मांग रहा हूं. Because यहाँ है, मुझे पता है कितने पैशन से मैं देखता हूं. And you guys, OGs of the channel, deserve it as well. Sorry, man. I'm losing my shit. Losing my shit. Come on, bhai. And I should be singing Chelsea songs. Seriously, man. Yet again, big game, साला जीतना छोड़, हारेंगे यार, हारेंगे. Looks like it. We are bench भी ऐसे ही है, घंटा वाला. Raheem Sterling and Raheem Sterling also came on, by the way. Totally missed it, man. I'm like totally, अभी मेरा head tail कुछ काम नहीं कर रहा अभी. Tail तो साला है ही नहीं मेरे पास. Mudryk is off for Sterling and Caicedo is off for Chukwuemeka. यहाँ पर येलो कार्ड्स कैसे नहीं मिला यूनाइटेड को, आई हैव नो फकिंग आइडिया. सॉरी बट इट्स व्हाट इट इज. नो बहाने, बट दैट्स रियलिटी. मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ये होगा. आई रादर डू दैट देन नॉट. फ्री किक है चेल्सी के लिए. कितना टाइम ले लो, और 10 मिनट ले लो यार फ्री किक लेते लेते. ले लो भाई 10 मिनट, अपना तो पता है ना गोल आना है ना फ्री किक से. बोल खड़े तो ऐसे है लोग. वो चैलेंज करता है भाई बंदों को. यू कंसीडर द गोल, यू गो एंड स्कोर सपोजिटली. मैन मैनेजर. चलो भाई एक और कॉर्नर. नहीं वैसे तो हमारा भी है यार, मतलब कम ऑन, बट आई गेट इट. पामर ऑन नियर पोस्ट. चलो हक दिया है दिसासी वापस से. मैं क्या ही बोलूं यार, हेडर करना आता है नहीं इन लोगों का, मैं क्या ही बोलूं. चलो भाई, 2 defenders, come on man. Let's all clap at Pochettino, bro. 2 defenders, come on. Chalobah और Alfie Gilchrist, come on. जब हम हार रहे 3-2 at Stamford Bridge, bro. Again Manchester United जिनके साथ हम जीते नहीं है last 6.5 years in the league. भाई Pochettino, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मालो दोस्तों का सब्स्टिट्यूशन में समझ में आता है. बंदा एक्चुअली इंजरी से वापस आ रहा है, गेट इट. लाइक फॉर लाइक आपका एल्फी गिलक्रिस्ट या चालोबा, वन ऑफ द टू. व्हाई आर बोथ द डिफेंडर्स कमिंग ऑन? आई डोंट गेट इट. दिसासी बीइंग टेकन ऑफ, वो भी ऐसे देख रहा है दिसासी. आई नो दिसासी में शिट एट टाइम्स. पनिशमेंट देना था तो भाई पहले देना था. बहुत लेट हो गया यार पॉच, बहुत लेट हो गया. इट्स टू लेट ब्रो. This defenders are like rubbish defenders that you also supposedly approved, yaar. Whew. I'm sorry guys, the energy is very less. हर गेम में लगता है दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ चेल्सी सीजन. दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ चेल्सीज लो इन द लास्ट 2 years.
I'm ashamed to be a Chelsea fan, bro. Right now, this current Chelsea के लिए I'm ashamed to be their fan, bro. I'm ashamed to be their fan, man. A Manchester United team of this current stature is actually showing more heart. Desperation needs were more for us. पामर को दो और इंशाल्लाह बस एक ही चीज आता है बस. Sterling doesn't anticipate the run. Again, guys, might be taking selective comments. Like, with all due respect, most of the creators do. कभी कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए यार. वो स्पैम करना है तो सुपर चैट स्पैम करो यार. बुरा लगता तो लगता है. कंटेंट क्रिएटर है लेकिन सबसे पहले फैन हो भाई. चलो दे दिया बॉल. गिफ्ट गिवन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. वो बोलो काउंटर कर रहे हैं गर्नाचो से, लेकिन चालोबा इज देयर जस्ट अबाउट. एंजो फर्नांडिस गिव्स इट टू गैलेगर. खेलता है निकोलस जैक्सन को और शुड बी भाई चुकुमेका डूइंग वेल. गैलेगर शॉट. इज इट हैंडबॉल? प्रोबेबली यस, लेकिन बॉल हिट टू हैंड मोस्टली. गैलेगर विनिंग द बॉल जस्ट अबाउट, लेकिन कोबी माइनो विंस इट बैक. लेकिन नहीं, एल्फी गिलक्रिस्ट गेट्स इट अगेन और एंजो देता है लेफ्ट विंग. रहीम स्टर्लिंग तेरे सामने जैक्सन है लेकिन कॉर्नर मिलेगा. चलो कॉर्नर है. एक कचरा के फ्री किक से दिसासी का गोल हो जाता तो या बिल्कुल 3-0 होता यार. एट अ पॉइंट 3-0 होता, लेकिन वही इफ्स एंड बट्स. नाइस ब्लॉक. पता नहीं यार भाई. व्हाट वाज दैट? एल्फी गिलक्रिस्ट है ना, अभी भी बच्चा ही है, बट दैट वाज अ हेडर ब्रो. ही मिस्ड इट. सीरियसली मैन, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन स्कॉट मैकटोमिने, कोबी माइनो, ब्रूनो फर्नांडिस की मिडफील्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, याद रखिए. विद कामवाला एंड Maguire on the back. We have won the ball back thanks to Gallagher on the right wing somehow. Jackson keeps the ball just about. आज बहुत ही खराब खेला है जैक्सन. पामर पता नहीं क्यों डायरेक्टली प्लेयर को देते रहता बार बार. Was it not a free kick against Chelsea? एक सेकंड भाई, मत दे अभी भी. येलो कार्ड मत देना यार. रेफरी चाट ले भाई, चाट ले, नीचे झुककर चाट ले यार उनकी. क्रेजी मैन. मतलब आई नो एंजो, मतलब पामर इज गुड बट कम ऑन, इज नॉट एडन हजार्ड यार. Wasn't the foot high a little bit? I don't know. But anyway, let's go. Exactly my point. कि यार we should be clearly have dominated this game, but no. पता नहीं यार, मतलब कहीं ना कहीं हम लॉस डिजर्व करते हैं. आई डोंट नो. मतलब द फैक्ट इज वी आर नॉट विनिंग एंड आवर सीजन इज डन ब्रो. मैंने लास्ट मैच के बाद में बोला था वी विल बी ड्रॉपिंग पॉइंट्स अगेन वेरी सून बिकॉज ऑफ आफ्टर ब्रेंटफोर्ड वाला गेम. हमें पता, बर्नली वाला गेम, सॉरी, हमें पता लग गया था. तब से ब्रेंटफोर्ड बोल रहा हूँ. ब्रेंटफोर्ड भी इतना अच्छा नहीं था बाय द वे. व्हाट इज दैट फ्री किक मैन? कॉर्नर है. लेकिन वो इसलिए नहीं हुई ना रूही, दैट बिकॉज यू हैड अ यूनाइटेड टीम वर हैप्पी टू काउंटर एंड प्रेस. चलो कैचिंग प्रैक्टिस टू अनाना. गिफ्ट दे दिया भाई अनाना को भाई समझकर स्टर्लिंग ने. चलो भाई, रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन टुडे. Still can't believe that after 2-0 we are actually sitting at 3-2. Jackson playing as Sterling, not offside है, not offside है. Offside मत देना यार linesman. Cross आया, shit man! Jackson and Palmer daydreaming or what? For once Sterling did well, but Jackson and Palmer भाई seriously.
समथिंग गॉट टू चेंज यार. आप प्लेयर्स को तो चेंज नहीं कर पाओगे. अब सफर कितना करोगे यार, कितना करोगे भाई सीरियसली. 2-0 से 3-2 यूनाइटेड हैव कम बैक मैन. उनका स्टोरी बन गया. एंड ऐसा भी नहीं कि यूनाइटेड मतलब अच्छा किया, बट ऐसे नहीं कि मतलब दे हैव प्लेड द बेस्ट गेम ऑफ द लाइव्स. We gifted them. We literally gifted them 1 goal and 2 on counter. Again, yes, exactly. मैंने बोला था, याद रखिए मैंने बोला था अमन, मैं लाता before that United scored a goal, I would have brought on Sterling and asked him to go on the wing and Modric on the center. Palmer again. भाई तू पामर तू किसको बीट करने की कोशिश करता है यार, बार बार हिट्स अगेंस्ट द डिफेंडर डायरेक्टली. As much as Palmer is good finally, but come on यार, there are things that he does वो एकदम ब्रेन फार्ट मोमेंट लगता है मुझे at times. तियागो सिल्वा को नहीं खिलाना इसलिए. एंड डिसासी को गुस्सा निकाला है, बट टू बी ऑनेस्ट नन ऑफ द डिफेंडर्स आर गुड. चालोबा हैज बीन अ बेस्ट डिफेंडर इन व्हाट 5 minutes. सीरियसली मैन, वी लिटरली अ स्मॉल क्लब यार. थ्रू बॉल आई है, बट आई थिंक वेरी वेल डन बाय वैन बिसाका. वैन बिसाका डिड ऑसमली ऑन द राइट बैक पोजीशन. जैक्सन वाज ऑलमोस्ट देयर ऑन द थ्रू बॉल, लेकिन सेकंड बॉल के हम जीतेंगे नहीं. मैनू डूइंग वेल. गैलेगर डेफिनेटली पुश था. येलो कार्ड मत देना रेफरी, चुप हो जा. रेफरी चुप हो जा. अगर येलो कार्ड दिया ना गैलेगर, रेफरी बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, डोंट टेस्ट माय पेशेंस. Seven minutes and stoppage time left, guys. 7 minutes and stoppage time left. We need 2 goals. Back in the day, तो मुझे अभी भी लगता था कि यार we'll create enough chances to score. I don't think so. This is worse than Benitez, यार era. Sorry, guys. It's not happening. It's simply not happening. मतलब आप again you choose to basically invite pressure, be it as players या coach. मेसन माउंट कमिंग ऑन, यही बचा था. अब ओन गोल मार ले यार मेसन माउंट, इतना तो कर ले भाई चेल्सी के लिए. मेसन माउंट है ओन गोल एनीवन मैन, कम ऑन. लॉस नहीं चाहिए यार एटलीस्ट, ऑल्दो ड्रॉ का भी यूज नहीं है. हाँ काउंटर में अच्छा खेलता है, फेयर पॉइंट फेयर पॉइंट. लेकिन एंटनी टू बी फेयर टू हिम लास्ट 2 गेम्स में बेटर लगा है. आई नो जस्ट 2 गेम्स है. थोड़ा सा धक्का मारा था बस यार. इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है. ओवर द टॉप पास टू नो अवेल. कुकरिया नाइस रन. चलो ऑन साइड है, ऑन साइड था. कॉर्नर मिला है. कुकरिया नाइस रन एंड एंजो नाइस विजन. I hear you, bro. I hear you. Come on, man. Let's have a mount own goal, man. यहाँ पर मीनवाइल पामर का कॉर्नर है. नहीं यार, कॉर्नर से तो आना ही नहीं यार गोल. हाँ ठीक है कुकरिया, इट्स ओके. टेक अ येलो कार्ड. इट्स सो टोटली फाइन. इट्स टोटली फाइन. जस्ट टेरेबल यार. I'm just losing my shit totally. Garnacho off and man of the match, of course. I still can't believe how we conceded that goal the way we did. Anyway, Frankie de Jong तो शायद ही जाएगा, but can't say anything regarding Barca. We might need to sell a big player. हम वही बैक पास कर रहे हैं, बस बैक पास कर रहे, साइड पास कर रहे,
और कुछ नहीं कर पा रहे. लुक एट मतलब यहाँ पर जो हंटिंग वुल्स नहीं होते वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स आर रनिंग ऑन द पिच, वेयर एज अस वी डोंट नो, वी आर ब्लैंक. हमें पता ही नहीं क्या कर रहे. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग. चलो भाई, रहीम स्टर्लिंग लूजेस द बॉल. और ले, टाइम ले, और ले. आएगा भाई, अब तेरे पास बॉल अपने आप आएगा यार. रहीम स्टर्लिंग अपने आप चिपका रहेगा. यहाँ पर बैड पास भाई यूनाइटेड दो. लकीली यूनाइटेड लेकिन कट ऑफ इन बिटवीन. हाँ, वो लोग मिस्टेक करते तो हम लोग तो भाई उसका एडवांटेज दे नहीं पाते. कुकरिया डूइंग वेल, काउंटर में एटलीस्ट गोल नहीं खाए. 3 minutes plus stoppage time guys, there's still time for enough chances, लेकिन we should be on the front foot, not on the back foot. Such rubbish play by Chelsea man. बस बॉल दो पामर को इंशाल्लाह बस. एनीवे, स्टर्लिंग को मिला है राइट विंग में बॉल इस बार. स्टर्लिंग क्रॉस टू नो अवेल. मगवायर देयर हेडिंग द बॉल quite easily and then kicking it out. चालोबा को मिला वापस से. चालोबा अगेन बिल्डिंग फ्रॉम द बैक. एंजो क्या करेगा? एंजो खेलेगा ड्रॉपिंग ऑफ पामर को. पामर खेलेगा कुकुरिया को. प्रीटी श्योर नहीं मिडफील्ड में खेला है. यहाँ पर राइट विंग में स्टर्लिंग को मिला. स्टर्लिंग फर्स्ट टाइम क्रॉस करना नहीं आता है साला. चुकमेका के पास चांस थी लेकिन नहीं. चुकमेका वाज ही फाउल्ड? बाय डिफॉल्ट तो पेनल्टी मिलनी नहीं अपने को, लेकिन भाई स्टर्लिंग शुड हैव जस्ट हिट द बॉल, क्रॉस द बॉल फर्स्ट टाइम. Sterling is playing right. Palmer is kind of playing behind the striker. Jackson पता नहीं क्या कर रहा है. चुकमेका और पामर वहां पर खेले. चुकमेका wins a corner, but now let's see what was that moment. क्या था moment? Was that a moment of a penalty? दिखाया भी नहीं है. Yeah, Kukurea has been far better than anyone. Madueke coming on भाई. Let's all clap for Pochettino भाई. Madueke बदलेगा, 2 गोल मारेगा भाई 1 मिनट में. Let's all laugh at Pochettino. नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का. मैं नहीं बताऊंगा. 2 गोल मारेगा. एनीवे कॉर्नर अपना. क्या यार 2-0 इतनी खुशी आ रही थी यार 2-0 पर. ruined my day man, ruined my week man, ruined my year man. Chelsea ruining my life man. यहाँ पर एंजो ऑफ साइड है. चलो भाई कोई नहीं. लास्ट मिनट स्टार्टेड ऑलरेडी गाइज. स्टॉपेज टाइम कितना आएगा? मतलब अगेन यू कैन आर्ग्यू दैट देयर शुड हैव बीन मोर येलो कार्ड्स एटलीस्ट फॉर यूनाइटेड, लेकिन थे नहीं टेक्निकली. सब्स्टिट्यूशंस तो थे. मतलब कितने 4 सब्स्टिट्यूशन यूनाइटेड के थे, चेल्सी के 4 थे. तो कहीं ना कहीं 4 मिनट तो बनते हैं वहां पर. और एक गोल तो भाई 5 मिनट आएंगे. अच्छा 6 मिनट्स आएंगे. कितना स्टॉपेज टाइम कितना होगा गाइस? लेट मी नो. एटलीस्ट 6 मिनट्स आई एम अस्यूमिंग. कुकरिया ऑन द लेफ्ट विंग. एंजो फर्नांडिस पिक्स हिम, लेकिन क्या करेगा? वापस से प्लेइंग बैक. चुकमेका कैन ही डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग भाई? नहीं, अभी के लिए तो नहीं. एंजो गेट्स द बॉल वापस से. एंजो खेलता है राइट विंग पर टू मडवेके. कैचिंग प्रैक्टिस भाई. कैचिंग प्रैक्टिस दिया है ओनाना को भाई. ओनाना भाई हो यार. ले लो बॉल ले लो यार. आपके लिए शॉट था ये सीरियसली. ये तो हमारा आप भी कर सकते हो. 8 मिनट है भाई. 2 मिनट एक्स्ट्रा ही आया. 8 मिनट स्टॉपेज टाइम. मैंने एंटिसिपेट किया था 6 मिनट. सो स्टैमफोर्ड ब्रिज गेटिंग फर्गी टाइम. आई डोंट नो. मतलब कहीं ना कहीं आई एम सरप्राइज्ड. कहीं ना कहीं मैं खुद सरप्राइज हूं. मैं सोचा था 7 मिनट्स वुड हैव बीन फेयर, 6 मिनट्स वुड हैव बीन चेल्सी स्टैंडर्ड, लेकिन 8 मिनट्स वाज आई थिंक अ लिटिल बिट टू मच. तो विल चेल्सी प्लेयर्स रियलाइज इट दो? क्या हमारा गोल आ सकता है यहां पर? उल्टा साला उनका ही गोल आएगा. Gaurav knows exactly why the pain is there. Exactly.
so much pain, man. Again, पता नहीं क्या है यार. I cannot just be there without not reacting. That's how I am. It's done, man. If you're losing, our season is finished. Chelsea is finished, man. वो तो लकीली भाई हमें फीफा ने पता नहीं कैसे बुला लिया है भाई नेक्स्ट ईयर क्लब वर्ल्ड कप पर. नहीं तो हमें मतलब वी आर नॉट, हम लायक नहीं भाई प्रीमियर लीग के. हम लायक नहीं प्रीमियर लीग के, सच बोलूं तो. These are like school kids, man, playing. Again, thanks for the directors to do that. And again, thanks for the bloody Spursy coach doing it. Improve करा है. वाओ, क्या improve किया है. चुकमे का losing the ball इस बार. चलो भाई, 2 और मिनट चले गए. Can't believe it, man. I still can't believe it. Again, over the top ball, almost gone. Luckily, Petrovic is there. भाई याद रखिए, फर्स्ट 30 मिनट्स में हम डोमिनेट कर रहे थे मैच को. क्या हुआ कि वो मिडफील्ड प्रेस वी couldn't kind of resist after that first mistake of Caicedo. I don't know what happened. What the bloody hell happened? I have no idea. प्रॉपर गेम्स मैनेजमेंट कुछ भी नहीं यार. गेम्स मैनेजिंग चीज होती है यार. मतलब आपको आप बोल सकते हो वी नीड अ थियागो सिल्वा. भाई कम ऑन, एवरीवन, दीस गाइज हैव प्लेड सम लेवल ऑफ फुटबॉल फॉर अ फ्यू इयर्स यार एटलीस्ट. आप नहीं बोल सकते हो यू डोंट नो. व्हेन यू आर ऑन द लीड यू आर मोर ससेप्टेबल एज सून एज आप गोल करते हो. अगेन फॉर ऑल वी नो दे माइट बी एबल टू डू इट, लेकिन क्या वो करेंगे? नहीं. वहां फाइट करेंगे. आई एम टेलिंग यू, अभी स्क्रिप्ट बोल रहा हूं, मेसी इज गुड, वी विल फाइट फॉर इट, एंड अगेन वी विल लूज दैट गेम एंड आवर सीजन विल टेक्निकली फिनिश एज वेल. दैट इज द रियल ट्रुथ. फिजिकलिटी है ही नहीं भाई हमारी. एक तो वो दिख नहीं रही थी स्क्वाड में आपको. पोचेटिनो अगेन, मतलब एज मच एज मुड्रिक प्लेड बेटर, आप फ्लैशेस में नहीं दिखा सकते हो यार. यू आर ए चेल्सी फुटबॉल क्लब. गर्नाचो अंडरस्टैंड्स दैट, बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर. अभी भी 4 मिनट बाकी है गाइस. अंश बिग अप यार. वो तो लकीली भाई चैंपियंस लीग शुरू हो रहा है अगले हफ्ते. फुटबॉल फैन एंड मी, दे आर किलिंग मैन दिस चेल्सी टीम एज मच एज नथिंग अगेंस्ट माय क्लब इन इट्स हिस्ट्री. पता नहीं यार, मैं एप्लीकेशन देने को तैयार हूं यार पुदिन. पता नहीं यार. ठीक है यार, माउंट को हमें गुस्सा करने से क्या ही तो मिलेगा. टू बी ऑनेस्ट, you know what, in the long run Mount has done the right thing, guys. Hard truth is this: Chelsea anyway in history was smaller than Manchester United. Yes, Chelsea fans, I'm saying it right now. Manchester United fans, bhai, you don't have an identity, yes, but you are bloody, yes, you are lucky, but at the same time you deserve the credit. You are the balls and the mentality as a club which we lack. Mount knew that. Kovacic knew that. Jorginho knew that. Czech knew that. Seriously shit, man. Rubbish. Absolute rubbish. एक सेकेंड हो. एक सेकेंड हो.
I'm just typing something. Chelsea is finished, bro. Penalty, yaar. We win a penalty. We win a penalty, guys. ये क्या हो गया यार? We win a penalty out of nothing. Diego डालो गिविंग अस अ पेनल्टी, और साला स्क्रिप्ट इतना खराब होगा कि भाई अभी अगर हम मिस करते हैं पेनल्टी, जस्ट इमेजिन द सीन्स. वी आर लकी. Madueke winning a penalty against Dalo. Well done by Madueke. Credit where is due to him. But to be honest, I'm not feeling like celebrating. I don't know why. Which is so unlike me. Which is so unlike me. But again, we didn't give up. चलो अब let's back Chelsea. I just hope goal हो जाए बस कहीं ना कहीं. ये VAR क्यों चेक कर रही है? Was it outside the box? नहीं डेफिनेटली पेनल्टी है यार भाई. ट्रिप्ड अपने आप किया होगा, लेकिन ही डिड टच Madueke एंड that's a penalty. If you cannot overturn it, it is a penalty, guys. Definitely. एक सेकेंड. हाँ, अगेन सॉफ्ट बट पेनल्टी है यार. ही टच किया ना, टच किया ना. अगर टच किया और अगर ऑन फील्ड डिसीजन इज अ पेनल्टी, यू कैन नॉट चेंज इट. सिंपल. डू नॉट ओवरटर्न. ही कैन नॉट ओवरटर्न. सॉफ्ट है, दैट्स फॉर श्योर. लेकिन चलो टाइम भी खत्म हो गया. अगर नहीं दिया तो टाइम खत्म बस. लेकिन रेफरी ने ऑलरेडी हगा इन टर्म्स ऑफ येलो कार्ड्स. कैन नॉट डिफेंड हिम दैट. इट स्टैंड्स. द पेनल्टी स्टैंड्स, गाइस. इट इज अ पेनल्टी. नो स्पॉयलर्स गाइस, नो स्पॉयलर्स प्लीज इन द चैट. मैं यहाँ पर देख भी नहीं रहा चैट को अभी फॉर अ मिनट. कोल्ड पामर देयर. डोंट टेल मी ओनाना का रिडेम्पशन मोमेंट विल बी दिस. I don't know why I don't have a great feeling about this penalty. I don't have a great feeling about this penalty. I'll be honest. Although इतना समय लिया है, बहुत प्रेशर मोमेंट, और कोल्ड पामर तो कोल्ड है. बहुत गाली भी दिया उसको. But seriously man, we can't. मतलब either ways, I'm not proud of my team. I'm not proud of my team. Don't tell me. चलो गोल हो गया भाई. Should I celebrate? कर दो भाई. Do we have time for a winner? Do we have time for a winner though? This was my one of my least celebrations that आपने देखा होगा on our streams. Not proud of my team, man. Not proud. बट कोल्ड पामर इट इज. सो कोल्ड पामर भाई मार दे एक और पेनल्टी. पेनल्टी मर्चेंट बोल रहे लोग, लेकिन आई फील दैट इट्स डिफिकल्ट मैन. इट्स डिफिकल्ट. कमान भाई, हो जाए भाई एक बार. लेकिन एक बार यहाँ पर काउंटर आ रहा है यूनाइटेड का. मीनवाइल जस्ट अबाउट एंजो विनिंग द बॉल ट्वाइस, और वी आर गेटिंग अ काउंटर गाइस. कम ऑन, रिलीज फर्स्ट टाइम. मडवे के रिलीज कर यार. जैक्सन कर कुछ. जैक्सन कुछ कर. रहीम स्टर्लिंग साला मिला है. नो मैन, व्हाट एन इंटरसेप्शन मैन. हु वाज दैट? हु वाज दैट? छक्का मार दिया चेल्सी ने भाई, फार पोस्ट में. चुकमेका ने यार. What just happened? How didn't we score, man? How didn't we score? Ah!
Chelsea, 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 Chelsea. Get in, man, get in. Chelsea 4. We fucking beat Manchester United. Come on, we are alive. Chelsea is alive. Chelsea is alive. Come on, man. Hat-trick for Cole Palmer. Get in, man. Get in. I'm losing my shit, bhai sahab. I'm losing my shit. I am losing my shit. What just happened? What just happened, bhai? In a game. What a topsy-turvy. लेकिन यहाँ पर येलो कार्ड मिला, किसको मिला पता नहीं. I don't care. I don't care. It is Cole Palmer, yaar. Cole Palmer. Cole Palmer. Woohoo. ओ भाई साहब. किसका डिफ्लेक्शन था? स्कॉट मैकटोमिने का डिफ्लेक्शन था भाई. We are alive, guys. Chelsea is not finished. Carefree, wherever we may be, we are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. But. Arey bhai sahab, Pochettino celebrating. We have beat Manchester United after 6.5 years in the league in Stamford Bridge. Bhai sahab, we have beaten a big club after 801 fucking days. It is Chelsea is back, or are we? We love the Premier League, bhai. English Premier League, bhai. Salute hai bhai sahab. What a game of football for the neutral. What a game of football. Love it, man. Love it. Let's fucking go, man. Let's fucking go. Chelsea, 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 Chelsea. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. Oh, bhai sahab. Oh, bhai sahab. Again, unfair on United almost. I'll be very honest. This game did not deserve a winner. Lekin, the drama of this game deserved a winner. Tham ja, Ankit, thoda. Tham ja. I've thrown my specs, I've thrown my cap. I don't know where I am. But we have beaten Manchester United after all. Yes, just a 6th place team. Yes, this Manchester United ज़्यादा proud नहीं होगा. लेकिन the way that we have come back, कहीं ना कहीं, as much as we are very young, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा. Cole Palmer, भाई, what a guy, man. What a guy, man. What a guy. मैंने गाली दिया था उसको midway, by the way. बिल्कुल भाई. I think Chelsea just had that extra some energy after equalizer. United slept. It's been, भाई, बहुत ज़्यादा नहीं, 2017-18 बहुत लंबा हो गया भाई. In the league at home against Manchester United, we have not beaten them. What a turnaround, भाई. बस heart attack आने ही वाला था. Oh my God, United were defensively a better team, but who cares, bro? I'll take the 3 points. Exactly, man. Exactly, bhai. Definitely. The fact is, wherever we go, we follow our team, for we are the Chelsea and we are supreme. Come on, man. Come on, man. Oh, when the Blues. Oh, when the Blues go steam again. I want to be in that number. Oh, when the Blues go steam again. Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. I know I am. I'm sure I am. Chelsea till I die. Carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. Come on, man. Come on. I know. Not proud of the performance, but proud of the fact that we didn't give up. Absolutely, bhai. We'll take the 3 points. Because, like I said, मैं literally शुरू कर दिया था भाई काम करना at the back end. Making a thumbnail of saying Chelsea is finished. But we aren't. Oh, bhai sahab. Oh, bhai sahab. Totally crazy, man. Totally crazy. Awesome, man. Awesome stuff. This is like absolutely crazy, man. Absolutely crazy. मतलब मैं सोच भी नहीं रहा था कि जो बंदा इतना सेल्फिश हो रहा था in the game, at the end of the day gets us basically a
cold penalty like that. And of course, you have to give it to Madueke winning that penalty on the first instance. और of course, Chukwuemeka missed that chance, लेकिन लास्ट में बंदा का शॉट से आया जो बहुत बार ट्राई कर चुका था only to hit the defender. इस बार McTominay से deflection हो गया और गोल हो गया. United should have attacked during injury time. They simply could have kept the ball and managed the game. Very good point. Even substitutions of Ten Hag, the fact that you had Garnacho being taken off, etc. The work rate sometimes is underrated, and that's what is required. What to watch? Yes, always what drama तो मिलता है भाई आपको गम बहुत मिलता है आजकल चेल्सी के मैचेस में और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस में, लेकिन ड्रामा तो कुछ ना कुछ मिलता है. देवेश ब्रिलियंट यार, देवेश थैंक यू फॉर दैट. लेकिन भाई एब्सोल्युटली क्रेजी मैन, एब्सोल्युटली क्रेजी. बट कोई नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई थिंक कहीं ना कहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन एज चेल्सी फैंस वी वर लकी ऑलमोस्ट. It was a lucky win, but I don't know, guys. Suggest a title for this. What title should we do this? It's crazy, man. Fergie time on United, yeah. तो भाई एक सेकेंड मैं यहाँ कर रहा हूँ. ओ बाप रे, एक सेकेंड दीजिए. I'm just messaging someone, guys, and एक सेकेंड. क्या टाइटल क्या होना चाहिए भाई? लेट मी नो व्हाट इज द टाइटल. दैट चेल्सी फर्गी टाइम. भाई प्रीमियर लीग क्लासिक ब्रो, प्रीमियर लीग क्लासिक फॉर द न्यूट्रल. बहुत मिस्टेक्स थे, एब्सोल्युटली क्रेजी सीन्स. मतलब it couldn't have gone better. The script, if you're a neutral, what a match for neutral. Exactly, just Harsh बोल रहे. Harsh, big up यार. It's not over until it's over. Chelsea proved it again. I'm happy that at least मैं for a change gave it, and but Chelsea players did not, and coach did not for once. All Cole Palmer, congratulations respectfully. That was a disgrace game from referee. Yes, agreed. The referee was terrible. कहीं ना कहीं you can argue that both the penalties were soft, but they were penalties. अगर वो बोल दिया है penalty, I don't think it would overturn that. But at the same time, not giving you those yellow cards and certain decisions were definitely questionable. So overall, the referee had a terrible game. That's for sure. We deserve after all this pain. Yeah, ये भी है सच्चाई. देखिए यार, even Manchester United fans will agree that at times you have got points where almost yes, Fergie time is there, mentality is there. लेकिन जैसे Brentford के साथ बोल दो, like almost you do not deserve those points, you've got it. We haven't got that this season, and this feels like that. कहीं ना कहीं this was due, man. हम इतना मतलब अच्छा फुटबॉल खेलते फिर हकते in front of goal, वो हमारी गलती है. I get that totally. But let's be real. We have also not deserved as bad as what you got, both from the referee as well as the final points. Yes, hard luck is what I would say. If this win doesn't inspire them to do well and make the remaining matches count, I don't know what will. And honestly speaking, मतलब भाई साहब, यहाँ मैं देख रहा हूँ Poch सब पहले करने थे. We have been lucky. Let's be real. It's Chelsea Fergie time. मैंने भाई थंबनेल का सोचा है, मैंने चेल्सी फर्गी टाइम करेंगे. लेकिन लेट्स बी रियल, लकी विन तो है. लकी विन विल पॉच आउट. वो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई थिंक आई विल प्रॉब्ली यूज दैट इन द टाइटल. फेयर इनफ अभिषेक, नॉट इन थंबनेल. We literally do United to United. Yeah, exactly. Same alone, Chelsea Fergie time it was, honestly speaking. Palmer carry job. प्रॉब्लम ये भी है ना कहीं इट्स गुड फॉर द गाय एंड ऑफ कोर्स चेल्सी. लेकिन मुझे ये दिख रहा है क्लियरली दैट पामर एट टाइम्स इज लाइक, अगर बंदा है भी तो he's not passing, he's just shooting. I don't know why. Was watching the game with a United fan, she's still crying. What a game, bhaiya, absolutely amazing. I understand the feelings already. Performance was finished, but result wasn't. I'm really dancing, jumping, enjoying with Freed from Desire. Palmer ke bina we are finished. That's true. मैंने तो भाई Chelsea is finished बोल भी दिया था. I'm not even that happy. Third goal में you can go back and see my reaction. How many Chelsea goals have you seen that? That cold penalty that Palmer took, equalizer in the 106th minute, 106, literally 96th minute or whatever. उस moment में I did not celebrate, guys. I did not celebrate. Go and watch it again for a reason. I celebrated like, wow, what a game. This is heritage. Total 22 minute अच्छा football खेला है हमने. Now they will call Cole Palmer penalty merchant. To be honest, मतलब again, it's easier said than done, क्योंकि in those pressure moments, even that is art.
What a game of football. Can't remember a better game in recent times or in this entire EPL season. Wow. Palmer made the right decision, I think. Thanks, Chirag. Thank you, mere bhai. Chelsea will, again, not really happy with the performance. There are still huge issues. Chelsea will finish above us at the end of this Tuesday. Mark my words. Pin this comment or screenshot. भाई अभी देखते हैं थोड़ा सा. We'll just take a look at what is happening in the league, because अभी तो भाई मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा? कोल्ड पामर कोई? I don't think there's a question also. I know penalties है, but the reality is that मतलब you need to score them as well, and of course the deflected goal is the winner at the end of the day. So Cold Palmer is the definite winner of that man of the match, despite him not passing to Mudryk, जहां पर हम ले सकते थे equalizer before भी. But हाँ, Garnacho probably deserved it in 90 minutes for sure. That is for sure. But at the end of the day, you have to even comment the fact that yellow carded Enzo Fernandez को उसने रखा on the pitch. So कहीं ना कहीं वो देना पड़ेगा. Plus he got on Chukwuemeka, Madueke, Sterling. हाँ लेट लाया वो definitely, लेकिन कहीं ना कहीं at least he used it. लेकिन हाँ Thiago Silva को अभी मिला है, despite Badiashile not doing well as well as Disasi को he took off, but got on Chaloba. Again, going by the XGs etc., one cannot say that we do not deserve anything out of the game. लेकिन ये भी है कि I think we are lucky to get 3 points and not just a 1 point. That is a fact, guys. But हाँ, from 2-0 cruising to basically 2-all and then 3-2 trailing and then 4-3, man, this has got to be one of the classics, not in terms of quality but in terms of just topsy-turvy जो हुआ है. Brilliant for the neutral. आप अगर जगे हो लेट रात को, भाई अगेन hats off to people who watch it, भाई India, Asia and Australia and other countries में यार, इस साइड में absolutely great match for neutrals 100%. मैंने सेलिब्रेट करते हुए चेयर मैं पता नहीं कहाँ मैं अभी ढूंढ रहा हूँ भाई मेरी टोपी किधर है यार? फेंक दिया मैं कहीं. पुतिन ने बोला टोपी निकाल दो, निकाल दिया भाई मैंने. एब्सोल्युटली. लेकिन पामर स्टेट पोचेटिनो's जॉब, गर्नाचो को दे दो. चेल्सी नाउ 43 पॉइंट्स. चलो वो थोड़ा देख लेते हैं, मैं उस पर ही देखने के लिए आ रहा था. आशीष थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. लेकिन हाँ, जस्ट 2 more minutes हम करेंगे गाइज. I think I have to go to Baba's stream also, I believe. Let's see. एक सेकंड दीजिएगा. Just looking at this is updated table ना. हाँ तो 43 पॉइंट्स पर है. अभी देखा जाए तो अभी of course every match matters. What Sheffield United is also coming through. तो अगर हम लेते 3 points the next game, all of a sudden 30 में 46 हो जाएंगे, which again ifs and buts है बहुत, being Chelsea even if it's Sheffield United, तो which is basically technically 8th. लेकिन no actually भाई साहब 7th है यार. Man, at least Conference League is on, guys. Conference League, here we come, Chelsea. But कोई नहीं, I'm just happy with the win, man. I'm not really proud of the performance though, but definitely the vibes that it gave last minute definitely is something which our fans deserve more than anything. I'm not sure about Mubashir Baloch, but this is easier said than done, to be honest. There are certain things I don't think is perfect yet. Although he's scoring a lot of goals, and of course he's making some brilliant chances, there are certain things he's not perfect yet. We can't even call it a performance. Both teams are just playing on pure vibes, trying to outdo each other in being bad defensively. Good point. That भाई साहब हर्षा ने किया था for sure. And defensive horror show 100%. भाई again जो भी लोग हैं यहाँ पर भूलिएगा मत, always a fan channel for all to see. I hope we have about 250 likes at least on the stream, or we have reached 12.5 का target. 12.5 का target हम reach कर लिए, hopefully नहीं. सब लोग बोलिएगा इन द चैट. आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पर जो है आपका नया जो टारगेट है. लेकिन कॉन्फ्रेंस लीग ईयर वी आर कमिंग इज व्हाट यू आर सेइंग. भाई नींद छोड़ो, मेरे को तो नींद और भी नहीं आएगी अब तो और भी. भाई मैंने टाइम स्टैम्प स्टॉप ही नहीं किया एक्साइटमेंट में. लुक एट दिस मैन, आई एम वन मोर. टाइम स्टैम्प मैंने स्टॉप ही नहीं किया. लेकिन कोई नहीं भाई, वी हैव एक्चुअली वन अ गेम ऑफ फुटबॉल इन अ बिग गेम एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, इन अ लीग गेम, इन अ मिड वीक, जितना भी इफ एंड बट्स बोल दो. लेकिन अभी से वी हैव टू थिंक अबाउट जस्ट विनिंग एंड विनिंग एंड विनिंग. एब्सोल्युटली वी हैव टू डू दैट 100%. देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल. और हमें लेना है कुछ यूरोपियन फुटबॉल. और कहीं ना कहीं इट्स नॉट गुड इफ यू आर वांटिंग पॉच आउट, बट द रियलिटी इज दैट मोर इंपॉर्टेंट माय क्लब रादर हैव यूरोपियन फुटबॉल देन नॉट. सिंपली आई मिस इट मैन, आई विल बी ऑनेस्ट. हाँ हम न्यूट्रल भी है, हम UCL UEL फॉलो भी करते हैं, कवर भी करते हैं, हमेशा से देखते आते हैं, बट कम ऑन अपनी क्लब नहीं तो भाई कहीं ना कहीं मिसिंग, स्पेशली व्हेन इट्स चेल्सी. लेट्स बी रियल, इवन द कंपटीशन मिस इट. और यूनाइटेड आई थिंक आई स्टिल बिलीव, आई नो 3 points ड्रॉप्ड आज, लेकिन यूनाइटेड अभी भी टॉप 5 का चांस रख रही है माय ओपिनियन. अगेन राहुल इन द हाउस अगेन भाई, ऑलवेज थैंक्स.
भाई seriously 125 likes guys, seriously. पर कोई नहीं, मतलब यू नो व्हाट, इट्स ओके मैन, इट्स ओके मैन, इट्स ओके, हमें अपना टाइम आएगा, बट अभी के लिए तो चेल्सी का टाइम आज के लिए, रात के लिए है, बट होपफुली हम यू नो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड कम बैक. बट अगेन उसका डबल है टारगेट, आप देख ही सकते हो ऑन द स्क्रीन फॉर अ रीजन. स्नेहिल, अर्जुन वैली, अभिषेक, गौरव, राहुल ऑफ कोर्स, ऑफेंडेड गॉब्लिन, यहाँ पर रूही, द किंग, शनाया, अमन, मेसी इज गॉट, रुद्रा, रमित ऑफ कोर्स यहाँ पर, समीर है, मुबाशिर, निखिल, आशीष, आयुष, साहिल, हार्दिक, कौन कौन है भाई. आई होप आई हैव गिवन अ शाउट आउट टू एज मेनी एज हु आर हियर. दीपदास, चिराग, big up to you everyone भाई, आप लोग जानते हो always a fan channel for all to see. I am not going to sleep now because I am going to put up videos both on our channels as well as on Almighty Sports जो अपना ही चैनल है by the way, क्योंकि वहां भी बवाल मचा था. So we have to discuss a lot, लेकिन of course let's end with one. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. The season is there and we are not finished. Bye. Chelsea is alive, carefree, wherever we may be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. We are the famous CFC. Carefree, wherever we be. We are the famous CFC. We are the famous CFC. Come on, man. Come on. Get in, man. चलो अभी के लिए इतना ही है. You know the drill. You know the drill. What to do. Absolutely. लेकिन अभी के लिए भाई, take a deep breath and just see what happened in this match. See you up the Chelsea no matter what. Bye.